characterization, rheology, IVRT, and PBE. He is actively involved in life cycle management of high volume, high value brands and process improvement for improving margin and developing capable and stable process. He is expert and trainer for CQA, QA, and production in area stability prediction, statistical process control, and process capability analysis. He has worked from 2007 to 2016 with Abbott Healthcare Private Limited, Mumbai, as Associate Director, involved drug delivery research with global drug products development, global drug product development. He launched rapid absorption formulation based on platform technology, oral formulation, hydrosol droplet technology, topical platform technology, polymeric absorption based test mass system, orodispersible tablet, and nano emulsion lipid based formulation parentals. In this credit, there are 18 patents, application, 6 nationals and 4 international research paper, co-authors 1 book and 1 book chapter on parenteral formulation. He has guided 1 PhD student and 15 M.Pharm students. He presented 2 international posters at 36th annual meeting and expression of the Controlled Release Society in July 2009 in Balance Center, Copenhagen, Denmark. So a very pronounced person who is there for today's talk. I am very much thankful to him for accepting our invitations. A very relevant persons to this talk, that is DOE, which is related to all the research activity. I welcome him and I ask the desk is towards you, sir. Thank you very much. Okay, hope I am audible. Yes, sir. Yes, sir, you are. Okay. Thank you, Devkate sir. Still you remember me as maybe 12 to 13 years back we met in Amravati. Yes, sir. Thanks for my nice introduction. And based on my topic, I think I will start my talk. So I have been told that I have to continue till 1 o'clock, right? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So it's a 3 hour. So maybe after 1.5 hours, we'll take a short break and then I will continue. Okay. Yes, sir. No problem, sir. I have already accorded you the necessary permissions to share your contents. Okay, sir. Thank you. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, sir. So I will be talking more on experiment to design of experiment. If I remember, 2011 when I was in Abbott and I was sitting in a conference room of Abbott Research Center at Hanover, Germany. And we were discussing some experiment and how to optimize it, because it was a new drug application of one of the drug. And they told me that, Sanjay, sorry, I don't think you and your team really understand the statistic. And from that day, the way my boss, Dr. George and Dr. Henk, they used to discuss the experiment, its outcome, all was in terms of statistics. Then I realized that I'm missing on this goal, on this area, where we don't understand the statistic. Even I have completed my PhD, but still the level we have not achieved the way they use the statistic for development purpose, right? And from that day, then I developed the interest in statistics, and then how I reached to the level of how to actually use the design of experiment
use, not only do, use in a practice to come to the conclusion. So based on my practical experience with the practical examples I will give, and first I will go through the experiment, what common myths or assumptions which we carry in a design of experiment, that also I will discuss. Then I will discuss what are the different steps in a design of experiment, how we should move. And if again time permits, because most of the people, they are less interested in actually science, but more interested on software. But to be clear, software doesn't mean design of experiment. I will touch that part also. And in between, if you have any question, you decide whether at the end of the talk I have to answer, or in between also I am okay if you put it in a chat. So with this, I will start my presentation. Okay, it's visible. Anyone, is it visible? My slides are visible? No, sir. No, sir. Okay. Just let me know. Now it's visible, sir. Okay. Okay, I will start with some good and very relevant quotes by enlightened people in the area of research and statistics. Statistics is the grammar of science, right? And we know, you as an academician, you are expert in research. I am doing working in a development area. Both are different. But still, most of the time, I feel that we are not using the statistics. It means either I am doing development, partly using the statistics, or wherever I feel convenient, I use the statistics. But believe me, research should be started with statistics and it should end with statistics. But currently what happens, we use the statistics as a drunken man uses a lamp post for support rather than illumination. We use 2-3 things very commonly in pharmacy. One is a P less than 0.05. Second, we use this response surface 3D graph in many papers and theses. Still today, I don't understand what that graph tells you without discussing and elaborating the equation. It's a model fit, it's a model adequacy, and the regression assumptions. We just want to, because see, somebody will ask, there is no graph, there is no statistics, right? So I want to, as a postmortem or for publication, somebody will ask you, that's why we use statistics. And last, when your experiment starts with the statistics, experiment never fails. So if we consider these thoughts as a starting point, I think this not only design of experiment or even statistics in research, because most of the time even we forget how to use a standard deviation. What's its meaning? Right? Maybe that's not the today's talk. I can talk whenever you have time. Let me know. We can talk on that part also. But with today, these three are very relevant. Now in a DOE, most of the times whenever I get any invite from any college, sir, can you explain, can you show the software? See, in any experiment or any design of experiment, these are the 6 major steps.
You have to design the experiment. You have to perform the experiment. Then treatment of the data and analysis. Analysis also partly. These two steps are only done by your software, nothing more than that. Interpretation, as an expert, as a domain knowledge, as a scientist, as a researcher, you have to interpret and you have to conclude. So now what happened? We are forgetting initial part, we are missed last part. Right? And then we just concentrate on, okay, I know Minitab, I know SPS, I know SAS, I know design expert. And then we are happy that I know DOE. No. That part, any person, you are statistician, software expert, or even you by one day training, you will become expert. But pre and post is very difficult. It needs complete understanding of your scientific domain. Else, it will just as a formality, as a post-mortem, because somebody wants the data in that format that you will do. And that's what's happening. Because in industry still today, people are not used to, not even 10% scientists are used to use the statistics. Because they not completely understood how to use it. Very simple things, it's not a rocket science, but people miss to use it. And they are very convenient for that. They are very comfortable. The moment you tell we use a DOE, they becomes uncomfortable, not cooperative. They will, from the start, they will say that no, it will not work. Right? So don't only concentrate on this part. We have to go with all 6 steps, step by step. And these 2 parts nowadays become very easy by using a software. You use any software, outcome will remain similar only. There might be some changes at the digits or some changes in a design or output, but basic outcome in terms of statistics on which, as a researcher, what output I want, what learning I want, what knowledge I want, will get used irrespective of any software which is nowadays available. Else in the past, people use the manual calculation. Right? Manual is also possible, but it takes a time. Why to waste the time in a manual and having a great accuracy also, we use a software. But software doesn't mean design of experiment. Remember. Okay. Now, when we go to why design of experiment is either not successful, not understood, not practiced to that level, because it needs all statistics together, right? One way you need to understand from descriptive statistics to hypothesis, t-test and ANOVA, correlation, regression. Without this statistical part, it's very difficult. Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, Yes, you sir. are audible, sir. Okay. It's very difficult because we do very basic mistakes. If you go back, and I know you all have the subject research methodology or statistics or pharma statistics. Many times we take a pH as one of the variable for optimization. But in statistic basic, it has been explained what type of variable is which you are selecting. Now, if you are selecting pH, pH is not a linear variable. Remember, it's a negative logarithmic hydrogen ion concentration. It is not linear. And we select it as one of the parameter, one of the variable. And then we build design of experiment. Then we do the conclusion. And at the end, it doesn't work. See, any outcome of DOE, that is mostly the model or relationship, at the end it should work. And if it is unstable, it is not working,
I'm getting some noise. Can you either mute yourself, somebody who is unmute? Okay. And then another part, we miss experiment. I will come to this part, what is an experiment. Then principles of experimentation. Then experimental designs. Being a working in a development in a R&D, and after having a M.Pharm, after learning the research methodology subject, but somehow I missed to use it maybe initial 10 to 15 years of my experience. Because this part I never touched, or nobody asked, or nobody expected also. But based on my Hanover, Germany experience, then I thought it's better when you know what you don't know, it's better to learn it, right? So that it becomes useful in your career. And that's the one of the reason that this department is under me, is irrespective of not having any education in or specialization in statistics. All the plant support, all the calculations, all the regulatory queries which need statistics, I take care of, and go to the plant to explain the auditors also how it was. So when you all these elements coming together, you will get a design of experiment. Every this technique or the part has a role. So if you understand its practical meaning, then your DOE will have the higher utility. So this is a very common diagram, even if you put in Google. And from where actually statistics starts. Statistics basics starts from this pyramid. It starts from the data. And why it is relevant to us? Because we do the experiment, right? Because remember, the data comes from 4 parts: experiment, surveys, observation studies, and census. Census, it is a complete population study, so it doesn't require any statistics. Statistic is required when you are taking the small sample of population. And in research development or in pharma or engineering, wherever there is a data and which comes from the experiment, we need to convert it into such a form which will give some information. And when this information you treat it, convert into some or develop some correlation, do some significance testings, do some regression, it is converted into knowledge. After information, we get experiment. Experiment gives you some correlation, some outcome, that whether it works, it doesn't work. And once the knowledge is developed, if we use this knowledge, then it becomes wisdom. Statistic has 2 parts. Data and informations are more related to descriptive statistics, and knowledge and wisdom is more related to inferential statistics. So experiment tells us relationship, like y is equal to function of x. This gives some knowledge that, okay, in this experiment, in this area, this is the relationship. Now I have to design the experiment around experiment. It means now my experiment should be perfect, then only my design of experiment will be valid, will be useful. So this knowledge and wisdom, this is the actual outcome of any experiment or design of experiment. And if you have reached to this level, know how, so you can use your knowledge to resolve the problems
to innovate new things, to correct the problems, and that is called as wisdom. Right? So you have to start from data, you have to build up, and any knowledge, it might be anything, your expertise, it may be some technology, solubilization, control is nanotechnology. At what level you are? You are at a knowledge level, you are at a wisdom level, you are at information level, from which level you are operating. That's called as the capability, either in industry or in any R&D or as an innovator. So we have to move from experiment to DOE, which tells us why. Experiment just tells us how. Now this is one diagram which I made it based on my understanding of design of experiment. This is the part where we have a lot of confusion. Normally what we do, we start with a trial and we end with one factor at a time. Instead of DOE, we use a one factor at a time, and this is very well known, highly practiced, and where people are very comfortable because there no statistic is required. So most of the time what happens, we move from trial to one factor at a time. In that we get some setting comfortable, good outcome, we do the design around it. And there we miss a lot of things. Now you may ask, what is the difference between trial and experiment? That also I will explain you in the next coming slides. Trial also gives you y is equal to fx. Experiment, it also gives you y is equal to function of x. But whatever the relationship which this develop is very valid and reliable. I will explain these all the terms with the practical meaning, so that after experiment, instead of going one factor at a time, and why should not go to one factor at a time, there are some advantages of a DOE over one factor at a time. And then once you move from experiment to DOE, this is the actual scientific path. Then we move from experimental design. We have to select the design. It can be either screening or optimization. There are only two types of design. Then we have to select what is your objective, whether your objective is descriptive or whether your objective is a prediction. Means in future, like in a control list, suppose I want to develop the control list matrix formulation. I have 2-3 polymers. I will optimize it, do the DOE. And in objective, instead of description, I want prediction. That when I change the ratio of the polymer, what will be my release profile? So this is the one of the objective. But whether your model is suitable for prediction or not, that you have to check it. Now, how to check? There are some statistical parameters, and every statistical parameter tells you specific thing which you have to use it. Every outcomes should be used. Then only this DOE is give you some advantages. So once you from design, then you check what is your objective and whether it is satisfying the objective. And then based on outcome of the model, you decide what type of model is suitable for your data, for your design of experiment, and then you have to move. So our path is experiment, design of experiment, then design, then objective, then model order or order of the model, right? So this is the basic path on which I will talk on throughout my presentation. So trial. So based on my 25 years of experience in industry,
I work in a formulation development, or you may call it as research and development. But logically, it is formulation or it is a development, not the research. But most of the times, what happens, instead of research and development, we do trial and development. Means what? Take one trial, not getting a relevant outcome. Take another trial. Keep on doing trial after trial, trial after trial. Somewhere you will get some outcome. And then we do the research and development. This is one theory. 90% of our, most of the, at least pharma industry, which I have seen, works on trial and development. Next one is the research and development. These people are very slow because they go by experiment. And this I realized while working with Germany R&D team. They used to do 2 to 3 experiments in a week, 5 days. And in Mumbai R&D, we used to do at least 10 to 15 trials. Then I realized there is really difference between trial and experiment. This is all based on my experience and my understanding, what I learned during research and development. Then I understood, rather than trial after trial, they mostly do the experiment. And that's why even they look slightly slow, but they will reach the end point before us. Because in a trial and development, sometimes you may develop it very quickly also. If it is simple problem, if there are some expert subject matter, I have 30 years of experience, what do you want to develop? Tablet? Okay, within 1 week I will develop it. So we can reach the goal very quickly. But in long term, if some problem comes, you don't know which factor affects what. And that's what actually QBD talks about. That you should know why this thing happens. Means what is correlation between independent variable and dependent variable? That is nothing but quality by design. We call it as pharma's one of the invention. But remember, QBD is not pharma's invention. It has come from total quality management and Six Sigma approach. That approach we have just modified, given the another term, terminology like QTP B, CQA, linking, quality by design, continual improvement. But basically it has come from DMAC methodology, which is the Six Sigma: define, measure, analyze, improve, and control. So if you see what is a DOE, DOE comes from improve. How to improve, how to optimize the product, how to optimize the process. So this risky approach, because you don't know why or which factor is responsible for which output, which input is responsible for which output. And if something varies, how we have to adjust the process, adjust the product. So in case of simple problem, trial will give you very rapid, prompt success. But if it is a complex problem, it takes a long time. Problem will also not get solved. And you have not generated knowledge from the experiment, from your, what you call your efforts. And that's why, again, for complex problem also, it is a risky approach. Here is a risky approach, don't know why. In a complex, after doing something, all the efforts, you don't know why. So it is not the good approach, it is a trial and error. So sometimes if you are successful, we go by option 1, like to choose the single best result from experiment. Okay, I got this tablet now, I will take a Dynon this much, disintegrant this much, granulating agent this much, lubricant this much, and I will make a tablet. Good. So you have selected single best tablet.
that you have used the starting point for next experiment. And your decision is based on the single data point. And this is the mistake what we do. We are always go by point estimate instead of interval estimate. We just go by average. Okay, I have taken the batch, my average assay is 96%, 98%. We never calculate interval estimate. That is the biggest mistake. Suppose if I get an assay in one batch 98 and my RSD is 3.5, I should be very careful in future, because my based on standard deviation, it tells me that my confidence interval or the normal distribution interval is going 89, sorry, 89. 89 means some batches will go below 90, means you are going to fail in some batches. So you should be very cautious at that time. But we completely neglect the outcome of that experiment, outcome of that batch, and we just continue. Then one of the batch suddenly you fail. So what's happening? How product develop? What R&D is doing? What process is doing? It becomes a mess. So we go by average. This is the biggest mistake what we do in a development in R&D. And that's why all the information contained in other data point is ignored. This looks very simple, but when you face a problem, you come to know that this happened because of a very common and very easy scientific approach, because we have not considered the interval estimate, we have considered the point estimate. So that's all these things comes from the basic statistics, right? So to understand DOE and experiment, you should be well versed with your basic statistics and its utility. So option one, start from one good experiment and continue. In a second, we just look after some main effects which yielded the major or the best result. Main effect in a general equation, I can tell you y is equal to 10 plus 5x. So this x, it may be Jantan-Gam, y is a percent release, this phi coefficient, it is called as a regression coefficient. This phi is your main effect, right? What is the coefficient of that your factor? And from there we think that, okay, now this factor will give you the best effect for me. But then we forget other excipients, right? Because we work in the domain of chemistry and physicochemistry, right? In a physicochemical interactions and chemical reactions, nothing works independently. Jantan-Gam is a polysaccharide. Is a polymer, ionic polymer, which based on the divalent cation, its gel strength changes, gelling time changes, erosion changes. So we have just considered main effect of Jantan-Gam and we have neglected its interaction with calcium divalent cation, maybe from calcium sulfate. And then we continue. And when we scale up, we get very surprising results. Nowhere we are matching. And that's what we miss it. So when our experiment is not right, you cannot expect your design of experiment will be right. We may do design of experiment, but it is not used. An agency want that whatever the DOE outcome, whatever the type of model, maybe medium impact, high impact, it should work. It should be maintained. It should be verified at a production level. That doesn't happen. And so this should not be interacted. So in both the options, base setting and main effect setting, we miss most of the part of our experiment or the system or that knowledge. Why experiment doesn't fail out? Why experiment takes more time? Because experiment, one, you take a trial, there is some data is generated, you convert data into information into knowledge, and based on that knowledge, you have to plan second experiment. Right? Experiment may be having
one or two or three part also. Suppose I have to optimize the level of disintegrant. I will do 3 trials, right? Experimental trials, not only trials. Only trials has no scientific meaning. These are the experimental, or you simply call it as experiments. So if I want to optimize the level of disintegrant, or any levels, it may be lubricant, disintegrant, binder, diluent, solubilizer. In that part, then what I should do, right? Based having the understanding of statistics, I will completely randomize design, right? I will go with the one-way ANOVA, with the simple techniques to see whether the difference between this level is significant, like 2.5%, 5%, 10, or 5, 10, 15. It may come that, okay, till 10 and 15, there is no significant difference. Then why should I go for 15%? I will be at 10%. Then whatever the knowledge generated in experiment 1, I will plan the experiment 2. Then again experiment 2, I will get the data, I will again convert it to information, then knowledge, then that knowledge will use in a 3. So one by one, learning from every experiment, it adds the knowledge, and then you develop the product. So it is a less costly, flexible, easy to optimize. Now, if you compare both trial and experiment, both have the outcome. You may be successful by trial also, experiment also. In a trial, if it is a positive, you develop around it. Experiment, whether it is a positive or a negative, you capture the learning. Suppose I have tried 3 types of disintegrant. 2 work, 1 is not work, because drug is hydrophobic. Phosphoridone is working very well. Drug is hydrophobic, SHG and phosphorylamine is not working well. Okay, now I come to know phosphoridone is suitable. So in experiment, we capture the learning. We have the knowledge after each experiment, and then we go for the next experiment, right? But in a trial, what happens if it is negative, you plan a new trial. You don't know whether you are same path or a different path. But in a knowledge, in a same path, every time you will go something advanced. You will reach towards your goal. Trial, you never know. There are multiple paths. Sometimes you are going 10 kilometers, coming back, again you are starting your journey. So that's why you should go by experiment. In R&D nowadays, this part is very famous, trial and error. Some experienced people can develop product within 1 or 3 months, but the person who understands statistics like me, if somebody comes, I will go by designs, it will take a time, 3 months, 6 months. So the people who are expert in trial and error, very fast, less work, they will develop the product. That product is acceptable, passed, approved by US FDA. There is no issue. Then question, why don't we go with this one? And these people are highly respected in industry, sitting at the top positions, getting a good appraisals, good salary, highly paid. But now agencies started changing their strategy, right? This was our regular concept. That's why regulatory agency now then ask these generic people. We all work in a generic industry. India is having a great dominance in as a generic player, not in a new drug. We don't have any new drug from India. Remember, this new drug or the innovators, they do everything. Generic people were using this thing. Set one product, do the bioequivalence, pass, okay, launch in the market. Then agency told, now you have to go by QBD. Because you should know product understanding and process understanding, right? So many components are there. Do you know what is the role of each component? If you use a phase rule, you will come to know how many degrees of freedom should be required. And phase rule has a great role in a design of experiment.
So you have to understand your product. You should understand your process, how it behaves. What is its correlation with the stability? What is its correlation with the scale up? What is the correlation with the performance? Is it whether your process is stable, whether your process is in control? And if it's stable and controlled, then it will become predictable. And then you can calculate its capability. Right? So to have all these things, agency asks that these are the limitations of even your past at the end. Because see what happens, this product when it goes to shop floor, you start so many problems. It means after going to the shop floor, you start your again R&D. Now do this trial, do that trial. You don't have the complete understanding altogether with all the components, process, parameters, CQA, CPP, CAMA together to judge what is the impact of every component. So that's why they ask you have to go by this way. This way may look like taking a 1 or 2 months more, but at the end you will not have any issue. This might be fast, but you every 5-6 months you have to do some R&D. That's not good. And once you have this, you can have process control, process capability. And once product is realized means actually marketed, come to the market, product is ready. After this, there is one step, it is called as continual improvement in future. There might be change in process technology, there might be change in some excipient. There, continual improvement is required. And this you can do only when you have all this understanding, product and process. In this case, you cannot do. Okay. So, trial, it just measures. Experiment, it estimates. It estimates its interval, confidence interval, based on standard deviation around central tendency. And these estimates actually tells you that what is the actual outcome of my experimental trials. In a trial, you just say, I'm getting assay, I'm getting dissolution, yes or no. That's the outcome. And that's the missing with trial. Okay. Now, coming to the experiment part, trial can fail. Either it will pass or fail. But experiment can't fail because every experiment tells you whether it is working, whether it is not working. Right? When it is not working, again you could go back. Experiment, it can't fail because knowledge is there, and based on this knowledge, we continue. So in experiment tells you I don't fail, I succeed in finding out what doesn't work. So you can remove these parameters, you can remove or you can control these variables. Right? Suppose binder is not affecting the release, no issue. Keep it constant. Don't select it as a variable for design of experiment. Now experiment, for me, design of experiment are both same because at both the places I have to do the experiment. So experiment demonstrate cause and effect relationship between one or more independent and dependent variables. Right? It's the extension of regression. Remember, if you read the regression, experiment and design of experiment, most of the part come from regression, where there are two types of variables. One is independent, another one is dependent. Very simple. Like a solubilizer is independent and solubility, what we assume, is a dependent. Polymer, control is polymer, is independent and its release profile is a dependent. Once experiment is positive, you have found out valid and reliable relationship between independent variable and dependent variable.
you have to go to now experimental designs, and that is nothing but design of experiment. Here what happens, here you decrease or control the influence of extraneous variables, the variables which are not actually considered for developing cause-effect relationship, and to separate the signal from the noise. I will explain this concept in a next slides. So these two are the goals. So first part is our cause-effect relationship. Second part is experimental design, or what you call as a design of experiments. So first we'll see what is an experiment, what's an experiment says, and what are the actually characteristics of good experiment or the good research data. Okay. In experiment, we do three things. We want to come to this outcome. Y is equal to function of X. Like Y percent release is a function of concentration of xanthan gums. Right? In this, what happens? I want to change the proportion of X, that is xanthan gum. I will take 10%, 20%, 30%. So it means I want to vary the independent variable. To see its effect on Y, that is a dependent variable. Because I want to develop the causal relationship. It's not casual, causal. Causal means because of X, there is a change in a Y. Not due to any other factor. There might be some, it may affect, but not effect. I will come to that point also. And all other variables, like it may be hardness of the tablet, surface area of the tablet, relative humidity, temperature, all other parameters I have controlled from experiment 1, 2, 3, so that I know these variables I have kept the control. So that then whatever the outcome which I will get the relationship only between xanthan gum and percent. This is these three things what I do in experiment. Okay. But this outcome of the research data from experiment needs two parts. One, validity, and second one is reliability. So when you perform an experiment and if you satisfy or take care of these parameters, your outcome will be very useful to your work, to conclude your work, to develop the product, or to take your research or your whatever the technology which you develop, to take it to the next level. We develop the technology, we develop the product, but most of the times when we don't achieve these targets, the quality or the utility of it comes down drastically, and it becomes then the problem for yourself also. Why it becomes problem, that we will see. So in a validity means you need to have the cause effect relationship. Means there should be relationship between xanthan gum and percent release, not from other factors if they are not selected. If there are more than one factor like xanthan gum, calcium sulfate, sodium alginate, then you take a 3, no issue. But once Y is equal to function of X, or maybe the function of X1, X2, X3, there should not be X4. If X4 is there, take it in the equation. This is called internal validity. It means this relationship is proper, no variation, and because of this only these things happens. And how to use this? Here you can use the experimental principles, that is randomization. So randomly you have to do take the order of experiment. Suppose you plan 3 experiments.
10%, 20%, 30%. Randomization says first you can take a 20%, then 30, then 10. You cannot go 10, 20, 30. Then statistically, because power means if you repeat it, how many times you get similar effect. This is the power. And this depends on your sample size. Like I says that before going to design of experiment around your experiment, you take a 3 trials and check whether your experiment itself is reproducible. If experiment is not reproducible, there is no fun in going in design of experiment. So statistically, whatever sample size you have taken, it gives you the power. So your experiment should have the statistical validity in future, because you have done 2 or 3 times. Your experiment, suppose I have developed the product and process for new product. The batches has to run maybe 300, 400 in future at production. But every time, will I get the same outcome as per specification? That is decided based on the statistical power of my or sample size of my experiment. Then external, this is very important. When I do the trial in lab, it comes excellent. But when it goes to the shop floor, I always face a problem. If I take a paper from some publication, I see that, oh, it's a great outcome. But when I practice it in my lab, I don't get the outcome what is described in there. And that is the difference between theory and practical. Because either you have done the trial and I am doing experiment, or you have done the experiment and I am doing the trial, either or. Otherwise, in theory and practice, there is no difference. If you theory, if it is by experiment, and if practice also, if I am doing the experiment, there should not be difference. People say that no, in a practice and theory there is difference. I don't think so. Same theory works in practice. So this generalizability is very important, and this is what we face a major issue when we transfer the product from one lab to another lab, from our small facility to bigger facility, right? So this is where we are missing. And then comes reproducibility. Means when you take multiple trials, you should get a precision. If these parameters are well considered, I don't think that any experiment will fail. And this experiment will be valid, useful, and will give the very excellent design of experiment model in future. So all these things we have to consider. In causal relationship, we have to remember cause precedes effect. Means xanthangum should be first and then controlled release. It should, without xanthangum you are getting control release, then cause doesn't precede the effect. Then cause and effect must correlate. If I am taking some trials, I am getting some outcome, there should be some correlation. It may be positive, it may be negative, but correlation should be there. Then only y is equal to fx. And third, what we discussed, no third variable should be involved in it. Then external validity, which we have described that the extent to which your study can be generalized, applied, or taken to the next scale or the level. It depends what type of samples you have taken, number of samples you have taken, and how you use all your experimental principles, not the design, principles like randomization, replication, local control, blocking. These are the experimental principles which we forget to use it while doing the experiment. That's why instead of experiment, it becomes trial.
because experiment should consider this validity and reliability. Experiment should use experimental principles, then it's called as experiment. Otherwise, it is called as a trial. And then we face the issues going ahead if we don't satisfy these requirements. Right? And once we have these 4 outcomes, then your experiment is called as having a validity and reliability. In a statistical validity, we see that sample size and effect size means how much sample we should select for particular experiment. It may be for significant difference or it may be for factorial design. We have to consider the variation in your existing experiment. You calculate the variation from existing experiment like a standard deviation. And then based on that you decide. But irrespective of considering sample size, we are just continuing the experiment. Second, most important, most of the time we go P less than 0.05. P less than 0.05 doesn't have any practical significance. It is a statistical significance. And if you go through the publications, American Statistical Association already declared how P should be used. P less than 0.05 doesn't mean that you have achieved something. It depends on your magnitude of your effect. So rather than P, we should use the confidence interval, which considers actually magnitude of effect. And we should see what is my outcome, what is the practical use of the effect. Like I will say many times, suppose I have increased the solubility by 20%. And I have published the paper, I have the outcome that, okay, I have technology which has shown 20% more solubility. Now, is it practically useful? I have to develop one product. The product in between 80 to 125% of AUC 0 to T, AUC 0 to infinity, and Cmax is called bioequivalent. By changing solubility by 20%, assuming it had changed the bioequivalence same percent, 20%. But for me, I might move from 90% to 110%. Still, it is bioequivalent. Means for practically, it is not giving me significant difference. Statistically, it may be significant in a solubility. But for bioequivalence, significant difference means it should be more than 45% because 80 to 125 is my confidence interval, my range. And then we should see the power analysis. When I repeat it, how much time it will be reproducible as per the outcome. So we deal with experiments which are very high on internal validity, but maybe low on external validity. External validity with generalizability. When I go large scale, different labs, there I may face a problem. Observational, like a survey, when you ask the feedback to the student about some speaker, right? They will give you actually internal validity because you have actually asked the subject, but it may not be applicable to others, to the scientists or maybe the other college. So these are the basic difference, and we mostly deal with the experiment. So we should see that how we can improve our external validity. Now reliability. Reliability means repetition, precision. It's called as a reliability. Right? So degree to which measure is free from a random error. I will come to this random error concept. Then it describes the repeatability and consistency of the test. And then it refers to measuring procedure, how we are measuring it. In pharma, remember, most of the parameters we are not directly measuring. Most of the times we are determining related substance, even pH,
assay, we are determining, means we are processing a sample and then we are measuring it. But if it is a thickness, hardness, these things we are measuring. So always remember in design of experiment, we have to always consider measurement system analysis. What will be the power or what will be the capability of my measurement system? Will this system or method is having capability to differentiate to that level where I want to see the effect? Otherwise, you will mess the design of experiment. Right? Rheology, it's a determined property. Right? So their variation will be more. Right? So there, if you are seeing that, okay, I will just see the change from 100 CPS to 125 CPS, it's not possible. Even you use the air bearing rheometer, those are not that much sensitive. Or if you take a 3 experiment, you yourself will get the variation of plus minus 10 CPS. So you have to see this so that it will become a reliable, means reproducibility. So when it is a valid, it means your experiment is accurate, method is accurate, and it is having a very or maybe systematic error is absent. Precision, it is a reliable because it has a minimum random error. So reliability gives you the precision and validity gives you the accuracy. But at both the things you have to take care that these two errors should be absent. Okay. Now I will go to the result and experiment. There is one question to the participants. Maybe somebody can ask this, don't worry for whether it's wrong, and it's very simple. I think you will answer it very promptly. So I have 4 batches, A, B, C, D. As per specification, if assay is in between 90 to 110, my batch is passing and I will release the batch for the market. Batch A is around 97 to 100. Batch B is around 100 to 103, 4. Batch C is from 96 to 104. And these somewhere central, some going to below, above 110 and above 90. So out of these 4 batches, which batch or which batches are good and acceptable? Anyone, even chat box or somewhere if you mention. Anyone can unmute and just, if you want to answer it, we'll have something interactive also, so it should not become monotonous. I don't know whether you are really understanding or not, whether it is relevant or not. Sir, participants are answering in your chat box also. Chat box, okay. They are giving the answer C. Answer C, okay. So 4 persons are there: Sandeep Kumar Yadav, Okay. Raj Bakshi, Talak Fareen, Vikas Patil. They are giving the answer as a batch C. Okay. What about A and B? They are also as per specification, they are passing. Because specification is 90 to 110, right? Anything, if any batch falls in between these things, that should be accepted, because I cannot reject this batch, right? I cannot reject this batch. This batch is more variable actually. A
A and B, C, more population, C. Okay, good. Okay, so C is a batch A, B, C. All three are acceptable as per specification, but D is completely failing. There is no question of D. And most of the participant has already mentioned C. I don't know what is the reason, but it says okay, deviation. Okay. See what statistics says for this observation, because SA is a continuous variable, is a continuous distribution. If any experiment gives you higher, only higher or only lower, is not called as a good experiment, because for continuous distribution, and I know that my ideal is 100%, I should have the variation on both the sides. That is called as the random error. So A and B results are acceptable. But if I see the experiment or the scientific rationale of this experiment or statistical rationale, my experiment A and B are not valid. So when we perform the experiment and if you are getting at one-sided, it is passing, it's perfectly okay. In industry, if I get A and B, I will be happy, I will release the batch. But statistically, if I say there is something wrong for A and B, deviation might not require, but as a proactive scientist, you should know why it is happening. Coming lower, like suppose if I am, when I scale up the parental formulation, the drug or preservative, yeah. Any question? Okay. So there in batch A, I am getting lower side. And it sometimes it's natural because there is selective loss of preservative or the drug due to filtration, due to interaction with the filter media. In case of B, in case of solid dosage form, sometimes it happens that either there is complete loss of total loss of excipients, or some part of excipient is lost in a blender or somewhere, so I am getting a higher. So then here you should be able to either compensate it some way or you adjust it. Otherwise, what will happen? These two types of result will give you the problem when you go for process capability. So either way, this is not good in a long term. If you have calculated the losses, then compensate it. Right? Start with some overages, calculated overages, because you have to prove the calculated loss to add the calculated overages. Is a process loss. So that your center should remain around 100% both the way with a minimum variation, so that your experiment will also become valid. So from this, we have to learn that error should be on both the sides, then it is called random error. If it is one side, it is called as systematic. So in a data, systematic error should be absent. Random error should be minimum. Can you meet somewhere? Good morning. कुछ नहीं सुबह सुबह साफ सफाई इधर 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 की मारो हेलो कौन है सर
Okay. So outlier should be absent. Mistakes, like instead of entering 10%, I enter 20%. That's not anyway acceptable. So random error should be minimum. Systematic error should be absent. Outlier should be absent. Mistake should be absent. Okay. Whenever you record any data, like 98% is my assay or my result. In a data, there are two parts. One is a signal and another one is a noise. But whatever I got, this 98%, it has both the components, signal plus noise. And that I have to partition, and then I have to calculate what is actual effect. What you get is not actual effect, that is a signal only. 98% assay is signal only. From there, we have to estimate the noise and then calculate the ratio that becomes the effect. And noise mostly comes from the experimental error. Measurement error is negligible because we use calibrated instruments or the equipment. So measurement error becomes negligible. So it is mostly due to experimental error. And this noise should mostly come from random error, not the systematic error. So we saw that measurement error is negligible because we are taking care by calibration, maintenance, SOP. In experimental error, random error is allowed, but it should be very predictable and minimum both way. Systematic error, it is mostly coming due to accuracy or measurement issues, and this we have to minimize. And this randomization is one of the experiment principle which can be used. And for random error, you can use a replication or the blocking. So random errors are due to the precision of the equipment, and systematic errors are based on equipment's use or experiment control. Okay. Now, what are random errors? If you remember the basic hypothesis or the requirement that normally distributed. So these random errors are normally distributed, which follows the Gaussian distribution. That's why we say that if assay is both the side of 100%, then we can say that it is normally distributed. The average value of random error is 0. Means suppose two observation goes above 100, two comes below 100 approximately. And these errors are due to natural variation. It may be natural variation or maybe variation in a balance within a range, variation in a processing, compression, doing dissolution, all these comes together. And everything is by chance, which you cannot control. It should be minimum, but cannot be controlled. So this is like a sampling error and this fluctuation in measurement apparatus. So this error adds, but it will be both the side. It cannot not be always to the lower side or always towards the higher side. And best part is these errors can be analyzed. We have to analyze. Without analyzing this residual or random error, we will not or we cannot conclude the validity of your model. Right? Whether your model is adequate or not, you have to check these assumptions by controlling the random errors, by checking the pattern of residuals. We can analyze, we can detect, and we can reduce by replication, by repeating the measurement. We can refine the measurement method, and we can reduce the random errors also. So statistics take care of these things. Right? But when you move to systematic error, here you get a consistent pattern. Suppose your working standard is a degraded or it has captured the moisture. When you weigh it, instead of 100%, it will become 90%. So it will always show you the assay towards the higher side, right? So it is gives the consistent pattern. So these are non-random in nature, means one side, very particular direction. It shows the particular direction, continuously lower side, continuously higher side. And measured value always smaller or larger than true value. Suppose my percent is 100%. So it will be always larger or lower, but not both.
If it is both, then it will become a random error. It is a constant or systematic bias in a measurement, and this problem will be there throughout the experiment, right? Because it's consistent, and this we don't expect. If systematic error is there, this is very dangerous. If we do the experiment or we finalize the experiment which has the systematic error, your model and its quality will be very poor. Like sometimes it happens during measurement, more than one systematic error at one time, and these errors nullify one another. And the best example is weighing 12 mg instead of 10 mg on analytical balance, and sample is degraded by 20% because moisture gain is 20%. So instead of 10, because balance was not properly calibrated, or maybe the analyst he taken the 12 mg, sample degraded or moisture gain is 20%. But when both happen at one time, there is no error. And these things happens most of the times. And that's why that experiment, when it comes for design experiment, you get very irrational outcome. And then that design of experiment doesn't work. We don't want to, we are not interested in developing the design of experiment. We want to use it. And these things happen. So this is the very practical things which happens in during development work. More than one, more than two, more than three, they nullify each other, and we don't come to know. If balance would have been right and only there was a problem in standard, would have been identified in the response. And unfortunate part is this systematic error you cannot analyze, eliminate, detect, not improvement by replication, no alert in its pages by using any other techniques or in statistical analysis. Then how to use it, how to detect it? First thing is you can compare the results to other results obtained independently, or you completely change the equipment, scientists, everything, or you use a different technique. Rather than using your procedure, use a different technique, or you do the experiment with the reference. So it really needs expertise, or the expert will be required to identify where this systemic error happens. Now, because systematic error is very critical, because accuracy depends on it, right? And for any valid experiment, systematic error should be absent or very small, right? If your validity is not established, your experiment will again fail at a stage of design of experiment, right? So this error we can identify by comparing experimental value to the literature value, and systematic errors are smaller than the random errors. They are always smaller, but that should not get bundled with random error. And if they are present, those errors should be highlighted and avoided. Now coming to the part of DOE versus one factor at a time. We have seen that instead of a trial, we have to do the experiment. Now this is clear. Now, most of the time, what happens, we move trial to one factor at a time and then do the DOE. Rather than going from trial to one factor at a time, we have to move from experiment to design of experiment. So what do we mean by one factor at a time in brief? I told that because you are the expert, Thomson Edison, he also invented the light, but it was more on luck, intuition, guesswork, experience. So he described that it was 1% inspiration and 99% perspiration. So much work to get to that optimized conclusion. So over this method, then scientists moved to the one factor at a time, because they have been told that we can vary one factor only at a time. They called it as a scientific method. Engineers, scientists use it. This is also very
Scientifically, it is very unproductive way. So from expert trial and error, we are moving to one factor at a time. Now, somebody will ask, do you think that only DOE will give you answer? Because all the problems were solved prior to the invention of DOE in early 20th century. There was no DOE. Many challenging science engineering problems have been solved by using trial and error coupled with expert knowledge. But remember, many of those problems took a decade to solve. If you know the Deming cycle, quality circles, Durance methodology, Kanban method, Pokayoke, all these brought good philosophy, experimental science, and then design of experiment, which Toyota, Motorola, many of the companies, they achieved the Six Sigma, they achieved the defects less than at the level of 10 raised to -6. So because they use this design of experiment, all these concepts, and then they achieved the quality. So it doesn't mean that without DOE can I work? Yes. But second is, will you really work to the target? Answer is no. Okay. And then in the industry, at least academics, I don't know, but industry people says that these are very theoretical. You need a more work and doesn't work in a practice. These are three myths. First myth, I don't agree. It is not theoretical. It has a scientific rationally. They may call it theoretical because most of the time they don't want to go to the basis of statistics and what is really. More work, it's not a more work. It looks like a more work. Like suppose if I want to take a fractional, if really I have the good understanding, I will start from fractional factorial. I will project it into full factorial. Then I will again check the curvature. Then I will go in a optimization by augmenting in central composite. So if I go stepwise, it is very less work. Nowadays, on an average, we take 50 to 60 trial for normal conventional IR formulation to complete its development. But if I go by DOE way, I don't think it should not take more than 30 trials. And whatever the data we generated will answer all the questions. After taking 60 trials, I'm unable to answer the questions. So it looks more work, but it is not the more work. You have to consider the work, its outcome, and that's outcomes utility together. And this last doesn't work in practice. I don't understand what's the rationale behind it. It works. So these are the myths. So in industry, I don't know in academics, but people will use these things. So, but practically I used it. So maybe someday if you have the time, we can go how products started with a design of experiment and ended with a good design with a complete development. Rather than using DOE, we solve the problem in less time and less expense using our expert knowledge. This is again hypothesis how people say it. What is OPAT process? Changing one factor at a time, keeping others fixed. Factor is varied until its best setting is found. Suppose A and B is there, I will keep A constant and I will vary the B. Once B is optimized, then it is then fixed at that level and then other factor is changed. And then once these two factors optimize, then we optimize third factor or other factor. So this is the OPAT process, which happens regularly. Like suppose there are two factors. Two factors A and B both set at a low level. Then we will hold factor B constant at -1 and set factor A to +1. In a second, we hold the factor A at a -1, set the factor B at a +1. Okay. So here we have been taught many times that you change one factor at a time, then only you will be able to judge the effect. But statistically, it's wrong. You can differentiate the effect even you change both the factors simultaneously.
Only thing that two columns should not be correlated, right? This is again the basic experimental statistics may not be possible to discuss in this presentation, but that's the good logic behind it, that you can separate it. You can vary independently and you can separate both the effects. So it's not the value that you cannot change both the factors simultaneously. But OFAT has some applications. The perfectly valid when testing one factor. Suppose I want to test only the effect of lubricant level or its blending time, then it's perfect OFAT. But when more than two, it is not perfect, because effect of A and B are independent of one another. It's an assumption. Statistic works on assumptions, but we check whether those assumptions has been satisfied or not. After design of experiment, when we check the model adequacy, we see whether these assumptions required for this regression or the design of experiment has been valid or not. If they are not valid, your design of experiment will not be the stable or will not have the its utility. When here A and B are independent of one another, but when there are more than one factor, it cannot be independent, because we are working in the area of chemistry and physicochemical systems, and most of the systems are heterogeneous systems. The system, when it becomes heterogeneous, variation goes to the up level. So, but what are the advantages? No statistical knowledge is required, and you can determine just changing the setting of main factors. So you can use one factor at a time. Only there is only one factor, but they have limitations. Rarely uncover the optimal condition. It cannot, when you use one factor at a time, you cannot optimize the actual optimum spot, which is called as a sweet spot. It may be within range, you may lie within range, but it's not optimum. Optimum in terms of output, optimum in terms of minimum variation, optimum in terms of reproducibility. So that's why you cannot reach the maximum. It leads to different conclusion depending upon your starting point. Conclusion will differ. Requires many experiments, and this experiment gives you the little information. We want minimum experiment and maximum information. And most problematic, you cannot separate noise from true variability. And that is the experiment or design of experiments capability. It can separate the noise. It can separate the signal from the noise. Two things the design of experiment gives. It reduces the effect of extraneous variables, and it separates the signal from noise. That's why we have to do design of experiment. Otherwise, experiment is sufficient. Then they cannot measure and estimate the interactive effect, because many times two factors, they will interact also, like xanthancum and calcium sulfate, they will interact. Even xanthancum, sodium alginate, calcium sulfate, all three will interact. That is not possible with the limitations. So, but suppose somebody will develop the product by using one factor at a time. Development is possible? Answer is yes. Optimization is possible? Answer is no. And in future, when we want to do the continual improvement, that is an essential element of quality by design. Either regulatory requirement changes, specification changes, excipient changes, process changes. In future, when we want to do any development, any improvement, you cannot do if you have developed the product with one factor at a time. And there every change will be called as a change. But when you use a DOE, it is a part of QBD. Change within your design space is not called as a change, because you know the process and product understanding. So by using DOE, you can do the development, yes. You can do the optimization, yes. You can do the improvement, yes. That's why we want to do the DOE, not one factor at a time. So these are the advantages. What DOE gives you, maybe I will not go in depth of how
everything can be explained, everything as I have the data, but because the time limit will not go through it. So DOE advantage is a larger region of a factor space. It needs less resources. Less resources means less experimental trial to achieve the same power of one factor at a time. Then it can do the effect estimation. It can do the interaction effect estimation. It will give you the balanced design. Balanced design means for all the effects, equal number of trials, and it improves the power of your experiment. Then it will give you the optimal setting and efficiency will be more, right? Less resources and efficiency. It means to achieve the similar power, similar outcome, it needs a less experiment as compared to one factor at a time. And that's why we have to move from DOE, from one factor at a time to DOE, right? And where we will now enter in a design of experiment. Let me know if you want to break in between. Sir, if you wish, we can take a break. No issues. Okay, what we'll do, let me take another 10 minutes Okay. so that this one part I will finish, and around 11:55 or maybe 12, we will take one break of 5-10 minutes. Then I will continue remaining. Okay. Yes, sir, sure. Okay, so before going design of experiment, it's clear we don't have to go in a trial. We have to enter in experiment. We don't want to use one factor at a time. We want to use a design of experiment. And what are the advantages of design of experiment that we have seen it. Now in a design of experiment, what do we mean by design of experiment? Experimental design is a laying out experimental plan in advance of doing the experiment. So that this is the basic difference from regression. Otherwise, that also can evaluate or establish the cause-effect relationship. But it is in advance. You know, by planning, you are varying the level, and how much you want to vary, that is in your hand. Because it separates signal from noise and removes the impact of other variables, experimental design is required to develop the model. Experiment, we cannot develop the model. This is a relationship. Design of experiment, we develop the model. So it is a systematic method to cause and effect relationship and to yield valid and objective conclusion. Whatever the conclusion, that should be valid. Valid means all comes. Internal validity, external validity, statistical validity. Design of experiment is an experiment where one or more factor called independent variables believed to have effect on experimental outcome or the dependent variable are identified and manipulated according to predetermined plan. And statistically based set of experiment in which all chosen factors are varied simultaneously. So this is what is our concept in one factor at a time. This we are removing in experimental design. We can vary the factors simultaneously. Now, what are the objectives? To identify causal relationship. This is common like experiment, because see, experiments part will be always there, because this is only design we are using in experiment, right? Experiment part will be there. So there will be causal relationship will be there. Variation to separate signal from noise. This will be added advantage. Third, to quantify the effect, to discover an unknown effect, and to estimate a known effect if there is something is there. Because see, this experiment is planned by the scientist who has the domain knowledge.
Suppose if I am developing control list tablet, I know I have to use a polymer, xanthochrome, sodium, argent, HPMC, HPC, or carbopol. I know how much percent should be normally used. So I start with this. With that, there may be some other parameter. It may come that, okay, granule size is critical, right? This is unknown for me. So I will consider all these variables when I do the DOE. Then objective is variability, to identify known or expected source of variability, to reduce the effect of that source of variability, to partition the effect of source of variability, because signal and noise, how they separated? Because of to partitioning the variability. Then we have to control the error variances and to control the experimental errors. So error variance we have to control. If you want to go in a statistical basic, we always want to increase the treatment variances, control the extraneous variances, and reduces the error variances. This is what the any experiments object. So here in a design of experiment, we reduce the error variances. Only things when you start the design of experiment, experiment has to complete these first two parts very scientifically. There should be correlation and there should be causation. There should be cause-effect relationship. Most of the times, this is the major mistake, or what you call the miss, which happens during development. Like moisture in a product, quantity of moisture in a product affects degradation of antibiotics. Is very commonly established things. But when you go in a depth, not a moisture content, water activity actually affects the amount of degradation. If water activity goes up, then degradation goes up, not only the moisture. It means when you identified independent factor, it is not giving 100% cause. Partly it may overlap, because when moisture content quantity goes more than its equilibrium, then water activity increases. But it is not actually measured. And then we develop experiment, then we optimize it, and finally it doesn't work in practice. So we have to go from correlation to causation, then experimental designs actually describes, or if your objective is prediction, then you can predict it. So we have to separate the signal from the noise whenever there is any data. The one part is signal, one part is a noise. What we have to do, we have to reduce this noise so that signal become more prominent. So you can compare the effect of a treatment and the background variation. If you have studied ANOVA, there you can very well see that how we separate the variance or how we partition the variance. So signal to noise ratio should be more, means noise should be less, signal should be more. Whatever the EF in ANOVA, what we see, they do the F test. This is nothing but signal and noise. T test is nothing but signal and noise, right? So noise should be less, signal should be more. Then there will be significant difference. But whether it's significant will be practically relevant, that we have to check it. So this signal to noise ratio should be more, means signal should be more, noise should be less, so that it shows that there is a indication that the difference between treatment are present. Suppose if I am identifying the level between xanthan gum, locust bean gum, and divalent calcium, in this level from 10 to 20 of each one or the other levels, if it works, it means signal to noise should be more. So it means this treatment gives the impact, gives the effect. And when we want to quantify the effect, we have to see that what is the magnitude. Means we always write the equation y is equal to 10 plus
15x1, 25x2. This coefficient is nothing but magnitude. It means if one is 10, other one is 25, 25 has a more magnitude. It means it has a more effect. Direction. For that coefficient, whether minus sign is there or plus sign is there, that gives you direction. Means by increasing this x1, whether response increases or decreases depends on this sign. So for that equation, for that factor, for that independent variable, you should know magnitude and direction. And you have to then check how significant it is. Really, with respect to outcome, whether it gives you the strength and significance that you can change, take between based on your p-value. So DO is a well-planned experiment, has an appropriate design, sufficient replication we will consider before starting to get a precision. Should have the absence of systematic error and have a range of validity of conclusions. Means it provides unbiased estimate of factor effect, enables experiment to detect important differences and shows the direction of better results. And it should be able to calculate degree of uncertainty, right? When you do the design of experiment and when you do the model fitting or model evaluation, there you can check what is the degree of uncertainty, because you calculate the standard error of regression. Practically also it can be used. If time permits and if we reach that part, we will see it. So DO advantage, maximum information and fewest run. If when you take the fewest run, it saves your time and money because you reduce number of trials, development cost, material cost, operating cost. And but you take some precautions. This we can see with the examples. Avoid reaching suboptimal setting. When you take a range, suppose Jantangam, how much I should use? You may use in some excipient, in some formulation 50%. And then you optimize upon 50, 10% below 40 and 60. These are not optimal settings. Either you evaluate complete range if you don't know, but just don't go by your assumption. We assume so many things in science. That's not right. If you are really have the expert knowledge, you use it, but don't assume the things which are not really right. I have some practical example that I will explain you if we reach to that slide. Then avoid missing interesting part of experimental design. Experimental design should be very thoroughly evaluated. Experimental design should protect against external, uncontrolled, undetectable influences. Either you can block, you can randomize. And if experiment is not reproducible, then DOE is not useful. Okay. DOE, what is a DOE? It's a tool. If you see quality by design is a method, methodological approach, development approach. Six Sigma, development approach, or the process improvement approach. DOE is one of the tool which is used in QBT. Right? And this is the tool, it has two characteristics. It is a sequential. Means you have to go from step 1, step 2, step 3, step 4. Now you will ask the question, can I go step 4? Yes, you can go. But really you understand your product and system there. So DOE, you have to start from experiment, then your experimental design, in that first screening. In screening, from screening also you should start from comparative design, then screening, then characterization, then you go in curvature, then you go in optimization. That is a sequential nature. What do you mean by iterative? Iterative means if you fail, you have to come again to the position of 0, or maybe some next previous level. So this is not one time that, okay, I developed the experiment, finally I use one model and that's the end. No. So DOE is a tool
which is iterative in nature, means it can be repeated until you achieve the right model. And it is sequential, go from step 1 to step 2 to step 3. And that's why design of space, if you remember, as I know that you many speakers have either given the talk or you might have studied it. The design space in risk identification, risk analysis, and risk evaluation. These all three steps which are used in a quality risk management or the risk analysis part. These are iterative. This cannot be just one stroke will complete and I will go ahead. No, it doesn't happen. Even if it happens, that's not right and valid, not useful. So as a tool, it can be used anywhere. In a QBD, it is used in a design of experiment. Six Sigma, it is used in improve phase. So as a tool, it depends how you use it. Do you understand? So any tool, if it is used properly, it is very powerful. But if it is misused, so it's of no use. As a test, it starts with experimental knowledge of the product. As a design test is not substitute for product knowledge. It provides data that enhances the product knowledge. Now, question is there, who should do the DOI? Pharmacist should do, or a statistician should do, or both should together do? As my personal opinion, only pharmacists should do, because we have been taught statistics in PPharm also, if I am correct nowadays, whether it is there in syllabus or not, I don't know. And one is at MPharm level, that I know. So it needs a core knowledge, scientific knowledge, domain knowledge, product knowledge. And that's why it has been taught to us that, okay, when you are product development, this is required. That's why you have to study the research methodology. So only statistician cannot do. Initial slide also I explained. It is only treatment of the data and partly analysis. This is only the part of statistician or the statistical software what we discuss. So there is no way to substitute the core knowledge, experience, expertise, intelligence, process knowledge to develop the DOI. Statistical knowledge is a part, is a requirement, right? But it cannot substitute your experience, your intelligence. But only thing, we should really understand the basic statistic so that we can use it. But unfortunately, we take that subject as just to pass it, and we still assume that it is not relevant. Maybe it's everybody's own decision, but based on my experience, without statistics, doing research and development, the outcome will not become valid and reliable. Okay. Now it can be application used research and development to develop new product, new process improvement, quality control also it can be used for process specification, process optimization, statistical process control, process capability analysis, measurement system analysis, all this comes under this thing, DOE. Market research, it can be used, engineering, it can be used. So the well-performed experiment, what they tells at the end, what are the key factors in a process, what are the main and interaction effect in the process, what setting will deliver acceptable performance, and what setting will deliver minimum variation in the output. These 4 questions will be answered after valid and excellent DOE. Nothing more than this. Okay. So how we proceed? We take an experiment. Experiment gives us a data. That data I will fit it in equation. Then I will check the model fitting, model significance, model adequacy, and then either I will describe or I will describe and predict. So this is how we perform the experiment and where we reach it. So thanks this first part. I hope I have tried to explain the basics of experiment to design of experiment as a path.
if there are some questions, or shall we take a questions after break? Dear participant, if you want, you can also put your questions in the chat box. Be free to interact with the Boldani sir. I have changed the setting so that you can unmute yourself and ask the questions. Am I audible, sir? Am I audible? Yes, Yeah, Gajanan. Yes, you are. Sir. My question is that my stream is basically a synthesis part. Can we apply this DOE to the synthetic part? Means, for example, we having a product of 2 gram initially by using some 1 gram starting material. But what factor actually responsible for increasing the product value or product quantity? So can we use that DOE part for synthesis also? Yes, you can use it very well. Based on my experience for some product, ticagrelor in our API R&D, we have used it very successfully, where you can make your process very efficient and very capable to achieve the target specification and more specific impurity levels. So it's very relevant. If you need some help, you may call. I will help you based on my experience. Sure, sir. Thank you. Thank you for your answer. Any other participant, if they want to ask the question, or we will break for 5 minutes. Don't leave the meeting, because we'll just keep it as it is, and sir will take a break and he will come again. Okay, so we will stop here for 5 minutes for the just break for the Boldani sir only. Don't leave this meeting. Be as it is over here, and we will resume within 5 minutes. Thank you. Thank you, sir. Okay.
Shall we start? Yes, sir, we can. Okay. Okay. My slides are visible, sir? Yes, sir, it is visible. Okay. Okay, so we'll start with the DOE pathway, how we should go about. So, what are the different steps based on the what we discussed in first slide? So we select experimental design. Then what are the different elements we should consider in selection of experimental design, factors, levels. Then performing, how we should perform the experiment. Then how we should treat the data. And here, whose job is there? What expertise required? So in experimental design, you should have basic knowledge of statistics and subject expertise is must. With or without statistician, you can select the design considering you know the some basics. Performing subject expertise has to do. Treatment of data, either you can take help of software or statistician. And for analysis, again, subject expertise and statistician, but interpretation and conclusion, it will be only subject expert. Statistician cannot interpret your experiment. So these are the steps, these are the expertise, but if you have some basic understanding, your statistician is also not required. Okay. Now in the first step, planning, what are the elements we should consider? First, consider what is the objective of your design of experiment. Because design of experiment is not a final thing. I told you it has a different stages, steps, and based on objective it changes. Then based on the objective, you have to select the design, whether it should be comparative, screening, interaction, optimization designs. Objective can be either identifying the factors, or you can say the description or the part of description. Then how many factors you want to consider, its number,
So select the factors, how many, and what will be the range, or you can call it as a level of each factor, because all this matters a lot in a design. Then the response, which response you want to, or how many responses you want to keep it in your equation or in your design. Then how much sample size. So it depends on a variation in your experiment. And the blocking, if there are some changes that will, well, if you come to that level, I will explain what is the blocking. So this replication and the blocking should be selected in the planning step. These are the experiment principles, right? So experiment principles, and then experimental design. So this is the chronology. Okay. Now selection of experimental design. So first, clear your objective, whether you are using it for description or prediction. Right? Because if it is description, designs will be different. If it is for prediction, designs will be different. Right? Or for prediction, you have to move from description to prediction if you are not sure about your system. Then based on the number of factors, how many factors are there, based on also design. If you said I have 10 factors, then I cannot go for optimization design. I have to go for screening design. Factors, whether your factors are known or unknown. Factors are known, levels are also known. Suppose you are very expert in your system, you have the previous experience and that, okay, these are the factors which I know. Right? So based on these things, we have to select which experimental design we want to use. Right? So the prioritization of objective helps to select the design, right? Based on the objective. Then we can select the factors, type, number, levels, and response. So if you select the objective, it becomes easy to select it. Suppose if you say I have only one factor, then which design I should use? You can go by comparative. One factor may be different levels. 2 to 4, if your objective is comparative, you can use a randomized block. If your objective is screening, you can use a full factorial, fractional factorial. If your objective is optimization, you can use a central composite box printing. Suppose you know that these are the only factors which are responsible in my system, which will affect the outcome. Then you go in optimization with these designs. So based on the number of factors, you have to select the design. Greater than 5 factors, you can use randomized block if it is comparative. If it is screening, then use a fractional factorial bracket Verma. Optimization, it says don't use it. The moment you go above 5, that design of experiment is not suitable for optimization. You have to reduce the number of factors. So go to the screening, reduce the number of factors, and then once you fall this one, you can go for optimization. So in a designs, basically there are 3 types of design. One is a comparative, means only you have to compare the levels, or maybe the 3 factors. Then you can use a comparison whether which disintegrants works well. All disintegrants are used 5%. So my disintegrants becomes the variable. So I am comparing. Or I want to compare the level of disintegrant, 5%, 10%, 15%. So these are called the comparative designs. Second, when factors are known, I can say that, okay, this is the screening design. Factors are not known, screening design. Okay, I have 7. I don't know which one will be having a major or the main effect is higher, or which one is significant factor, and which factor which work with another as an interaction that I don't know. Then you use a screening design and start mostly from fractional factorial or the bracket Verma. And when factors are known, very cautiously, very sure if your factors are known, then directly you can go in optimization. Otherwise, go stepwise. Right? Now, many times it happens, I know the factors. Then significant factors are known. You have selected 2 to 4 factors of use optimization design.
In a design based on the data, if that statistical that data says out of 4 factors, 2 are insignificant. It means now, because normally once you end in an optimization design, none of the factor normally should be insignificant. All should be significant. When result shows insignificant because you have started that, okay, you know the factor, it means your assumption is invalid. It means you have to remove one factor. So it means your model will become weak. And based on what understanding you have started about your experiment, you might have missed some other potential factors. It means the understanding what you have the state of knowledge about your experiment is not complete. It's an incomplete understanding of the system. So when you start directly in optimization with the final factors, so this is the caution which if you want to go with the known factors. So you should go with it's better use a screening, identify, remove there, and only with the significant factors enter in optimization. So in objective, you decide whether you want to estimate the levels, whether you want to go screening, then characterization. In the screening, you can use a factorial and Plackett-Berman. Second, if you want to check the interaction, then you have to use a full factorial with some replication based on the signal to noise ratio. And then once you have the interaction and curvature, then to model the quadratic response, you have to enter in a optimization design. It can be response surface, it can be mixture, it can be 3-level factorial designs where you can identify main effects, interaction effect, and quadratic effect. So in a comparative, what happens, what we study is whether or not your factor is significant, whether or not factor levels of that factor is significant. So to make a conclusion about important factor in presence of other factor, you can use a comparative design. Screening, out of 7, you have to separate or remove the major factors. You can use a screening design. His name also suggests screening. To reduce the number of process variables to a manageable number, because for optimization we don't take more than 5 factors. Otherwise, your model will become so complex. And used for developing new products where tremendous uncertainty exists. You don't know completely about your system or there is more uncertainty, then you should start with a screening design. Then here in the screening, what you can do, you can evaluate or you can identify which factors are important based on the main effect. Then all these important, you can rank them, which are more important. Number 1, number 2, number 3. Based on this, you can take a major 3 to 5, and remaining you can keep keep their level constant. So ranking is used to separate the few measures, and screening you can identify the interaction, right? Because these first 2 part you can do with the fractional factorial and the Plackett-Berman. They are mainly for main effect. Interaction effect you have to go in a full factorial. So these are the screening types: fractional factorial, Plackett-Berman, Taguchi, and full factorial. Generally, it's better to start with the fractional factorial. Plackett-Berman is resolution 3 level where main effects are also confounded. So here you may miss some information. Only advantage for Plackett-Berman is less number of trials. But if you are missing, there is chance of missing, then it's not good. It's better to go fractional factorial. You can have the lesser fraction, and then you fold over. There is one technique called fold over. Means you can double the other part so that you can make it balance. You can improve its power. You can separate the major effect. So start from fractional factorial. This is the best design, where you can go fractional factorial to full factorial and then central composite. This is the best path for design of experiment rather than going in other experiments. Because in this way we can always project
project in a higher level. So full fractional factorial resolution 4. Full factorial, it can estimate the interaction. If you are center point, it can estimate curvature. And the same, some trials still can be useful. We have to just take additional trial by using a central composite. So then previous work is also useful. So in totality, you will have the less number of trials. Okay. Then we can use optimization designs. But when to use optimization design? Once you know levels are evaluated, main factors are identified and ranked, and you have selected a major 3 to 5 factors. There is significant curvature in the response. Then you have to enter in optimization design. If curvature is not there, then don't enter in optimization. You can optimize in full factorial also. No need to come in optimization. And then you go in validation. So this is the path. So when you want to model the response or model the response of a curve, if it's straight line, optimization designs are not required because those designs are quadratic designs. Spinning designs are linear designs. So if curvature is not there, it means quadratic equation is not required. If you remember the maths, when there is a curve, parabola is there, then only quadratic equation is required. Circle, it has a curve, so it is r square, so it is a quadratic equation. When it is a linear line, you don't need it. So first check whether there is a presence of significant curvature, then you enter in optimization design. So optimization designs are used for optimal setting of significant factors to determine level of each factor that optimizes the process response, achieving optimal performance. So optimal, you have to first define the performance. For someone, performance may be the lower level of impurity. For someone, performance may be the higher yield, right? For someone, performance will be the rapid release. For someone, performance may be the delayed release. And you can have the description of about local shape of a response surface. So it gives the good fitting. So because of good fitting means where the variation is less, is a mathematical function. So where you have the more predictive power. Because when you enter in optimization, then it means you should also check whether you have the predictive power so that it can be used for prediction also, not only for description. Prediction also you can use it. So to have the good maximum accuracy, estimate the coefficient of that function, and they can identify the sweet spot. Sweet spot means level of all the factors together at a 1 point, it means X at a 7%, B at 11%, C at 2%. At this level, they use the maximum output with a minimum variation. So this is called as the sweet spot. So in a design space, we want to identify the sweet spot. Suppose if I am developing the control list, I have three specifications, T25, T50, T75. This time required for 25% release, 50%, 75%. So to achieve this, what is the best combination with a minimum variation? So that sweet spot I have to identify. I cannot just go that which gives me the best T25. No, I want to see both, all three, because my specification are there for 3 levels. Then in optimization, we can also have the robustness where we can prevent the variation. We can make the process insensitive to the factors that are difficult to control. Because see, I use so many raw materials, right? All these raw materials came from chemical nature at the last step of crystallization. And there are many variables in crystallization which will affect the surface nature of my excipients which come from different sources. So every batch might not be very similar. There might be some variation. All these variations adding together, even your process gives the best performance, that is called as robust process, which are insensitive to the changes in the factor. So to prevent the poor process and quality, or to make it robust, we can use optimization design. So where you can manage the variation in input materials, variation in a response, and variation in control environmental conditions. Like if there is some variation in temperature,
because temperature will affect the electrostatic process. So it will affect the blending. Moisture will also affect the blending. So to make it a robust to all these things, we can use this optimization for robustness. Then one major designs which are mixture design in solubilization, or if it is a phase system where you need the ratio of all these 3-4 components to optimize. So then you can use a mixture designs where the proportions are used, or like Smith's self-microemulsifying drug delivery system where we use surfactant, co-surfactant solubilizer. You can use the mixture design, which is also the optimization design. So RSM design, mostly central composite and box bank design is used. Then mixture designs, and then 3⁻k means it has a 3 level. Means if there is a curvature, if there is a quadratic response, only 2 point cannot model the response. You need a 3 levels to actually describe the any line. 2 points, it will always, if you just take a 2 points, you will always have straight line. To actually see the center and model it, we need the 3K design, 3-level design, not 2K is a factorial. So that we can identify the curvature only, right? That need center points also. So 3K designs are called as a optimization. Okay. Now select the factor. When we select the factor, first check whether these factors are relevant. Suppose if I am doing the design of experiment for dissolution, to optimize the dissolution, I have to select all the factors which will affect the dissolution. Right? It might be granulocytes, it might be polymer if it is controlled release, it might be other electrolytes which will interact with the polymer, or maybe other polymer. So we have to see whether all the relevant and sufficient factors are selected in your design of experiment. Now, whether they are sufficient or not, how to identify if your R square adjusted is higher, or the difference between R square and R square adjusted is a minimum, it means your factors are relevant. Whether they are sufficient, then R square should be more than 0.9, and between R square and R square adjusted, there should not be more than 0.2 difference. So whether it is there or not, statistic is going to tell you what type of data it is. That's the utility of statistics. So it tells you whether you, whatever the factor you selected, you feel it is relevant. But whether data says it is relevant or not, that we can use a statistical principles, statistical parameters. Second, because we are using more than 2 factors most of the times. And these 2 factors, as assumption, also should be non-collinear. Like most of the time, you cannot select like a disintegrant and surfactant as a factor for optimization, because both overlaps its impact on dissolution. Either select disintegrant or select surfactant. Otherwise, they will become non-collinear. Level in pharma or whatever the product which we develop, we have to develop the level which is workable. Like, suppose I have selected 40% carbopol and I am not able to do granulation. It doesn't work. Workable in terms of process. Or if I'm taking polymer so high, I don't have any diluent in the tablet formation. So it is not going to work. Second, approvable. Suppose I am selecting disintegrant 30%. As per my daily dose, as that for that excipient, is it approved? No. If it is not approved, don't use such a level for optimization. Then cost effective. If you use these polymers, you can develop the control tablet with 40% polymer by taking carbopol, which cost is very high. Or you can develop with a 30% polymer with 2 different polymers, sodium alginate and HPMC. So you can save the cost. After all, this cost should
product should become feasible. So all these things we have to see when we select the factors for experiment. Don't be very hurry just to put the data in your software and take the printout of graphs. See logically how do I taken all these steps? Otherwise, after experiments, software or your calculation is going to reflect the same thing. The number of factors. If you have the too few factors, then your R square will be lower, right? It will be under specified model and your estimates will be biased, right? If it is too many, R square is 0.99. But R square adjusted is 0.68. What does it tell? It tells your factors are not relevant. Because then it tells less precise estimates. Here is a bias, is a less precise. Now here R square is 0.96, R square is 0.92. It means factors are relevant. Factors are sufficient also because 0.96 is there. They are relevant because R square and R square adjusted, there is not a large difference. Now, whether this is useful, then you have to check the standard error of regression, right? This is defined or mentioned by us. Now, is it relevant? For control release, my specification is plus minus 10%. Based on this regression, I can tell you my response will vary 2 into yes, means 14%. It means this equation is still not workable for me because it gives plus minus 14% prediction, general calculation. So we have to see that how we are going and where we have to improve, right? Because see, if you start from screening design, there is always a chance to improve. You can work on it. And based on this outcome, because these outcomes should tell us in a practice what I have to do. I have to work on it. If there is variation is coming, means this is coming okay, but variation is more now, which is not useful for me. Because my specification tells plus minus 10. If my specification tells plus minus 20, then it's okay. Okay, level. So level of factors assigned to the factors. Factor and levels normally should keep at 3. And number of trials depends on number of independent variables and number of levels. So keep it minimum and 3 will be the ideal. Okay. Now don't select the factors range like 10% and 15% polymer. Because whatever the range you select should give the change, right? And this change should have a significant outcome, right? What is the change? 10 and 15 is a change. But is it effect? That we have to determine. So we have to select the range which will give you the change, and that will be the effect, not only effect. Effect may be by error. Effect is significant error means signal is greater than noise, like 1:3 ratio at least. Means signal is 3, noise is 1. Impact, it is greater than 1:10, then you can say that it has a real impact. So whatever the range you select should give the change. It should not be effect, at least it should be effect or impact. Right. How to evaluate it? Arithmetically, when solubility improved 10 to 20%, we can say that it is arithmetic change. We'll be very happy. But is it significant? Because you have to compare this change with a variation. Any change divided by variation is effect. This is general equation. Change is there, effect is there, we have to divide or take the ratio of variation. Now you have checked with a statistic p less than 0.05, and now you are seeing that, oh, now it is significant change. Right? You are happy.
You write P is less than 0.05. Then I have already explained. Practically, is it important or not? Then only this is called as impact. With respect to that area, with respect to that outcome, really that outcome is practically significant. That is actually effect. These two are mere difference. Change, this is impact, because these are practically useful, right? So we have to see that in impact, because effect is a difference slash a change divided by total variation. And then this effect we have to compare with the practical outcome, practical significance, then it becomes impact, right? So that's why previous slide, from effect we should move to the impact. Okay. So level, it should not be impractical to work, moving out of smooth area and close to asymptote, where the response achieve the saturation or the constant level, that level also we should not select, close to that asymptote. Moving out of smooth area means you go in the asymptote, that is also not useful. Impractical, not useful. So the level should be very proper. Okay, now I'll tell you the practical example of asymptote. So this is one drug, this practical data and practical evaluation which came to me. They have selected two factors, this composition. So out of this, one polymer is there because this control is product. So they have selected this 53%, 59% and 65%. So they have selected 3 levels for optimization directly. And they have also taken different levels for other factors. Max rate also is one of the factors. Okay. When they moved for max rate and methocell, they have selected 2:3 design in replicate with the 2 center point. Based on the data, they got the release profile at 0.5 hours, 2 hours, and 10 hours. When it comes, model is significant. Lack of fit, non-significant, it means there is no quadratic response. But see here, based on the p-value, only max rate is significant, not the HPMC. It's a control list formulation. Max rate is significant. Then either there are two things. You have done the research, really your outcome is research, and you have to claim that max rate can become is as a control list agent because it is significant in the model, right? That doesn't happen, right? Because if you go in its basic, they have used the methocell 53%. And normally as a subject expert, you know that after 30%, if you use a polymer more than 30%, there is no change in release profile. And same thing happen, after 53%, there is no change. Means after that range, if there is no change on your response variable, it will not be significant. Some change is required when you change the level. So these things happen because they have selected the factor levels in asymptote. This is a practical outcome. This is the data, actual data of the trials of one of our product. So this should not happen. So when you select the level, you should be very cautious that I am not going there, and then you are because you just cannot go. No, software tells this. Software tells if you give garbage in, garbage out. As a subject expert, you should know what type of experiment I have done. So this can be the learning that we should select the factors not in asymptote, outside the asymptote, not in a smoothing curves also, should not be in practical. Variables should be, the variables are known and unknown. If they are known, major or independent, this will select for y is equal to fx. During screening experiments, some of the independent, like suppose we have initially assumed 5 to 7, from there to 3, we will put it control because they are not significant. Blocking, if there are some changes, suppose I have done some trials in this week, some trials after 15 days. Now this I will make a block
whether the variation is very significant. If there is change in operator, change in API batch size, or change in a polymer batch size, because you know polymers, they don't have the definite molecular weight. They work on molecular weight distribution. If one polymer like carbopols or HEC, HEC has a variation 3,500 to 6,500. If one batch size comes 6,000 molecular weight, another comes 4,000. As per specification, both are acceptable. But that will affect my outcome. Now I will not able to judge the level of factor, right? So I have to either should not change the batch size, or if I change, I should consider it as a block. And then unknown, if you don't know, then it will become confounded. Confounded will be identify variation inflation factor. Uncontrolled is there due to the randomization. So this factor will be removed. So the all factor you can control somewhere. There should not be any factor which is not uncontrolled or not considered in your experiment. Okay. Then during experiment, we have to use these experimental principles. Without that, then it will become trial. That how many replications are required during performing. Suppose I have made a design. There are 12 experiments. I will not go 1, 2, 3, 4, 5. No, I have to randomize the order so that these errors will be systematically distributed. The effect of extraneous factors will be equilibrated in all these things so that it will not affect or not create the systematic errors, and it will form the basis of variability. Replication, so based on the error, we have to select the what will be its pure error. Estimate of pure error will come from replication. Pure error cannot be zero. Many times people in a software, they come that pure error is zero. No, pure error is zero only when you are manipulating. Every time you are saying that I am getting 45% release, 45% release, 45% release. That cannot happen in a continuous variable. So replication is required for a precise estimation because you repeat it. So replication is required for screening design and optimization design both, because replication here you get for appropriate power to check a reproducibility and to reduce the leverage. Leverage means impact of one trial or impact of one level. In optimization, to check the lack of fit, we use the replication, and normally we replicate the center points. To estimate the block effect, we replicate, and to estimate the poor error. So replication is required for this objective in both the case. No design, mostly for screening or optimization, should be performed without replication, because without pure error you cannot estimate lack of fit or quadratic effect or natural variation. Blocking, I explained the screen out the noise caused by known sources like API or raw material batch changes, shift changes, or machine differences. So it can increase the sensitivity of the effect, means it will remove the impact due to operator. So it means actually you will get the effect. Otherwise that effect is added, then it will become confounded. And if you know that some effect, some factors, there is no effect, don't block, because it is going to reduce your degrees of freedom, right? That is a loss to you. So if you don't block anything which is selected for the study, means if it already in the independent variable, don't use it as blocking. Or if you know that it doesn't have significant impact, don't add it in blocking. So random variation, uncontrolled, randomization is used. Known variation, but non-significant. If you use a blocking, it reduces a power. Known and significant, that will be the factor for your study. In a factorial DOE, you have to check the power, to check the replication. Power is focused on model coefficient so that its estimate will be perfect, and it's based on signal to noise ratio. So in a factorial design, based on signal to noise ratio, we check the replication requirement. 1 replicates, 2 replicates.
In RSM, its a major objective is precision. Here is a power is focused on model coefficient. So we, in a factorial design, we want to estimate model or the major factors, not its precision. But in RSM, precision is required, and that precision, we take it based on the fraction design space. Before starting, we check the fraction design space so that variability will be less. So in a power, we can check that we want at least 80% power. So we can use a sample size and runs. We can either increase the signal, means whatever the magnitude of difference you are looking for should be more, or you reduce the error or the noise. So where you can achieve the more power. So from where this, how to estimate this noise? You will ask that I know the signal. What difference will be significant for me? Suppose in a dissolution control is, I will say more than 20% is a signal. But what is your noise? Noise, you check all your previous data, and from that you calculate the noise and take its average. Or you can use a control chart to determine, but this one is the most important. Based on your previous trial, just check what is the natural variation you are getting for last 10 experiment. So if your ratio is 1, trial is 64. If ratio is 1.4, trials is 34. So if you increase the ratio, trials comes down. It means you increase the signal or reduce the noise, right? The signal of a response variable. So which will be your response variable? Maybe this last part I will check, and I will conclude there. Then I will check some, take some question answer if you have any. So what should be response variable? Shall I take a hardness as a response variable? Shall I take assay as a response variable? Something you can check, but don't take it in equation, because in every experiment you have added 100%. There is no change in as should not happen any change. So that should be the CQA or the critical process parameter that should be added as a response variable. Performance characteristics like a dissolution, like maybe the disintegration, impurity level, that you can add as a response selection. All relevant and appropriate responses you can add. Quantitative is more suitable than qualitative. Use a quantitative, right? Whether it's flavor, its consistency, that should not be added. Then you add a rheology if you want to add it, right? Then all these should be measured accurately. So measurement system analysis should be checked that, okay, whatever the method I am going to use, they are measuring this response accurately. Suppose dissolution is there, the variation should not be more than 5%, because my specification is not more than 10%. And it should have the direct effect of independent variable on response. Whatever the independent variable you are selecting, it's a direct response should be there, not indirect. Then associated with fundamental mechanism of the product or process. Whatever the response surface, it should be fundamental product or process mechanism. Avoid using responses that combine 2 or more measurement of the process. Suppose if you should not select the 2 collinear variable like a disintegrant and surfactant, or you should not select such a response which is a combination of measurement of 2 processes. So the response variable is based on the goal. What is your goal? It may be you want to hit the target that you want to achieve 100% yield, or you want to reduce the variability, like variability between the dissolution assay should be less, or your goal may be minimizing, means you want to minimize the impurity. You want to maximize, so it may be the yield, or you want to optimize like a time, cost, profile. So these goals you have to select. Sometimes one goal may contraindicate other, so you should take care of both the things. And goals must be converted explicitly measurable quantities. And when you measure, then measurement system analysis should be properly checked.
When you use the measurement or any property, you just check two things. What this is a problem. Suppose problem is a compaction. To achieve the hardness, to which level of property it is correlated? It is only granule size, then it will become bulk level. But it is not only granule size, right? It is a particulate level because its surface nature affects the compaction. It is not only particulate, there is some molecular level, like a crystal hardness. So you should consider all these parameters. Otherwise, your response and your model and your experiment will be completely haywire. So first locate the problem or the response variable is at what level it's going. And then you determine whether this measurement is by measured or derived, right? Derived will again two part, determine plus derived. Determines means you do sampling, you do process, sample preparation, then injection, then it will become determined. And if its measurement is a derived, means like particle size, is a derived property, because you take a particle, then diffraction, that angle, then algorithm, then it is considered. It is not direct measurement. So you should properly check it before going ahead, and then you should enter in a second step of performing. So considering a time schedule, I may not able to complete remaining slides. There are so many. It's a big topic. So I hope I have tried to touch the some parts, not all the parts, because this pathways, it will take around 6 to 8 hours. So it's a big topic. So at this stage, I will stop it. But if you have any doubt on any question for me related to anything related to Six Sigma, design of experiment, design, you let me know. I will try to answer it. And let me know if there are any questions over to Devkati sir or principal sirs. Dear participants, the topic is open for discussion. If anybody wants to ask anything, you can ask, or you can put in the chat box also. Sir, there is one query in the chat box. Yeah, Dr. Seema, she has asked that many journals may reject the paper if the R square is very less. see, this should not happen. First, I told, check what is the objective of your research, objective of your design. If I want to identify, objective is what are the major factors which will affect this outcome or this response. Then R square doesn't matter for description. You should explain it properly. If you say that no, this is for optimization, then if R square is less, nobody will accept. And only R square doesn't matter. You go in a standard error of regression, that matters more. So you should explain them scientifically and statistically. This should not happen. Because if objective is description, then R square less is okay, but it should not be less than 0.5. Otherwise, what will happen? It will be error signal and noise is same. So it should be rational, it should be more than 0.5 for description. And for prediction, it should be mostly greater than 0.8 with lower standard error of regression. Okay. So next question from Dr. Suhas is, should we have more parameter interrelation or only 2 or 3 parameters? See, we should take 3 to 5 parameters for optimization, which are relevant. For screening, you can take 5 to 10 factors also. But you use the term interrelation. Interrelation means within a factor, there should be minimum relation. Independent variables, or what we call factor, should not be correlated.
Otherwise, your variation in inflation factor will go up. If it crosses 5, your model will become unstable. Okay, because see, why indirect correlation should be avoided? Another question. Because see, you are adding two factors which gives the similar impact on the response. So equation is not able to separate the effects individually. And our aim is to we have to separate the effect independently, which we cannot have overlapping. Some overlapping always it will happen. So some overlapping is permitted because we have started this modeling based on the regression assumptions or the multiple linear regression assumption, where we have assumed that these independent factors should not be highly correlated. And scientifically also it doesn't mean anything. Okay, any other? Shall I check the chat box? Sir, if you go back to the chat box, we can see one more question. It is whether you can apply this approach to CAD, computer-aided drug design. Can we apply this? See, I'm not expert in computer-aided drug design, but if you want to optimize your outcome, and if you select some factors that, okay, these were responsible for optimization, definitely you can use it. I think the queries are solved. May I request Dr. Shilpa Chaudhary, Madam, Associate Professor from D.Y. Patil College of Pharmacy, to please conclude this session. Ma'am, please. Please unmute yourself, ma'am. Dr. Navle, sir, can you make that provision for unmuting? Thank you, Yes, ma'am. I have done that changes. Thank you very much, ma'am, to all the organizers for giving me this opportunity to conclude the session of Boldhane sir, or rather than conclusion, I'll say to summarize the session of Boldhane sir. I know him when he came as a resource person in our college. I hope this particular whatever session he has conducted has helped everyone to be aware about the critical issues in the development of the experimental design skills. And I'd like to just summarize in short what he has covered. The main point which he has covered is the statistical applications of or the application of statistics in our regular experiments, and objective of the experiment should be properly defined before going for designing any experiment. The reliability and the validity of the experiments to be checked, strategy of the experiments has to be decided, replication, repetition, randomization, how we need to focus on various approaches of experimentation. And he pointed out various critical points or he gave the guidelines in designing these experiments. Sir, each time I listen to you, I gain something more. And whenever I listen to design of experiment, there is always some take-home message for me. I hope all the participants who have participated will be prompt enough to apply the knowledge which they have gained in their teaching itself and practicing it with their students. Thank you very much, sir. On behalf of Government College of Pharmacy, Aurangabad, I thank you very much for sparing your valuable time and giving your insights regarding the design of experiments. Thank you very much, sir. Okay, thank you, madam. Thank you so much, sir, and thank you, madam, for wonderful concluding of this session. I now request Dr. Navle, sir, to please display the appreciation certificate from our side, from the organizing college. Boldhane, sir, this is for you. Thank you so much for delivering such a wonderful session. This is a virtual applause from all the participants. So thank you so much, sir.
Okay, thank you. May I request Dr. Navle sir to please exhibit the certificate of Dr. Shilpa Chaudhary madam for acting as a chairperson for this session. Thank you, madam. Thank you so much. Thank you, ma'am. Over to you, Navle sir, if you want to give any instruction. Thank you very much, madam. There is only one instruction for the all participants. Today afternoon we have a Yogeshwar Chavan sir, but unfortunately due to some reason he is not conducting the session. Instead of that, Dr. Uday Devkate will conduct the session. So sharp at 2 o'clock we will meet. He is going to talk about the how the videos are created, how the learning during the our teaching process, how the videos, how to edit them, and how to use this video as a tool whenever you go for the teaching. So he's very expert in that. So we will meet at 2 p.m. sharp for the lecture by Uday Devkate, and sharp at 4 p.m. we will have our valedictory function. Thank you very much. Thank you. See you to 2 p.m. Okay, thank you. Shall I leave the meeting? Thank you, Boldane sir. Okay, thank you, sir. Join the session. Thank you, sir. Okay, okay, thanks. Yes, we can conclude now. Sir has completed his industry program in pharma quality assurance and quality control from Noida. Also presently, sir is undergoing postgraduate diploma in educational management and administration from Indira Gandhi National Open University. Sir has working in academics since last 29 years. Sir is approved UG, PG and PhD teacher of Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, and PhD guide of Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada, Andhra Pradesh. Sir is a life member of the Association of Pharmaceutical Teachers of India and the Indian Institute of Technical Education. Sir has also worked as a member of examination committee and panel of examiners for various universities like University of Pune, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Swami Ramanand Setu Marathwada University, Shivaji University Kolhapur, SGB Amravati University, RST Nagpur University, and sir has also worked as a paper setter for multiple choice questions, paper setting for state level entrance examination conducted by Government of Maharashtra, that is MH, MPH, PET for admission to MPharm since 2016 to 2006 to 2015. Sir's proficiency in instrument handling is very well known to all of us, and some of them are UV visible spectrophotometer, IR spectrophotometer, AS, HPTLC, HPLC, autotiter spectrophotometer, GCMS. Sir has participated in many seminars, conferences, and staff development programs. Sir also worked as a subject chairman of syllabus training committee constituted by Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, and also worked as a resource person in various refresher courses in chemistry, chemical technology, and pharmacy. Sir has more than 50 national and international publications on his account, and also published one patent as his credit. So this is a very crisp introduction of sir. And apart from this, sir is really a tech-savvy person, very proficient in the use of modern technology, and especially computers. So we welcome you, sir, on behalf of Government College of Pharmacy, Aurangabad. The dais is all yours, sir. Thank you very much, madam. Thank you, sir. Today, good afternoon to everybody, all the participants, all the staff members of various colleges. This is a somewhat different lecture, you might think, in your STTP program, because you are always talking about the research and everything. And suddenly I started talking on challenges to the online learning and creating video lectures. Okay. एक तो दोपहर का समय है, खाना खा के बैठे होंगे जल्दी जल्दी में आप लोग, और ऐसे फालतू के सब्जेक्ट पे क्यों हम मुझे यहाँ पे बिठा दिया, ऐसा बहुत जनों का सोचना होगा. लेकिन I think most of you are teachers. Okay, so not only doing the research but doing the major job of teaching, and in the pandemic situations we are encountering various problems of our online learning. So these are the challenges which I am going to talk with you. It is my honor to be
deliver such type of the lecture in front of you. So one thing I would just express about today's lecture, that if you can see what is video lesson, that is the basic thing I'm going to talk. So video lesson, it is a video lesson is a video which present educational material for a topic which is to be learned. Generally हम जो video lecture बनाते हैं तो उसका I think it will be dual language में रहा तो comfortable रहेगा मेरे ख्याल से. आपको सोचने के पहले मैं मेरे को सोच रहा हूँ I can talk in both languages. Just we're thinking about the video lectures. So video lectures एक तो ऐसा हो सकता है कि आप टेबल पे बैठ के एक वीडियो बना रहे कंप्यूटर के सामने, या फिर कोई बोर्ड के सामने आप वीडियो बना रहे, या फिर कोई टेक्स्ट आप बना रहे, only text you can show in the video. So that all covers in the video lessons. Okay, so material for a topic which is to be learned is called as a video lecture. Now, video lesson might be a video of a teacher speaking to the camera, photograph, text about the topic, or some mixture of this. If a picture can speak, you can see this. If a picture can speak a 1,000 word, then probably video can speak 10,000 or million words. Okay, so if you make some animations, even it is not necessary that you go and make your own animation. Animations are available online. You just can include it in your videos, and that will clearly give the idea to the student that how the mechanism is going on. So that is again one more advantages. So we'll learn the advantages. We'll just talk on the advantages also. So online challenges, learning challenges, online learning challenges faced by the student. Okay, so always we are saying that those challenges are to the staff, to the teachers. That is not the case. Challenges are towards the student also, because they are having some problems when they are going online. Suddenly after pandemic situations, we are shifted to this online platform. अभी तक तो हम लोग ट्रेडिशनल क्लासरूम में पढ़ाते थे, जहाँ पे बच्चे सामने बैठे हुए, बच्चों को भी वही आदत थी अपने साथ में पढ़ने का, उनका वही माइंडसेट बना था. और पैंडेमिक सिचुएशन जैसे आया, सडनली हम सब लोग पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन सिस्टम पूरा बदल गया. इट गोज टू द ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम. उसमें भी हम लोग जो थियरी है हम तो बहुत अच्छी तरह से पढ़ा लेंगे ऑनलाइन सिस्टम में, बट व्हाट अबाउट द प्रैक्टिकल्स? ओके, द चैलेंजेस रिमेन देयर. कैसे करेंगे प्रैक्टिकल्स के बारे में हम लोग? हाउ वी कैन डू द प्रैक्टिकल्स वर्चुअली? ओके, सो वो भी एक सोचने की बात है. तो सबसे पहले हमको स्टूडेंट के बारे में, चैलेंजेस आर देयर फ्रॉम बोथ साइड, not only from the teachers but from the student also. So we have to see the challenges what students are facing, what challenges are faced by the student. So first is your adaptability. Student find it's difficult to adapt to an online learning environment immediately after traditional classroom learning. Due to the sudden changes, they are not able to adapt to the computer-based learning. Students who have been always studying in traditional classroom mindsets are not able to focus on online platform. It is important for them to accept the new learning environment with an open mind. How to overcome this? मैंने यहाँ पे दोनों भी चीजें दिखाए कि क्या challenges है and how we are going to overcome this. Nowadays, adaptive learning is using. अभी हम लोग बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, जैसे बायजूस वगैरह लोग, मैं उनका एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या बताया कि एडेप्टिव लर्निंग, पर्सन टू पर्सन उन्होंने कुछ वेरिएशंस किए हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ यूज किया है या कुछ किया है, तो अपने को जो स्टूडेंट के लिए चाहिए उसका कहाँ पे लैकिंग है वो देख के उन्हें पर्सनलाइज टीचिंग एंड लर्निंग मेथड बनाए. तो शायद उस टाइप का अपने को फ्यूचर में जाके सिर्फ वो क्लासेस वाले नहीं, तो अपने को कॉलेज में भी वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. तो adaptive learning strategy we may have to apply. We have to see 60 के क्लास में बैठते हैं तो 60 स्टूडेंट का एक जैसा नहीं रहता है माइंडसेट, तो अलग अलग माइंडसेट रहता है. So in that way we have to think that how we can give a common thing or we can give a thing which can be understood by each and every student. Okay, दूसरा है, एक मिनट, दूसरा है टीचिंग इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज.
ओके तो मोस्टली हम लोग टेक्निकल इश्यू जैसे आज ही पे पावर फेल्यूर है, तो वैसा हरदम होता है। मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट वेल इक्विप्ड विथ हाई स्पीड इंटरनेट। तो सबसे पहले अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस वगैरह आ गया, तो उसमें पहले हम लोग यही सोचने लगे कि अपने पास में इंटरनेट नहीं है तो बच्चे कैसे एग्जाम देंगे, किसी के पास में तो वो मोबाइल भी नहीं है। दिट इज अ फैक्ट that many poor students they do not have the modern mobile systems laptop। वो तो बाद में की बात आ गई, लैपटॉप या आपका टैब वगैरह। लेकिन सारी चीजें के बावजूद भी, वो सब होने के बाद भी हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए, क्योंकि अगर हम वीडियोस कुछ लगा रहे या फिर हम लोग कुछ टीचिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो उसको देखने के लिए उनको हाई स्पीड इंटरनेट की जरूरत है। And due to this, they face problems in going live for virtual learning and other platforms that require the internet connectivity. They face technical issues as they do not match much aware technology and computer applications. बहुत से स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि उनको कंप्यूटर के बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रहता है, क्योंकि स्कूल लेवल में भी अभी तो इंक्लूड किया है, लेकिन कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनके स्कूल लेवल में कंप्यूटर नहीं था। अभी नए स्टूडेंट्स जो आएंगे तो शायद वो उनके स्कूलिंग एजुकेशन में उन्होंने कंप्यूटर पूरा पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस उनको तो फेस करने पड़ेंगे। दे फेस टेक्निकल इश्यूज। दे शोज द हाई इंटरनेट कनेक्शन कैन बी इम्पोर्टेंट रोल इन हाउ क्विकली यू कैन अटेंड द क्लास। तो इसके लिए एक ही है कि यू शुड हैव द हाई स्पीड इंटरनेट। कोई भी अगर फ्री इंटरनेट अवेलेबल है तो वहां पे जाइए, या फिर जहां पे भी आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल है, उसके सिवा दूसरा कोई सोल्यूशन ही नहीं अपने पास में अभी तो। ओके, इंटरनेट इज ओनली द सोल्यूशन। बहुत चीपर अभी अवेलेबिलिटी है इंटरनेट का, बहुत से अभी इंटरनेट कनेक्शंस इजीली अवेलेबल है वाईफाई में या किसी में भी। तो टेक्निकल इश्यूज में आता है इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर नॉलेज भी एक है। नॉलेज के बारे में अगर बोलेंगे तो देयर आर मेनी स्टूडेंट हु स्टिल कैन नॉट ऑपरेट बेसिक कंप्यूटर्स विथ MS वर्ड एंड पावर पॉइंट्स। उनको कभी पढ़ाए नहीं, वो जो हमारे वक्त में एक ये रहता था कोर्स, तो स्टूडेंट को कंपलसरी रहता था कि MSCIT, अगर MSCIT कर लेते तो आपको वो सारी चीजें ऑटोमेटिकली सीखने को मिलेंगी। वी शुड इंसिस्ट द स्टूडेंट दैट वी शुड लर्न दिस द मिनिमम knowledge about the computer systems, and where some technical issues emerges, they find it difficult to solve problem such as browsing various windows, or if we are using LMS software also, हम तो अपनी तरफ से LMS को प्रैक्टिस करके 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 उसको इस्तेमाल कर लेंगे, जिनोमियो मॉड्यूल है कुछ है, लेकिन बच्चों को वो कैसे इस्तेमाल करने का है, कैसा उसको ऑपरेट करने का है, वो मालूम नहीं रहता। सो वी शुड मेक सर्टन वीडियोस। हमने भी पहले LMS जब किया था तो एक छोटा सा वीडियो बनाया था हाउ टू यूज द LMS, और फिर वो वीडियो हमने अपलोड कर लिया। LMS में जाने के पहले WhatsApp पे दे दिया, और फिर बच्चों ने उसको देख के दे आर ज्वाइनिंग द LMS एंड दे आर डूइंग इट नाउ सक्सेसफुली। So training is only the way to overcome these challenges. Computer knowledge, we cannot do more than the training to overcome these challenges. Then second is your time management. टाइम मैनेजमेंट तो स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट होते जा रहा है, क्योंकि अभी सडनली कभी भी टीचर्स व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देते कम आई वांट टू टेक योर लेक्चर। वो अवेलेबल है या नहीं है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं रहता है। स्टूडेंट की तरफ भी, स्टूडेंट को कुछ अगर कुछ है उसको काम, तो उसको भी मुश्किल जाता है कि 11th आवर पे सर बोल देते लेक्चर में आ जाओ, हाउ आई कैन स्पेयर माई सेल्फ। कॉलेज में एक टाइम टेबल रहता था, उस हिसाब से चलते थे, तो इसके लिए भी टाइम मैनेजमेंट होना जरूरी है। Many cases student finds difficult in managing their times with online learning. Online learning is completely new for them and require initiative work. They need to schedule planner to manage their time in an effective manner. So how to overcome this challenge? तो सबसे पहले है अवॉइड डिस्ट्रक्शन। किसी का भी देख लो, कभी भी अपने हाथ में जब मोबाइल आ जाता है तो हम लोग काम करने जाते हैं, किसी को फोन करने का है, तभी अपने को कुछ व्हाट्सएप नोटिफिकेशन दिख जाते हैं, फेसबुक नोटिफिकेशन दिख जाते हैं, और हम क्या कर लेते हैं कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट फोन कॉल वी स्टार्ट ऑब्जर्विंग दिस व्हाट्सएप और फेसबुक। तो वो एक डिस्ट्रैक्शन का मायना है। तो वैसे भी टीचिंग बीचिंग तो बच्चों के लिए एक कंपलसरी चीज रहती है, तो उनको तो उतना इंटरेस्ट उसमें क्रिएट नहीं रहता है। सो इन दैट केसेस व्हाट हैपन, दे
गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर बेसिक मोटो। उनको क्या करने का है वो भूल के वो अपना एक काम चालू कर देते हैं, जिसके अंदर उन्होंने कुछ व्हाट्सएप देखना चालू हो जाता है और लर्निंग बाजू में हो जाता है। बहुत बार तो ऐसा देखा है हमने अपने घर में, अभी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो वीडियो तो चालू कर देते, उनका खुद का वीडियो म्यूट रहता है, उनका माइक म्यूट रहता है, और बाद में वो पूरा ड्रॉप डाउन करके बैक एंड में कुछ गेम खेलेंगे या फिर फेसबुक देखेंगे या फिर व्हाट्सएप देखेंगे। और बेचारा इधर टीचर, क्योंकि अपने हाथ में उनका बटन है ही नहीं इस वक्त में, उनके हाथ में अपना बटन है। क्लासरूम में अब उल्टा रहता है, हमारे हाथ में उनका बटन रहता है, क्योंकि एक बार जब क्लासरूम में वो बैठ जाते तो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं उनको, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। तो अपने को उनको कैसे वो डिस्ट्रैक्शन वो अवॉइड करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनको एक अपने को बताना चाहिए कि टू डू लिस्ट कर लो कि आपको क्या क्या करने का है, आपको कौन से समय पे क्या करने का है, वो एक कर दो। मल्टीटास्किंग बहुत बार रहता है कि एक बार मैं पढ़ने को बैठ रहा हूँ इधर। अभी तो पैंडेमिक में बहुत सारे जोक तो हमने देखे होंगे कि इधर मीटिंग चल रही है और इधर बीवी ने कुछ प्याज व्याज काटने को दे दिया, बेचारा वो मीटिंग के साथ में वो भी काम कर रहा है। तो दैट हैपन्स। तो बच्चों के साथ में भी ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ दूसरा काम दिया जाए और बोल रहे क्या तुम तो कंप्यूटर पे तो लेक्चर देख रहे, साथ में ये भी कर दो। तो उसको एक मल्टीटास्किंग बोल सकते हैं हम लोग, तो उसको अवॉइड करना चाहिए टू गेट द अप्रोप्रिएट कंसंट्रेशन टूवर्ड्स द लेक्चर्स। तो वो स्टूडेंट की तरफ से है अपने को टाइम मैनेजमेंट वाला। एक तो रहता है सेल्फ मोटिवेशन। तो सडन ये क्या हो गया कि ये आ गया अभी पेंडेमिक, 1.5 साल हो गया अभी बच्चों को कॉलेज स्कूल देखे हुए, तो दे आर लूजिंग देयर मोटिवेशंस। मेरा खुद का लड़का है अभी 12वीं में, तो वो 1.5 साल से 12वीं पढ़ रहा है, अभी भी एग्जाम का कुछ पता नहीं, सीईटी का पता नहीं। तो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि दे आर लूजिंग ऑल देयर होप अबाउट देयर एग्जामिनेशंस एंड ऑल दिस एजुकेशन सिस्टम। तो उसके लिए अपने को कुछ उनको मोटिवेट करना चाहिए, उनको खुद के लिए सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। जैसे हम लोग एलएमएस में सेल्फ मोटिवेशन करते हैं, एलएमएस जैसा हम अभी जिनोमियो में बहुत सारे मॉड्यूल बना लिए। तो उनमें हम लोग क्या कर दिए कि वीडियो अपलोड करने के बाद इतने वीडियो अगर आपने देख लिए इतने टाइम समय में, तो वी गिव सम बैचेस टू देम, बैडजेस, ओके, सर्टिफिकेट्स या बैजेस ऐसा कुछ देके हम उनको मोटिवेट करते। तो वैसे स्टूडेंट को भी खुद को मोटिवेट होना जरूरी है टू कंप्लीट द टास्क। लैक ऑफ मोटिवेशन कॉमन चैलेंजेस फॉर स्टूडेंट। तो इसके लिए उनको सिर्फ इन्वॉल्व योर सेल्फ, वही है स्टे पॉजिटिव। सबसे अच्छा है कि उनको ये बताना चाहिए अपने को जो भी चीज है तो तुम्हारे अकेले के साथ में नहीं हो रही, दिस इज हैपनिंग विथ एवरीवन, एवरी स्टूडेंट, एंड बी पॉजिटिव। जो भी मिल रहा है उसको आप अच्छी तरह से उसको लो। यहाँ पे भी सीखने को मिल रहा है, आगे भी जाके कुछ हो सकता है कि 50% के ऊपर लर्निंग हमारा ऑनलाइन हो जाए। तो इसलिए बच्चों को पॉजिटिवली उसकी तरफ देखना चाहिए। दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन तो अभी जैसे मैं बोल रहा था कि बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन अपने फोन में खुद है, जैसे व्हाट्सएप है, कुछ गेम्स है या फिर फेसबुक है। उसके अलावा भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं। बिकॉज अब तो हम क्या हो गए कि घर में आके पढ़ना चालू कर दिए, तो घर में तो अलग एक्सपीरियंस मिलेगा ना उनको। कॉलेज में रहता है तो एक क्लासरूम रहता था या लैबोरेटरी रहती थी, उनके खुद के दोस्त रहते थे, सामने टीचर रहते थे, फिर बाद में स्कूल का एक डिसिप्लिन कैंपस रहता है। वैसा चीजें नहीं है घर में, वो दे आर मिसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो उसके कारण भी उसको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। घर में क्या रहेगा, कुछ पार्क रहेंगे, प्ले ग्राउंड्स रहेंगे आजू बाजू में, या फिर घर में फैमिली मेंबर्स रहेंगे, जहां से समझो हमारे घर में अभी कुछ कुकिंग चल रहा है और मैं अगर इधर कुछ लेक्चर दे रहा हूँ तो हो सकता है उधर से सीटी की आवाज आ जाए, तो वो तो होता ही रहता है। तो वैसे बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस उनको देखने को मिलते हैं। कई जगह पे बच्चे रहते हैं घर में छोटे छोटे, उनका चिल्लाना चालू हो जाता है। कितने देर बोलेंगे हम लोग बच्चों को कि चुप, आवाज नहीं करना है, वो तो खेलने वाले। तो एक हमको याद रखना चाहिए टीचर्स को कि हम अपना एनवायरनमेंट छोड़ के उनके एनवायरनमेंट में आ गए। हम लोग उनको इम्पोज नहीं कर सकते हैं, हम अपने लिए कुछ ऐसा डिस्ट्रक्शन अवॉइड करने का जरिया ढूंढेंगे कि जिसके अंदर हम कोई लेक्चर्स ले रहे तो उनको डिस्टर्ब ना हो जाए। तो वो सबसे अपने को ध्यान में रखना जरूरी है। तो हाउ टू ओवरकम दिस, यू शुड इन्फॉर्म योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट के लिए। तो कभी कभी ऐसे लेक्चर चलता रहता है, फोन आ जाता है, तो फिर उनको बोलो कि नहीं ये मेरा 10 से 11 लेक्चर है,
तो उस वक्त में मुझे फोन मत करो। मैं अभी कौन से नजरिए से देख रहा हूँ, स्टूडेंट के नजरिए से, टीचर के नजरिए से हम लोग आगे देखेंगे। रिस्ट्रिक्ट द स्टूडेंट एरिया ऑफ द अदर्स टू कम ड्यूरिंग द लाइव सेशंस। नहीं तो बहुत बार ऐसा रहता है कि लाइव सेशन चल रहा है, अगर गलती से कैमरा खुल जाता है तो अपने को दिखता है कि कोई तो भी पीछे से आ रहा है, जा रहा है, या फिर मम्मी बीच में आके चिल्लाती है, ए चल दूध पीने को चल, खाना खाने को चल। तो वो होता रहता है। तो बच्चे जनरली म्यूट रखते हैं, अभी बहुत सारे उनकी कोशिश रहती है कि ऐसा एक्सपोज ना हो जाए। फिर भी हो सकता है गलती से अगर रहा तो उनको एक सेपरेट रूम उसके लिए होना चाहिए या सेपरेट प्लेस होना चाहिए। और रिलैक्स मूड में, रिलैक्स यानी कि सो के नहीं। बहुत में देखा है हमने कि जब हम लोग ये कर ले जाते हैं लेक्चर्स ऑनलाइन, तो बैठे 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 थोड़ी देर के बाद आड़े हो जाते और वैसी नींद लग जाती। तो ऐसे वक्त में भी बच्चों को एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, टेबल चाहिए, वर्किंग उसका लेक्चरिंग का स्पेस चाहिए, जहाँ के बैठ के वो सामने को देख के अच्छी तरह से लेक्चर अटेंड कर सकते। दूसरा है लर्निंग स्टाइल। तो बहुत सारे बच्चों का अलग अलग लर्निंग स्टाइल है, एक जैसा नहीं है। कुछ लोगों को बुक पढ़ के समझता है, कुछ लोगों को वीडियो देख के भी समझता है, कुछ लोगों को खुद का नोट्स बनाना पड़ता है, कुछ लोगों को रात को 3 बजे पढ़ना पड़ता है, कुछ लोगों को 2 बजे पढ़ना पड़ता है, या कुछ लोगों को दिन भर पढ़ना पड़ता है। तो खुद का हर एक का अपना अपना लर्निंग स्टाइल रहता है। और वो अगर हम लोग ऑनलाइन टीचिंग ले रहे, 1 घंटे का लेक्चर ले रहे, तो वो सब छोड़ के उनको उसी वक्त में वहां पे अटेंड करने का रहता है। तो उसके लिए वो भी चैलेंज है। हाउ टू ओवरकम दिस? To get better learning outcomes, it is important to understand the learning styles. You can learn through interactions, visual presentation. तो जैसे भी हम लोग अभी ये मॉड्यूल्स वगैरह बना रहे हैं, इसमें डिस्कशन फोरम्स रहते हैं। समझो ठीक है, आप मॉड्यूल नहीं बना रहे, कोई बात नहीं, लेकिन वी कैन मेक ए सब्जेक्ट वर्क ग्रुप। बहुत सारे स्टाफ ने तो बना भी लिया होगा कि सब्जेक्ट वर्क बुक है, तो वो सब्जेक्ट वर्क बुक व्हाट्सएप ग्रुप्स, और उसके अंदर डिस्कशन फोरम रखो। बच्चों को बोलो, यू इंसिस्ट देम टू राइट द थिंग्स इन द व्हाट्सएप। उनको कुछ अलग सा मिलता है, उनको कुछ एडिशनल बुक्स मिलते हैं या कुछ मिलता है, या कुछ अच्छा उनको उसके बारे में समझाए, तो दे कैन शेयर एंड द अदर्स शुड गिव द देयर रिमार्क्स, और उनको क्या लगा वो उन्होंने लिखना चाहिए। तो दैट इज द लर्निंग स्टाइल। और सबसे आखिरी है कि फीडबैक। तो फीडबैक होना जरूरी है, बच्चों को खुद को समझना चाहिए कि ये मुझे समझा या नहीं समझा। बहुत बार ऐसा रहता है कि कुछ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट रहते हैं, हम जब देखते हैं सुटिक्स वगैरह में, हमको केमिस्ट्री वाले लोग तो उसको थ्योरेटिकली बोलेंगे, या फिर जैसे फोरेंसिक फार्मेसी है या अपना एफपी है, या ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स है जो थ्योरेटिकल है, तो फिर अपने को लगता है अरे समझ गए समझ गए समझ गए। लेकिन जब भी उसके ऊपर क्वेश्चन जाते तो उनको वो लिखना नहीं आता है, उसके ऊपर उनको मैनेज करना नहीं आता है। तो दैट इज फीडबैक। Okay, so from point of view of your student also, you should have certain feedback system. तो हमारे मूडल्स में भी ये फीडबैक है। हम टीचर्स भी देख रहे हैं उसको कहाँ तक उसने किया, और वो बच्चा भी खुद को देख सकता है कि ये इतना उसका हुआ है या नहीं हुआ, क्वीज लेके, या फिर उसका एक वहाँ पे एक रॉड आता है, ऐसे एक मार्किंग आता है जिसके अंदर उसने परसेंटेज कितना क्लियर किया है, वो सब्जेक्ट का उसके अंदर रहता है। ओके, सो दिस इज द चैलेंज हाउ दे कैन ओवरकम। नाउ विल टॉक अबाउट द challenges seen by the teachers. Okay, so सबसे पहला अपना मेन प्रॉब्लम आ रहा है engaging the students. Sorry, engaging the student. तो क्लासरूम में तो हम कैसे भी बात करके, या फिर उनको जगह जगह के, जैसे अभी 2 बजे का लेक्चर है, 2 बजे का लेक्चर भी अगर क्लासरूम में रहता है तो हम बच्चों को जागता रख सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यही रहता है कि बच्चे अपने को एक बार कैमरा बंद कर लिया और ये माइक बंद कर लिया, तो बच्चे फिर गए, तो उनको एंगेज कैसा रखेंगे। तो एक अभी ऐसा ऐसे लेक्चर हम लोग देख रहे थे, तो उन्होंने एकदम सिंपल बात बताई कि उन्होंने बताया कि सब बच्चों को एकदम बीच में बोलो, ओपन अप योर कैमरास, लेट मी सी यू। चलो हम भी करते हैं कि ओपन अप योर कैमरा, देखे कितने लोग सुन रहे। तो जिनको सचमुच वो बैठे हैं तो वही मेरे को दिखेंगे, अदरवाइज बाकी तो सोए होंगे, तो वो लोग जनरली
कैमरा में आना के लिए, क्योंकि हो सकता है आपको कुछ काम है, कोई लोग यहाँ पे एक बार मोबाइल पे चालू कर देते और जाके उधर कोई लेक्चर ले रहे या प्रिंसिपल सर के पास में मीटिंग कर रहे, या ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो है क्या, अभी देखे तो कितने लोग आ रहे। प्लीज ओपन अप योर कैमरा एंड माइक, नॉट माइक बट एटलीस्ट ओपन योर कैमरा, लेट मी सी यू ऑल ऑफ यू, इट्स वेरी फाइन। ओह, नॉर्मा, देन डॉक्टर कुमुद, वाह 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 वाह, अविनाश बिराजदार सर, गौतम सर, वाह, तुषार सर, कुंदन पाटिल सर, वाह। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अवॉइडिंग। और उनका एंगेजमेंट, अभी इसमें क्या आ रहा है, एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, मुझे भी आपको एंगेज रखना जरूरी है ना रेशमा मैडम, तो हमको उनको भी रखना जरूरी है। वैसे आप भी एज ए स्टूडेंट, अरे बाप रे, सिर्फ सामने के स्क्रीन पे है पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे तो 95 पार्टिसिपेंट्स है और हार्डली 15-20 ही कैमरे ओपन है। तो ये होता है बच्चों के साथ में भी, बच्चे भी ऐसे रहते। हम तो टीचर है, फिर भी बच्चों को सोचो, अपने बच्चों के ऊपर से सोचो, घर में क्या करते। कितने सारे लोग हैं जिन्होंने कैमरा ओपन ही नहीं किया, वो नहीं सर सी द चाहते। चैट बॉक्स, हाँ, सी द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, कैमरा एक्सेलेंट इज नॉट क्वेश्चन। वर्किंग, मेरा one participant is telling, कैमरा Uttara इज नॉट Joshi, वर्किंग, दैट इज, यस यस, दैट इज योर चैलेंज। I am वही also तो there, हमको my camera डिस्कस is करना not है। working, so this reason can the student can also give, so what to do? हाँ, वो तो मेरा स्टूडेंट, मेरा बच्चा बोलता है कि मेरे इसमें कैमरा नहीं है सर, वो माइक भी म्यूट रखता है और बोलता है मेरा बहुत पुराना लैपटॉप है जिसके अंदर कैमरा है, जस्ट कुछ वैसा ही है, कैमरा नहीं है। तो लेकिन हम इस तरह से बच्चों को एंगेज करने का, ये एक तरीका होगा, लेकिन हरदम ये नहीं कर सकते। एंगेज खुद अपने तरफ से कुछ अपने को करना पड़ेगा बच्चों के लिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, I एंगेजिंग। do have a suggestion, sir. यस सर, Like, बोलिए मैडम। yeah, I'm sorry to interrupt या you. नहीं मैडम, Like, उल्टा even I होना learned चाहिए। in one of the sessions, like, so I have made into practice now. Like, whenever I teach some topic in the class and there are some pointers, though they are visible on the screen, I insist everybody, okay, fine, all of you write down me the, the like, what is the source of so and so drug, even though it is written on there. I just insist them कि chat box में अभी के अभी answer लिखो. Then I say, okay, बराबर है। fine, I have received the answer from you. I have received the answer. Okay, why you have not written? So now more of them have become interested in the class now. तो वो ही करना पड़ेगा अपने को, अपने में ही ऐसा कुछ तो भी सुधार करना पड़ेगा। एंगेजमेंट रखने का ही आपको सबसे अभी प्रॉब्लम आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कीप द स्टूडेंट एंगेज। तो उसका किस तरीके से हम लोग एंगेज रख सकेंगे, सो दैट इज द चैलेंज टू अस। तो वही हम चैलेंज में डिस्कस करना चाहते हैं कि हाउ वी कैन एंगेज द स्टूडेंट्स। जस्ट वेट, कैमरे के साथ में अपना इधर का गया मेरा ये टेक्नोलॉजी है, तो उसके साथ में हम ही खुद को स्ट्रगल कर रहे हैं बहुत बार टेक्नोलॉजी के साथ। ये आ रहा है क्या, स्क्रीन आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. It is visible. अरे हाँ, स्क्रीन आ रहा है, Yes, sir. Visible. विजिबल। ये भी एक है कि आपको जागते रखने का, आपसे बात करो दैट इज अगेन वर्चुअल एंगेजमेंट्स। ओके, सो नेक्स्ट इज योर टाइम कमिटमेंट। तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि आपने को टाइम दिया जाता है कि ये टाइम पे अपने को लेने का है लेक्चर, और सडनली अपने को कुछ तो भी बीच में काम आ जाता है। फिर हम बच्चों को मैसेज कर देते व्हाट्सएप के ऊपर कि एक 15 मिनट के बाद मैं लूंगा, और या फिर हम लोग उनको बोल देते कि अभी तो आज का लेक्चर ऐसा करो, तुम वो मेरा वीडियो देख लो और मैं बाद में ले लूंगा। फिर बच्चों के दिल में क्या आ जाता है कि ये तो सिर्फ टाइम पास के लिए ऐसा ऑनलाइन टीचिंग चल रहा है। तो उनको एक जो उसमें का पोटेंशियल है, इट इज वेरी पोटेंशियल। देखो अब कहाँ से ना, अगर मैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम रहता, अगर कॉलेज में आके होता, तो हमको लिमिटेशंस रहते हैं कि आप 30 पार्टिसिपेंट्स लो या 40 पार्टिसिपेंट्स लो। आज 100 के ऊपर पार्टिसिपेंट्स हमारे यहाँ पे है, कहाँ पे बैठ के वो खुद देख रहे हैं। तो पोटेंशियल है, तो उसके लिए अपने को खुद को कुछ तो भी चेंजेस होने चाहिए जिसके अंदर हम लोग हो सके कि आप कमिटमेंट रखिए आपकी खुद की। ओके, सो दूसरा एक है
कि कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कम्युनिकेशंस में लैक आ जाता है। कम्युनिकेशंस का बेसिक मैं आपको बता देता हूँ कि अपने तरफ से नहीं रहता। बहुत बहुत बार क्या होता है कि हम लोग कुछ तो भी बोल रहे हैं और सडनली इंटरनेट का कुछ उसके अंदर लैप आ जाता है, और उसके कारण उसको वो वर्ड ही नहीं समझ में आता बच्चों को, और वहां से उसका कम्युनिकेशन टूट जाता सब्जेक्ट के लिए। तो उसका वहां से इंटरेस्ट लूज होना चालू जाता है, क्योंकि क्या होता है कि अपने को पूरी तरह से हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, तो दैट कॉजेज टू स्टूडेंट आल्सो। तो कम्युनिकेशन होना चाहिए there, either we can go verbal communication, बॉडी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर टीचर ही कैमरा बंद करके पढ़ाते रहे सिर्फ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ में, तो बॉडी लैंग्वेज समझेगा नहीं। क्लासरूम में बॉडी लैंग्वेज रहता है, वो बहुत सा प्ले करता है रोल। तो वो कम्युनिकेशंस वाला पार्ट है। जितने भी कम्युनिकेशंस के मीडियाज है, वी शुड हैव द कम्युनिकेशंस विद द स्टूडेंट्स आल्सो। देन असेसमेंट, तो अपने को, जैसे मैं स्टूडेंट के बारे में असेसमेंट बोला, वैसे अपने को अलग अलग, कल को एक लेक्चर गेमिंग वाला जो था असेसमेंट, वो वेरियस मोड्स आर देयर। एक तो जागते रखो लोगों को, और अलग अलग असेसमेंट के मोड देते जाओ, कुछ गेम्स खेलो उनके साथ में, ऑनलाइन एंगेजमेंट में ऐसा कुछ है, या फिर कुछ चार्ट में लिखने को बुलाओ, या फिर कुछ वो जो पोल्स आते हैं, पोल्स है, या फिर ऑनलाइन सॉफ्टवेयर रहता है कि जिसके अंदर हम लोग कुछ क्वेश्चंस पहले से डाल के रखते हैं, और बच्चों को जाके सडनली उसके अंदर आंसर्स लिखने रहते हैं बीच में जाके, दैट विल गिव द असेसमेंट ट्रिक। तो अलग अलग असेसमेंट अगर देते रहे आप लोग, तो बच्चों का भी इंटरेस्ट बना रहेगा, एंड दे विल कम फॉर द ऑनलाइन लर्निंग प्रोसेस। फीडबैक भी जरूरी है, कि उनको बोलो कि मैंने तुम्हारा ये लेक्चर देखा और उसमें मुझे ये फीडबैक में प्रॉब्लम लगा। Okay, so these are important things which needs to be understood. Just wait, एक ये जान लीजिए, एजेंडा वगैरह हो गया। So these are the various challenge which we are facing in the lecture. Now we'll shift towards the video lessons. तो अभी एक वीडियो लेसन्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। टाइम तो वैसा है अपने पास में। लेट मी चेक द वॉच, नहीं तो हम लोग बातों बातों में कभी कभी बहुत आगे निकल जाते हैं। ओके, 2:38 बराबर। चल, advantages of video lessons. So what are your thinking, what are the various advantages? Now I will open the chart in front of me and you write the advantages of video lecturing. वीडियो लेक्चर तो मैंने आपको बता दिया कि वीडियो लेक्चर्स क्या रहते हैं, तो अभी उसके एक बार आपकी तरफ से मुझे आप एडवांटेज बताइए कि व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस। प्लीज नोट डाउन दोज एडवांटेजेस इन द चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू। हेलो, my chat box is empty still. Revision can be done more time. Yes madam. नहीं, दुर्गेश गौतम। yes yes sir. और क्या हो सकता है? Let me see your views about this. Visual attention, yes, you can pause and replay, this is very important sir. Then audio visual learning, yes, video can be shown, it can be used by other colleagues, student also, concept get cleared, student can understand any early as possible, understanding of the student increases. In case of the technical issue, the student get better understanding, we can easily show any informative images, videos and all, can record, student can see as per the convenience. Yes, this is also important. Better understanding if hesitations to ask and reply बराबर चल रहा है. Attractive sessions on video learning can be done, clear concepts can be done, better understanding, more exploratory in case of the diagrammatic figures. Very correct, very correct. It can be shared on social media. सबसे पहले ये है कि अभी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं, हाँ, तो उसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में हमको बात करनी है अभी। तो ऑडियो विजुअल ऑलवेज अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स, वीडियो
possible. Okay, thank you very much. Everyone is now alert and saying something, so it indicates that you are not sleeping. Okay, so just I have summarized some of them. You are given many more things about the advantages. So one advantages I can say, it is available 24/7. जैसे हम लोग आपको ये ले रहे ऑनलाइन लेक्चर ले रहे, तो वो एक शेड्यूल रहता है कि 1 घंटे में, तो वो एक बार घंटा खत्म हो गया तो खत्म। बच्चों को अगर उसको फिर से देखने का है, तो अगर वो रिकॉर्डेड है तो ही कैन गो एंड सी इट। ओके, सो दैट इज रिकॉर्डिंग इन द वीडियोस। तो वो 24/7 द वीडियोस आर अवेलेबल टू द स्टूडेंट, और वो ही कैन सी दैट वीडियोस इन एनी प्लेस और एनी पेस। तो आज वो समझो कोई खेत में जाके कुछ फादर के साथ में कुछ काम कर रहा है और वहां पे टाइम है तो वहां पे देख सकता है, या ट्रैवलिंग है तो वहां पे देख सकता है। कहीं भी जगह पे जाए, दुनिया में कहीं भी जाए, तो उसको अपने हिसाब से, इंडिविजुअल पेस के हिसाब से वो वीडियो देखने का एक उसको एडवांटेजेस मिलता है। दूसरा है कि अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ स्टडी, उसको खुद को सेल्फ स्टडी, क्योंकि जैसे अभी किसी ने लिखा कि कुछ चीजें अगर ऑनलाइन लेक्चर में नहीं समझ में आती, तो वो रिपीट वीडियो देख के तो वो अपना सेल्फ स्टडी अच्छी तरह से कर सकता है। उसको जब तक समझ में नहीं आता तब तक उसको रिपीट करके वो वीडियो देख सकता है। बाद में डिस्टेंस लर्निंग, तो अभी तो हम लोग सब डिस्टेंस लर्निंग में ही आ गए थे। पहले तो सिर्फ इग्नो, यजदा, इतने थोड़े थोड़े ही थे इग्नो वाले कोर्सेज जिसके अंदर ऑनलाइन। अभी नेप्टल एक बाद में आ गया, तो जिसके अंदर हम लोग फिर स्वयं आ गया, नेप्टल आ गया, बहुत सारे अभी ऑनलाइन लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग वाले प्रोग्राम आ गए। तो जैसे अभी हमारा पूरा ही जो फैक्टर हो गया वो डिस्टेंस लर्निंग पे आ गया। ओके, सो पार्ट टाइम स्टूडेंट्स कैन इनिशियली कुछ पार्ट टाइम रहते थे नॉलेज इन्हांसमेंट के लिए, वो कोर्सेज सिर्फ ऑनलाइन रहते थे। अभी तो सारी कोर्सेज ऑनलाइन में आ गए। So it has more potential. It is having the more effective learning when you are doing the online teaching. Okay, so whatever graduates are coming out after this online teaching, definitely they will have the more knowledge with them. Practical, तो बाद में समझो हम how we can do the practical things, but they will be having more knowledge because they have more opportunity to search. सिर्फ एक ही देवकाते ही पढ़ाएगा ऐसा नहीं है, तो उसको बहुत सारे इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल है। ही कैन गो ऑन इंटरनेट, मैंने कुछ पढ़ा है तो उससे उसको कहीं गुना ज्यादा चीजें वहां पे मिल सकती है और उसका नॉलेज वो बढ़ा सकता है। सो दिस आर द एडवांटेजेस। अब एक शॉर्ट में हम लोग कर देते कि व्हाट आर द लिमिटेशंस। 2-4 लिख दीजिए भाई आपके चैट बॉक्स में। हाँ, ये भी एक अच्छा था, कवर मोर सिलेबस इन लिमिटेड टाइम। ये भी है, लेकिन बहुत बार ये उल्टा भी होता है अपने लिए। हम लोग को जब ये ऑनलाइन लेक्चर वगैरह हो जाता है तो उसके अंदर हम लोग हो सकता है कि हम लोग कहीं भी बहक जाते और फिर अपने को ट्रैक पे रखना मुश्किल हो जाता है, तो वो लिमिटेशन में भी आ सकता है। इट इज नॉट इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव नहीं बोल सकेंगे, इट इज वेरी इफेक्टिव। अपने को उसको इफेक्टिव बनाने का है, अपने को बच्चों का उसमें इंटरेस्ट बढ़ाने का है, ओके, एंगेजमेंट बढ़ाने का है। तो स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, यही दिस इज स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। 2 टाइप के रहते हैं, टीचर सेंटर लर्निंग एंड स्टूडेंट सेंटर लर्निंग। नाउ क्लासरूम फीलिंग नहीं है, नो फिजिकल interactions can be checking by the student, less interaction with student. Yes, it is very common, interactions with student is not possible, student cannot ask the question, बराबर है, लेकिन मैं तो पूछ रहा हूँ और आप भी दे रहे हैं उत्तर। मॉनिटरिंग इज डिफिकल्ट, टाइम, ये तो इसमें क्या करना पड़ता है, अपने को टेक्नोलॉजी ऐसी चाहिए। हम लोग इतने कम टेक्नोलॉजी के साथ काम करते हैं, एक मोबाइल पे हम खुद लेक्चर चालू कर देते, और अगर हम प्रेजेंटेशन देखेंगे, क्या उसका फीडबैक देखेंगे, तो क्या देखेंगे, अपने को ये मालूम ही नहीं रहता कि एट ए टाइम हाउ आई कैन गिव माय प्रेजेंटेशन, हाउ आई कैन रीड माय स्क्रिप्ट, हाउ आई कैन चेक योर चैट। ये सब अपनी तरफ से है, अपना अभी जैसे मिला वैसे हम करते जा रहे, तो उसको अपने को बदलने का है। तो थोड़े बहुत चीजें मैं बता दूंगा मेरे हिसाब से, लेकिन आपकी तरफ से भी मैं एक्सपेक्ट करूंगा और क्या कर सकते हैं। सम स्टूडेंट में फेस इंटरनेट नेटवर्क, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिफिकल्ट टू टीच केमिस्ट्री रिएक्शन मैकेनिज्म, तो उसको बहुत अच्छी तरह से अभी वीडियो भी आ गए सर, जिसके अंदर हम लोग ये पढ़ा सकते हैं। ओके, सो फ्यू लिमिटेशंस आई जस्ट लिस्टेड फॉर यू।
फर्स्ट इज यूर अगेन व्हाट यू आर सेइंग प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी यूज। तो बहुत सारे अगर पुराने अपने पास में कंप्यूटर्स है या अपने पास में मोबाइल्स है या फिर सिस्टम है तो डेफिनेटली दैट इज नॉट गोइंग टू वर्क। ओके, अगर अभी हमारी रोजी रोटी अगर ऑनलाइन पे आ गई टीचर्स लोगों की, तो अपने को खुद को अपडेट करना ही पड़ेगा, अच्छी से कंप्यूटर्स या लैपटॉप खरीदने ही पड़ेंगे। आज मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे पास ये जो लैपटॉप है उसका कैमरा देखो कितना कम रिजोल्यूशन वाला है। तो हो सकता है कि ऐसी चीजें हैं, फेक तो नहीं दे सकते, तो उसको एक एडिशनल कैमरा बिठा दो। तो टेक्नोलॉजी के साथ में अपने को उसको इन्हांस करने का है। वी हैव टू चेंज द थिंग्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो प्रॉब्लम इन टेक्नोलॉजी इट इज कॉमन। हाँ, अभी आप बोलेंगे पैसा कौन देगा, तुम तो बात कुछ भी कर लेते हो, तो दैट इज ऑल्सो द प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो द लिमिटेशन, कॉस्टली, बट स्टिल इट इज आवर अर्निंग, सो वी हैव टू सेम स्पेंड। वैसे बुक तो खरीदते थे ना हम लोग, जब पहले थे ऐसे, या ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं रहते थे तो हम लोग बुक खरीद लेते थे। अभी बुक खरीदना तो बंद ही हो गया, ऑनलाइन में मिल जाते सारे के सारे बुक्स। लाइब्रेरी में जाना बंद हो गया, बच्चे तो छोड़ो टीचर भी नहीं जाते आजकल तो लाइब्रेरी में। तो जब तक बुक पढ़ेंगे नहीं, जब तक अपने को थोरो नॉलेज नहीं आएगा, तो अब बच्चों के सामने जाके क्या बोलेंगे हम लोग। तो वो पैसा तो खर्च करना जरूरी है नॉलेज के लिए या फिर उसके लिए। बाद में दूसरा एक हम बोल सकते हैं कि लैक ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन, जो अभी बहुत लोगों ने बोला कि हमको क्या आदत रहती बच्चों के साथ में इंटरेक्ट होने की। वो हंसते अपनी तरफ देखते तो हम खुश हो जाते कि नहीं भाई इसका मेरे तरफ ध्यान है, चाहे वो ड्रामा भी कर ले कि अपने सामने हम तुम्हारी तरफ से देख रहे और अंदर चल रहा है, इधर घूमने को जाओ वो खाने को जाओ, फिर भी अपने को तो सेटिस्फेक्शन रहता है ना कि ये बच्चा इधर सामने बैठा है। लेकिन यहाँ पे नहीं रह सकता, यहाँ पे अपना लैक ऑफ इंटरनल इंटरेक्शंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो वो भी एक लिमिटेशंस में काउंट किया जा सकता है। हमारे को तो ऐसा रहता है कि 60 के स्टूडेंट या 100 का स्टूडेंट क्लास है, तो 1 घंटे में 10 बार हम लोग अंदर घूम के आते, हर एक के नोटबुक में झांक के आ जाते कि वो क्या लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तो यहाँ पे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते वो क्या कर रहा है। दैट इज द लिमिटेशंस वी कैन सी। तो ये तो हो गया एडवांटेजेस, लिमिटेशंस। तो अभी मैं जो दूसरा पार्ट कहना जा रहा हूँ, एक तो था कि चैलेंजेस, तो चैलेंजेस तो हमने कर लिए। तो अभी हम लोग अगर वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे, तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करते समय अपने को इतना ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रहता है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रहता है। यहाँ पे भी अगर समझो हम लोग ऑनलाइन लेक्चर ले रहे, तो एक बार चालू हो गया ना, जा रहा है ना आवाज, ध्यान दो आवाज तो जा रहा है, कुछ मैं उसको क्लियर करने को जाऊँ या कुछ उसको चेंजेस करने को जाऊँ, हो सकता है मेरा ये आवाज निकल जाए। बहुत लोग तो इतने पैनिक हो जाते, ऑनलाइन लेक्चर है 1 मिनट में नहीं चालू हो गया, ही बिकम पैनिक, अरे बच्चे क्या सोचे, अरे क्या सोचेंगे, टेक्नोलॉजी है, देयर में भी चांसेस दैट टेक्नोलॉजी फेल्स, देयर में भी द चांसेस दैट देयर में भी सम प्रॉब्लम्स। तो उतना सोच के घबराना नहीं है अपने को, अपने को टेक्नोलॉजी के बारे में इतना डिप्रेस नहीं होना है, उसको अपने को पॉजिटिवली लेने का है। ओके, सो हाउ टू मेक योर लेक्चर लुक प्रोफेशनल इफ यू आर मेकिंग सम वीडियोस। तो एक 4 बेसिक प्रिंसिपल्स के साथ में ये हम लोग कर सकते हैं कि फर्स्ट है वीडियो क्वालिटी, बाद में दूसरा है ऑडियो क्वालिटी, तीसरा है स्टूडियो, और चौथा है योर डिलीवरी। तो ये 4 बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस के ऊपर हम लोग प्रोफेशनल वीडियो, जरूरत नहीं है कोई बहुत सारा ट्रेनिंग लेने की, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी हम अगर ले लेते हैं तो अपने को वो वीडियो अच्छी तरह से हम लोग बना सकेंगे, हम लोग उसका क्वालिटी मेंटेन कर सकेंगे। तो एक एक बारे में बताऊंगा मैं आपको। सो फर्स्ट विल गो बाय द वीडियो क्वालिटी। वीडियो क्वालिटी में क्या रहता है कि बहुत बार ऐसा रहता है कि वीडियो रिकॉर्ड करते समय अपने को ये मालूम नहीं रहता है, अपने को ऐसा सामने मोबाइल रख के ही देखने की आदत रहती, तो वो हो जाता है पोर्ट्रेट मोड। पोर्ट्रेट मोड में बाजू से 2 लाइन आ जाती है ऐसे काले काले, तो वो डिस्ट्रैक्ट कर जाता है, बच्चों को एक फुल स्क्रीन देखने की जरूरत रहती, अपने को वो एस्पेक्ट रेशो और वो कुछ मालूम नहीं रहता है। ओके, 16:9 एस्पेक्ट रेशो क्या रहता है, कहाँ से आएगा अपने को वो एस्पेक्ट रेशो का नॉलेज। तो वो रहता है आपका वीडियो जो है, वीडियो चल रहा है तो वो पूरा स्क्रीन भर देना चाहिए, उसके आजू बाजू से कोई ये नहीं आने चाहिए, लाइंस, ब्लैक लाइंस रहते ना, वो नहीं रहना चाहिए। तो पोर्ट्रेट मोड में अगर वीडियो बना रहे तो पूरा वीडियो पोर्ट्रेट मोड में बना लो,
या फिर कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो आधे पोर्ट्रेट मोड में बनाते, फिर टेढ़ा करके लैंडस्केप मोड में बनाते, सो दैट डज नॉट गिव यू द गुड क्वालिटी वीडियोस। ओके, दूसरा रहता है वीडियो क्वालिटी। ओके, वीडियो क्वालिटी जैसा हम लोग बोलते हैं, मैं वेब कैम खरीदने को जाता हूँ तो बोलता है दे दो भाई एक आधा वेब कैम, और एक कैम लेके आते और घर में आके बच्चा बोलता है अरे ये क्या लाया पापा, कितना कम है रिजोल्यूशन इसका। क्या रिजोल्यूशन, मेरे को तो मालूम नहीं क्या रहता है रिजोल्यूशन, मैंने तो सस्ता देखा लेके आया, 720 या 480 ऐसा कुछ तो भी लेके आते, सस्ता में मिलता है करके। बाद में घर में आके बच्चा बोलता है कि देखो रिजोल्यूशन कैसा है, कितना गंदा दिख रहा है तुम्हारे यहाँ पे वीडियो। फिर हमको पता चलता कि नहीं भाई ये तो मुझे पहले देखना चाहिए था। तो वो HD क्वालिटी या 1080p, अभी जो थोड़े बहुत महंगे रहेंगे कोई कंपनी के वेबकैम, तो शायद हम लोग वो 1080p के मैंने वीडियो कैमरास लाए, वेबकैम्स लाए। अभी तो मोबाइल्स अपने आ रहे, बहुत ज्यादा उनके अंदर रिजोल्यूशन रहता है, HD क्या 4K तक रिजोल्यूशन है। तो रिजोल्यूशन क्यों जरूरी है कि अगर हम लोग कोई इनलार्ज करते हैं इस चीज को, तो वो इनलार्ज करते समय वो फट जाती है बहुत बार। ओके, उसके अंदर धुंधलापन आ जाता है, तो वो अवॉइड करने के लिए वी शुड हैव ए HD इमेज, हाई डेफिनेशन इमेज। तो हाई डेफिनेशन क्यों आगे आ गया, 4K नाउ। ओके, 4K में क्या रहता है कि एक एक्स एक्सिस पे 4000 पिक्सल्स रहते हैं, तो उसके कारण उसका क्लियरिटी बहुत ज्यादा रहता है। ओके, सो वी शुड हैव द प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द कैमरा। तो अगर नहीं कर पा रहे हम लोग लैपटॉप के कैमरे से, तो यू कैन गो बाय द मोबाइल कैमरा ऑल्सो। ओके, सो दैट विल हेल्प यू टू गिव द मोर रिजॉल्व वीडियो। और एक गलती हमारे से क्या होती है कि जो कैमरा रहता है तो उसके ऊपर हम लोग ध्यान ही नहीं देते कि उसको क्या डर्ट लगी हुई है, उसके ऊपर क्या फिंगरप्रिंट्स लगे। मोबाइल का तो बहुत बार हो जाता है कि मोबाइल जब हम जेब में रखते हैं तो उसके ऊपर कुछ जूटन लग जाता है, या फिर आपने फिंगरप्रिंट्स रहते हैं। तो जब भी हम लोग उसमें फोटो या वीडियो स्कैन करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बी अ डर्टी वीडियो, इट विल नॉट लुक क्लियर। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक छोटा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब हम लोग मोबाइल लेते तो हम लोग उसको खेलते नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ में दे दो, वो सारी चीजें 2 मिनट में देख लेते कि इसका कैमरा कितना इसका है, GB का है, या इसका स्पेस कितना है, इसमें कौन से ऐप आ सकते हैं, कौन से नहीं आ सकते। हम लोग देखते ही नहीं, अपने को मालूम ही नहीं रहता है। कोई कैमरा ले रहे तो उसके लिए हम लोग उसके क्या क्या ये है, उसमें वीडियो जब रिकॉर्डिंग कर रहे तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है वो देखते नहीं, डिफॉल्ट ऑप्शन के ऊपर चलते रहते हम लोग। तो एक ही ऐसे मैंने कैमरा का ढूंढा जिसके अंदर मुझे दिखा कि वी कैन रिकॉर्ड द वीडियो विद 720p HD एट 30 fps, और एक है 180p HD 25 fps। तो कौन सा, जनरली 130 MB विथ 1080p, हाँ 1080 HD एट 30 fps डिफॉल्ट बोल के रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये होने से क्या होने वाला है, तो अगर अपना वीडियो लेंथ कम है, okay, if you want to record the video for short duration, then you can use the high quality। okay, अगर अपने को वीडियो लेंथ बहुत लंबा है तो ऐसे वक्त में हम हाई क्वालिटी वाला अगर करेंगे तो हेवी फाइल हो जाएंगे, that file will not be able to uploaded in WhatsApp और some Facebook, और कैसे भी हम लोग जो YouTube में अपलोड करना चाहते हैं। तो पहले थोड़ा सा नॉलेज हो जाना चाहिए कि व्हाट इज द बेसिक थिंग विच यू शुड नो अबाउट योर कैमरा। 4K का है तो वो तो पाल सिस्टम रहता है, या पाल सिस्टम जनरली अमेरिका में या बाहर के देशों में अलग अलग टाइप के वीडियो सिस्टम्स रहते हैं। तो अपने पास में पाल सिस्टम चल रहा है तो वो है या नहीं अपने कैमरे के साथ में, दैट इंफॉर्मेशन वी शुड हैव। सो वी शुड प्ले विद द डिवाइसेस। सबसे बच्चों की इंपॉर्टेंट चीज क्या रहती है, वो डरते नहीं कुछ करने के लिए, और हम हाथ लगाने को डरते कि अरे भाई कुछ खराब हो जाएगा। कुछ नहीं खराब होता है, लोग उसको रिपेयर करने वाले। फर्स्ट यू ट्राई टू प्ले इट। ओके, सो वीडियो क्वालिटी में और एक रहता है कि ब्लैक बार्स, जो मैंने अभी बोला कि पोर्ट्रेट मोड में रहता है, या फिर तुम्हारा लैंडस्केप मोड में। तो अगर अपना 16:9 का एस्पेक्ट रेशियो ले लिया, ओके 16:9, तो आपका ये जो स्क्रीन रहेगा इसके अंदर ऐसे बार्स नहीं आएंगे, यू कैन नॉट सी, यू विल नॉट सी सच बार्स। अगर ऐसा बार्स भी अगर दिखते तो आपको यहाँ से ड्रैग करके पूरा वीडियो पूरे स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर सकते। ओके, जब भी हम लोग वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो उसको स्क्रीन भर के रिकॉर्ड करने का है।
No black bars around the videos should be there. Okay. Shaky videos. तो अभी बहुत बार वीडियोस रिकॉर्ड करते समय अपने पास में हम लोग वो कोई बॉटल है या कोई ऐसी चीज रखी है, बुक्स वगैरह, तो उसके साथ में कैमरा रख देते और अपना एडजस्ट करके कैसे तो भी वीडियो रिकॉर्ड करना चालू कर देते। तो उसके कारण क्या हो जाता है, कभी कैमरा हिलता डुलता है, या फिर अगर उसको अच्छी तरह से हमने माउंट नहीं किया है वीडियो को, या हाथ में लेके हम लोग ऐसा वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इट विल कॉजेज द शेकी वीडियो। एंड दिस शेकी वीडियो इट डिस्ट्रैक्ट द स्टूडेंट्स। उसको डिस्ट्रैक्शन होने, उनका एक अपने वीडियो की तरफ उनका अट्रैक्शन कम हो जाता है उसके कारण, या फिर उसको इमेज अच्छी नहीं दिखेंगे। जैसे कोई मोटरसाइकिल वाला अगर हम लोग वीडियो ये कर रहे, शूट कर रहे, और कोई उसमें अलग सा मोड हम लोग लेते नहीं है, तो हो सकता है कि वो अपने को ऐसा उसका घोस्ट इमेजेस मिलेंगे। ओके, तो उतना अपने को मालूम होना चाहिए कि उसका कैसा इमेजेस अपने को मिल रहा है। तो बहुत लोगों को ये मालूम नहीं रहता है कि मेरा फेस कहाँ पे रहेंगे। ये जो फ्रेम रहता है, अभी 1 मिनट में मैं जरा ये पॉज स्टॉप कर देता हूँ मेरा प्रेजेंटेशन, एंड नाउ यू कैन सी माय फेस ऑन होल कैमरा। ओके, तो कहाँ पे हो सकता है मेरा फेस। ओके, बहुत बार अपने को मालूम नहीं रहता कि मेरा फेस कहाँ पे होता है। बहुत वीडियो रिकॉर्ड करते समय हम लोग क्या करते हैं, कैसे एक साइड में अगर वीडियो रखना है और अपने को कुछ चीजें यहाँ पे दिखाने की है, okay, यहाँ पे space we have, if you want to utilize, okay, then you can set your face on one end, okay, otherwise ऐसा कुछ बताने का बहुत लोग रहते हैं ना वीडियो में, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इधर करते हैं तो ऑटोमेटिक चीजें आ जाती। ऐसा अगर कुछ अपने को एडिटिंग वाला करने का है तब आप उसको एक साइड में ले सकते हैं। अदरवाइज अपना जो ये स्क्रीन रहता है, वो स्क्रीन के अंदर एक फ्रेम बना के हमारा कहाँ से होना चाहिए, ऊपर से जो स्पेस है। ओके, सो वो एक फिक्स स्पेस चाहिए। बहुत बार क्या रहता है कि हम लोग एकदम नीचे बैठे रहते हैं, ऐसा सिर्फ थोड़ा सा दिखता है अपना ऐसा, तो अपना जो चेयर रहता है या अपना जो सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, तो वी हैव टू चेंज दैट सिटिंग अरेंजमेंट टू गेट द एग्जैक्ट सेंटर ऑफ योर स्क्रीन। ओके, ऊपर से कितना स्पेस है, तो वो अपना जो अगर हम लोग ये आई लेवल है उसको हम लोग जूम भी करते हैं, तो अपने को वो आई लेवल वहां पे ही दिखना चाहिए। ओके, सो दैट इज माय फेस इज इन द सेंटर, ये एक रखना चाहिए आपको। जस्ट आई विल शेयर माय स्क्रीन अगेन। ओके, यू कैन सी। हाँ, यही मैं आपको बताता था, द कैमरा लेंस इज एट द सेम लेवल ऑफ योर आई। तो हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, देखो ये ऐसा कि हम लोग कैमरा लेवल बहुत अलग रहता है, ऊपर से देखते हैं या नीचे से देखते हैं। अगर हम लोग ऐसे तिरछा मोबाइल देख के उसका रख के उसके अंदर हम देख रहे हैं, तो डेफिनेटली द आई लेवल विल नॉट बी और योर फेस विल नॉट बी अपेयरिंग इन द सेंटर ऑफ योर स्क्रीन। तो वीडियो रिकॉर्ड करते समय भी ये सब देखना चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन में सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करते समय ही नहीं, ऑनलाइन में ये हमको रखना चाहिए। बहुत बार ऐसा रहता है कि हम लोग वीडियो लेक्चर ले रहे हैं या फिर ऑनलाइन लेक्चर ले रहे हैं, और अपना कैमरा ऐसा रहता है कि पीछे से ऊपर का सीलिंग फैन दिख रहा है या टीन दिख रहा है, ओके, या फिर कोई ऊपर कुछ लटका है तो वो दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, सो फेस इज इवनली लिट एंड कैन बी सीन क्लियरली ऑन योर वीडियोज। माई फेस इज ऑलवेज इन फोकस। बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे पीछे जाते हैं या साइड जाते हैं, जो स्टैंड के ऊपर बोर्ड रख के पढ़ाते हैं ना, तो उनके लिए। ओके, सो योर वीडियो शुड बी और योर कैमरा शुड बी एडजस्टेड इन सच ए वे दैट इफ इवन इफ यू मूव इट विल नॉट लूज द फोकस। नहीं तो वो क्या कर देगा कि मैं इधर से हट गया तो सिर्फ पीछे वाला मेरा बैक वाला उसको ही फोकस करे रखेंगे। ओके, सो मेनी फैसिलिटीज आर अवेलेबल इन मॉडर्न कैमराज। फोकसिंग फैसिलिटी, ऐसा एक येलो कलर का आपको ये मिलेगा, फ्रेम मिलेगा। ओके, उसको डबल क्लिक कर देते हैं हम लोग कैमरा के साथ में, तो ऐसा चौकोनी चौकोन आने चालू हो जाते, तो अपने को डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाता है कि आजू बाजू में चीजें कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही। या फिर बीच में अगर हम लोग ये कर देते तो बीच में फोकस रहेगा। ओके, जब आप इधर उधर हिल के अगर कोई पढ़ा रहे बोर्ड के सामने, तो अपने को फोकस होना जरूरी है। अच्छी तरह से वो फोकस रहा तो ही अपने को उसको अट्रैक्टिव वीडियो बना पाएंगे। दूसरा रहता है लाइट अरेंजमेंट। बहुत बार ऐसा रहता है कि लाइट अरेंजमेंट अच्छा नहीं रहता है। हमारे पास में देखो, अभी इधर एक मैंने आपको बताया एक वीडियो, एक फोटो जिसके अंदर गलत तरीके से लाइट अरेंजमेंट किया, बहुत सारा रिफ्लेक्शन उसके अंदर आ गया, और जो आदमी बात कर रहा है उसका चेहरा ही नहीं दिख रहा है। ओके, सो दैट इज फॉल्टी लाइट अरेंजमेंट।
उसमें क्या हो सकता है कि अब हम जहाँ पे बैठ के लेक्चर ले रहे हैं उसके पीछे अगर विंडो है, okay, if there is a window behind you, definitely it will not give you the clear focus on your face. तो आप बदल दो अपने आप को, विंडो की तरफ आप फेसिंग कर लो और अपने चेहरे के ऊपर प्रकाश आना चाहिए, पीछे से नहीं। ओके, सो लाइट एडजस्टमेंट इज देयर। बहुत सारे कैमरास के अंदर ये लाइट एडजस्टमेंट दिया है। तो डे लाइट में अगर फोकस कर रहे हैं या फिर आप लोग टंगस्टन फिलामेंट लैंप्स या कुछ लैंप लगा के आप लेक्चर ले रहे हैं, तो उसके सब एडजस्टमेंट उसके अंदर व्हाइट लाइट एडजस्टमेंट बोल के एक टैब रहेगा जिसके अंदर रहता है। नहीं तो क्या हो जाता है कि कभी कभी इधर से पूरा डार्कनेस आ जाता और अपना फेस ही नहीं दिख रहा है और हम लोग ले रहे लेक्चर, तो ऐसे वक्त में बच्चों का भी मूड नहीं लगता है कि क्या बता रहे हैं सर, कुछ पता नहीं चल रहा है। ओके, उसके आई टू आई कांटेक्ट, उसको कम से कम उसके आंख नहीं दिख रहे हैं, मुझे तो मेरे तो आंख में देख सकता है, तो आई टू आई कांटेक्ट हम लूज कर सकते हैं। या फिर लाइट अगर कम ज्यादा है तो हो सकता है कि ये ब्लू हो जाएगा आपका स्क्रीन जो है, कभी रेड दिखने लगता है, कभी ब्लू दिखने लगता है, फोटोज में जैसा रहता है ना, तो वो है अनप्रॉपर लाइट अरेंजमेंट। सिंपल चीजें हैं, स्टूडियो में मैं बताऊंगा ही वो चीजें। तो लाइट अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी वीडियो क्वालिटीज देखते हैं। दूसरा अगला पॉइंट है आपका ऑडियो क्वालिटी। व्हाट आर द वेरियस टेक्निक्स टू मेंटेन द गुड ऑडियो। आप तो अभी देख रहे होंगे कि मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही। ओके, क्या चीज है कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो आवाज क्लियरली आ रही, तो वही हमें यहाँ देखना है। ऑडियो क्वालिटी में आई कैन हियर माई वॉइस लाउड एंड क्लियर, एक मॉनिटर चीज रहती है। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो सचमुच सुनने को आ रहा है या नहीं बच्चों को, तो उसके लिए एक मॉनिटर रख सकते हैं। यहाँ पे एक मॉनिटर मैंने एक छोटा सा मेरा खुद का मोबाइल यहाँ पे म्यूट करके या फिर उसका आवाज कम करके बाजू में रखा हुआ है, तो मुझे घड़ी घड़ी दिख रहा है कि स्क्रीन में जो कैसा चल रहा है, मेरा आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक मॉनिटर रहना चाहिए। ओके, सो वी शुड हैव ए प्रॉपर हेडफोन सिस्टम टू hear the loudness and clearness of your sound. So you can have the dedicated mics. बहुत बार हम लोग गलती क्या कर देते कि अपना वीडियो रिकॉर्ड करते समय वो स्टैंड पे हम लोग माइक लगा के रखते हैं और माइक स्टैंड पे अपना कैमरा लगा के रखते हैं, मोबाइल ओके बहुत दूर रहता है, और इधर बोर्ड के ऊपर हम पढ़ाना चालू कर देते, इतना उसका कैप्चर नहीं कर पाते। ओके, मोबाइल कैन नॉट कैप्चर फुल साउंड और उसके अंदर साउंड क्वालिटी बहुत कम हो जाती। तो उसके लिए क्या कर सकेंगे हम लोग, तो अभी बहुत सारे ऐसे वायरलेस माइक आ रहे, कॉलर माइक जैसे। ओके, वी कैन हैंग दैट कॉलर माइक, ज्यादा उसका एक्सपेंसेस नहीं है, आहू जाके वगैरह कोई भी अच्छे कंपनी के मिल जाते हैं, आपको नेट पे मिल जाएगा, तो वो माइक ले सकते हैं कॉर्डलेस में। या फिर कुछ ऐसे माइक आते हैं कि जिसके अंदर लंबी वायर है। ओके, वी कैन कनेक्ट दैट माइक एज अ कॉलर माइक हियर एंड कनेक्ट दैट वन वायर टू योर मोबाइल, तो मोबाइल में जो भी साउंड जाएगा तो वो अच्छी तरह से जाएगा। या फिर अभी हम लोग जैसे ये कंडेंसर माइक ले लिए, तो कंडेंसर माइक जो रहता है वेरी स्पेशल क्वालिटी माइक्स आर अवेलेबल, थोड़ा सा कॉस्टली है, 3,500-4,000 का हमने खरीदे खुद के लिए, तो क्योंकि अपने को अपना वॉइस क्वालिटी भी रिकॉर्ड करना जरूरी है। शायद आपको ये दिख रहा नहीं होगा बैकग्राउंड के कारण। सो दिस इज माई कंडेंसर माइक। ओके, ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड के कारण आ रहा है, मैं आपको बैकग्राउंड में बताऊंगा। Okay, so various type of the condenser mics are available that we can use like this. So it will give the good quality of your audio. So audio level should be between 0 and -6 dB. एक dB यानी कि क्या रहता है, वो उसका यूनिट रहता है ऑडियो लेवल डेसिबल्स। ओके, तो क्या हो कैसा रहता है, तो बहुत बार ऐसा आपने सिटिंग जब करते हैं तो ऐसा विंडोज देखे होंगे, तो जिसके अंदर वो कुछ मूविंग रहता है, तो वॉइस लेवल का रहता है, एक अपना माइक का एडजस्टमेंट रहता है, तो वो माइक के एक लेवल तक अपने को एडजस्ट करना चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या हो जाता है, माइक अगर हम लोग बहुत हाई रख देते, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बूस्ट माय माइक एक ऑप्शन रहता है। कहाँ पे रहता है ये, आप अगर आपके स्क्रीन के ऊपर देखेंगे लैपटॉप के, तो साइड राइट साइड में नीचे एक माइक का ऐसा स्पीकर का ये रहता है इकॉन, उसको अगर डबल क्लिक कर देंगे तो प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, वो प्रॉपर्टीज के अंदर माइक प्रॉपर्टीज रहेंगे, तो उसके अंदर आपको माइक वॉल्यूम लेवल, you can measure this mic volume level such by using such type of the measuring
और उसके अंदर दिखेगा, हम तो खुद नहीं मेजर कर रहे, ऑटोमेटिक अंदर से मेजर हो के आ रहा है, लेकिन अपना लेवल कितना है, इट शुड नॉट बी लेस देन जीरो। लेस देन जीरो रहा तो सुनने कोई नहीं आएगा, मोर देन 6 रहा तो फट जाएगा, -6 के ऊपर अगर आवाज जा रहा है तो ऐसा फट जाएगा आपका आवाज। ओके, सो ऑडियो लेवल शुड बी बिटवीन 0 to -6। उसके अलावा ऑडियो लेवल आपको माइक के साथ में सेटअप करना पड़ेगा। बहुत लोग क्या कर देते, मोबाइल फोन नहीं है, फिर लैपटॉप का जो माइक रहता है उसके साथ में रिकॉर्डिंग कर लेते, तो उसका इतना अच्छा क्वालिटी नहीं रहता है। उसको अगर आप लोग कोई हेडफोन लगा के अगर रिकॉर्डिंग करते हैं तो यू विल गेट द गुड क्वालिटी ऑफ योर वॉइस। ओके, सो ऑडियो लेवल शुड बी मॉनिटर्ड। नो बैकग्राउंड नॉइस, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि वी आर इन द होम एंड डेफिनेटली अराउंड अस मेनी थिंग्स आर हैपनिंग, जैसे कोई कुकिंग चल रहा है अंदर किचन में, या फिर बच्चे खेल रहे हैं, अनॉइड साउंड्स आर देयर, या फिर हो सकता है कि आपके ऊपर का पंखा पुराना है जो खड़खड़ खड़खड़ करके क्या आवाज कर रहा है, या एसी में कुछ आवाज आ रहा है, तो वो सारे आवाज नॉइस बोल के आपके वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएंगे एंड यू विल नॉट गेट द गुड क्वालिटी वीडियो। ओके, सो या फिर बार्किंग है, कुछ लोगों के घर में पेट्स रहते हैं, तो पेट्स उनको तो हम लोग बोल नहीं सकते चुपचाप बैठो रहे, बच्चों को तो कैसे भी डांट डूट के हम लोग बिठा देंगे, लेकिन पेट्स को क्या बोलेंगे, उनको थोड़ी बोल सकते कि मेरा लेक्चर चल रहा है आप खामोश बैठो करके, हो सकता है किसी के पेट वो भी सुन ले तो हो सकता है वो दैट इज बार्किंग नॉइस और दैट इज योर डिस्ट्रैक्टिंग नॉइस। तो हाउ वी कैन अवॉइड दोज नाइक, तो ये जो अलग से हम लोग माइक ये ले लेते हैं माइक, तो उसमें सेटिंग रहता है, एक पर्टिकुलर जोन तक का ही नॉइस वो अंदर ले रहा है, उसके बाहर आने वाला जो नॉइज है तो वो अभी यहाँ पे मैं टिक टिक भी कर लूँ तो वो माइक इसके अंदर माइक में नहीं आएगा वो साउंड, तो उसको एक जोन बना दिया, इतना ही जोन में आपको साउंड जो आएगा वो लेने का है, तो उसके कारण जो नॉइस लेवल आ रहा है तो वो हम कम कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी है इसके लिए जिसके अंदर नॉइस लेवल कम कर सकते हैं, लेकिन वही हो जाता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करो, अपना वीडियो उसके अंदर डालो, फिर उधर कुछ तो भी करो, अपने को इतना डिटेल्स मालूम नहीं रहता है, इतना सॉफ्टवेयर वी आर नॉट acquainted with all the softwares which are using for the editing purpose. Okay, so no background noise should be there. Then audio and video are synchronized. बहुत बार क्या हो सकता है जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो ऑडियो अलग सा रिकॉर्ड कर लेते और वीडियो अलग सा रिकॉर्ड कर लेते। ऐसे वक्त में कभी कभी अपने इसमें हो जाता था ना पुराने पिक्चर्स में कि पहले लिप मूवमेंट हो रही और पीछे से आवाज आ रही, तो हो सकता है कि अपने वीडियो में भी ऐसा हो जाएगा, पहले फिर बाद में आवाज। तो इसलिए अवॉइड करने के लिए हमको क्या करना है कि वी शुड हैव ए कॉमन ट्रिक, अगर ऐसा क्लिप कर लेते हैं हम लोग, ओके, तो क्लिप साउंड में भी रिकॉर्ड हो रही और क्लिप वीडियो में भी रिकॉर्ड हो रही, और हम लोग उसको जब मैच करते हैं एडिटिंग में तो वी कैन अवॉइड सच मिसमैच, तो सिंक्रोनाइजेशन जरूरी रहता है, तो वो वीडियो ऑडियो सिंक्रोनाइजेशन शुड बी देयर। ओके, सो दैट इज ऑडियो क्वालिटी में। बाद में आती है स्टूडियो की बात, तो अभी एक नई जो पॉलिसी आ रही जिसके अंदर आपने देखा, तो इसके अंदर 30 to 40% सिलेबस विल बी ऑनलाइन। एवरीवन हैज टू यूज दिस ऑनलाइन फैसिलिटी, इवन पैंडेमिक चला भी जाएगा तो अपने को कुछ लेक्चर्स ऑनलाइन लेने ही है। ऐसे वक्त में हो सकता है कि वी हैव टू बिल्ड द स्टूडियो, अगर अपने कॉलेज में ऐसी फैसिलिटी अगर बन जाती है, ओके, कॉलेज में एक छोटा सा रूम स्टूडियो बोल के वी कैन डेवलप, ओके, जिसके अंदर छोटी छोटी चीजें हम लोग मैनेजमेंट के साथ में बात करके भी अगर बना लेंगे तो हो सकता है कि अपने को गुड क्वालिटी वीडियो वी कैन प्रोड्यूस इन द कॉलेज इटसेल्फ ओनली। ओके, उसके बाद में एक अपने को मिनिमम रिक्वायरमेंट हो जाएगा, जैसे ये लैबोरेटरी दिखा रहे, वो लैबोरेटरी दिखा रहे, तो हो सकता है कल जाके पीसीआई बोलेगा कि यू शुड हैव द स्टूडियो फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द वीडियो, तो वो एक सिंपल हम लोग स्टूडियो बना सकते हैं कि क्या क्या होना चाहिए स्टूडियो में। एक स्टूडियो की चीज मैंने यहाँ पे बताई, एक छोटा सा आप फोटो देख रहे होंगे जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कुछ लाइटिंग्स है, सामने से 2 लाइट लगे, पीछे से 1 लाइट लगा हुआ है, एक कैमरा है जिसको स्टर्डी स्टैंड के ऊपर, ओके, जो कैमरा हम भी इस्तेमाल करेंगे उसको स्टर्डी स्टैंड होना चाहिए, ट्राइपॉइड बोलते, ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइपॉइड्स आर अवेलेबल, वी कैन कीप दैट ट्राइपॉइड ऑन द टेबल ऑल्सो and which can give you the camera level at the eye, or you can keep the camera on the ground floor also, and we can adjust the height up to 6 feet.
वो स्टर्डी होना चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि कुछ इधर इधर आप हिले और उधर कैमरा गिर जाए। ओके, सो इट शुड बी ए स्टडी, क्योंकि उसके कैमरा के वेट से भी ऐसा हो सकता है कि वो स्टैंड लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे। ओके, सो यू शुड हैव ए स्टडी कैमरा बेस टू होल्ड द कैमरा। देन इफ यू आर सिटिंग ऑन सर्टन टेबल्स, टेबल के ऊपर बैठ के अगर कैमरा हम लोग शूट कर रहे हैं, तो वी शुड हैव द टेबल ऑफ अप्रोप्रिएट साइज। ओके, जिसके अंदर लेवल ऑफ योर लैपटॉप शुड बी टूवर्ड्स योर आई, आई का क्या और कैमरा का लेवल एक होना चाहिए। अगर वो ऊपर नीचे है तो अपने को गलत इमेज मिलेगा। ओके, उसके बाद में माइक सिस्टम रखने के लिए भी एक सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे स्टर्डी होल्ड किया हुआ माइक, नहीं तो माइक थोड़ा सा हिलता रहे ऐसा इधर उधर तो हो सकता है कि क्वालिटी नहीं आ जाएगी। उसके बाद में बैकग्राउंड, ओके, बैकग्राउंड है या फिर इकोस्टिक सिस्टम है, तो आगे मैं बात ही करूंगा उसके ऊपर। तो वो सब चीजें स्टूडियो के साथ में होनी चाहिए। तो आप बोलेंगे कि अभी ये सब थोड़ी मैं घर में खरीदते बैठूंगा, इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास में, आओ जाओ तुम बोल रहे ये खरीदो वो खरीदो, तो क्या कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे? हो सकता है अपने वी कैन कन्वर्ट आवर रूम, स्टडी रूम या अपना जो कुछ एरिया है घर का छोटा सा टेबल इनटू द स्टूडियो। हाउ वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द स्टूडियो? सो वी कैन मेक सर्टन अरेंजमेंट्स। ओके, जैसे यहाँ पे 3-4 अरेंजमेंट मैंने दिखाया कि एक स्टडी स्टैंड चाहिए, एक अपने को साउंड प्रूफ एरिया चाहिए। साउंड प्रूफिंग के लिए क्या कर सकते हैं? ओके, सिंपल वे टू मेक योर रूम साउंड प्रूफ। वैसे तो हम घर में अगर बैठ रहे हैं तो बहुत सारा सामान अपने आजू बाजू में रहता है, यहाँ पे इको आने वाला है ही नहीं। अगर कोई खाली रूम में अगर हम बैठ रहे हैं तो हो सकता है कि वहां पे इको आ जाए। ओके, तो वहां पे अपने को क्या करना है, अगर इफ यू आर हैविंग ए स्मॉल एरिया एंड इफ यू वांट टू अवॉइड द इको, सबसे पहले इको आता है आपके बैकग्राउंड से। जो माइक रखा है ना उसके पीछे अगर ऐसा कोई स्टर्डी एरिया है तो माइक के वेव्स उसके ऊपर गिर के फिर से पीछे जा रहे। ओके, सो दैट कॉजेस इको एंड टू अवॉइड दैट वी कैन हैंग सर्टन क्लॉथ्स। ओके, एक ऐसा कोई भी ये पैड ऐसे लगा दिए दीवार के ऊपर या कोई भी क्लॉथ पीछे के साइड पे लगा दिया, तो हो सकता है कि इट विल अवॉइड द शॉक ऑफ वेव्स एंड दैट विल नॉट गिव यू द इको। दूसरा एक इको आता है आपके ग्राउंड्स के ऊपर। ओके, अगर आप ग्लेस टाइल्स है तो उसके ऊपर साउंड का वेव्स अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है दैट मे कॉजेस इको। तो सिंपल वे, पुट कारपेट, जहाँ पे आपका टेबल है जहाँ पे आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो उसके नीचे चटाई बिछा दो, अच्छी तरह से कारपेट डाल दो। तो वो अगर कारपेट डालते फिर भी अपने को इको अवॉइड हो सकता है। बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं, लेकिन कर सकते हैं हम लोग। दूसरी है बैकग्राउंड की। तो बहुत बार ऐसा होता है कि अगर बैकग्राउंड नहीं है तो क्या हो सकता है। देखो अभी इधर मैंने एक ऐसे जनरल रूम का बैकग्राउंड दिखाया, तो जिसके अंदर कपड़े लटके हुए, पैजामे लटके हुए पीछे के साइड पे, या फिर कुछ शूज रखे हुए, तो बच्चे यही देखते रहते। बच्चे आप क्या पढ़ा रहे वो नहीं देख रहे, बच्चे पीछे से देख रहे, आपकी तरफ भी नहीं देख रहे, वो पीछे क्या रखा है, अरे इनका बच्चा तो आदिदास के शूज पहनता है, नाइकी के शूज पहनता है, क्या पैसा खर्चा करता है, देखो देखो कहते अपने बच्चों के ऊपर। ये बच्चों का दिमाग चलता है, बच्चे ये नहीं देखते कि वो क्या पढ़ा रहा है। ओके, तो वो सब अवॉइड करने का, वी हैव टू अवॉइड। अगर कुछ बैकग्राउंड रखना ही है आपको तो आप अच्छी तरह से बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो वी कैन गो फॉर द वर्चुअल बैकग्राउंड। नाउ यू कैन सी द वर्चुअल बैकग्राउंड इज इन बैक ऑफ मी। मेरे पीछे भी मेरे घर में बच्चे बैठे हुए हैं, मेरे पीछे के बाजू में भी इधर उधर सब सामान पड़ा हुआ है, नहीं कर सकता है मैं अवॉइड उसको, तो आई कैन हैव ए बैकग्राउंड। ओके, वैसे हमारे नवले सर ने भी देखो एक, हमने वो नवले सर ने बनाया ये बैकग्राउंड कि जो भी हम लोग ये लेंगे STTP तो एक कॉमन बैकग्राउंड रखेंगे। जैसे आप लोग वो क्रिकेट के जब ये चलते रहते ना डिस्कशन, उसके पीछे भी देखते हैं IPL का बैकग्राउंड, तो हमने भी एक स्टाइल से नवले सर ने बनाया ये बैकग्राउंड, तो उसका इस्तेमाल करके वी कैन हाइड द थिंग्स विच इज बैक टू यू। तो उसके अंदर से डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा, बच्चों का डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। वी कैन हैव द वर्चुअल बैकग्राउंड। कहाँ से लगाने का है वो वर्चुअल बैकग्राउंड? तो जूम में ही सेटिंग रहती है, कैमरा के साथ में वो सेटिंग रहती है। जहाँ पे आप स्टॉप कैमरा कर रहे हैं ना, तो उसके बाजू में एक इकॉन रहता है छोटा सा ऐसा, तो उसको क्लिक कर दो तो वहां पे वो बोलेगा व्हाट बैकग्राउंड यू वांट टू यूज। यू कैन ट्राई दिस, अपना खुद का बैकग्राउंड बदल के देखो, करके देख रहे हैं क्या? चलो थोड़ा सा फिर से आपको जगह देते। सो ओपन अप योर कैमरा, यू ट्राई टू चेंज द बैकग्राउंड। कोई भी फुल वुल का बैकग्राउंड निकाल लो आपके पीछे से,
मिला कहाँ से आपको? आप जहां से वीडियो बंद करके चालू करते थे ना, उसके बाजू में एक ऐसा त्रिकोण है, तो उसको आप दबाओ। क्या दिखा आपको? दिख रहा है जूम में? चूज वर्चुअल बैकग्राउंड। हाँ देखो सर ने कर लिया। तुषार सर वेरी गुड, यू आर डन। दिस इज माय ओरिजिनल पिक्चर सर। अच्छा, आपने खुद पहले से करके रखा हुआ है? मैंने निकाल दिया बैकग्राउंड, दिस इज माय अच्छा देखो, ओरिजिनल हाँ ओरिजिनल। नवले सर ने किया। नहीं मेरे यहाँ बहुत पे अच्छा है फिर वर्चुअल भी सर। बैकग्राउंड्स में है ही नहीं कहीं कुछ भी। हाँ हो नहीं है ना तो बराबर है मैडम। अगर वहां पे कुछ नहीं है तो आपको कोई भी फोटो वहां पे ऐड बैकग्राउंड बोल के आता है। ऐड बैकग्राउंड, तो ऐड बैकग्राउंड पे गए ना हम लोग, तो कोई भी एक फोटो हम डाल सकते हैं उसके अंदर। अपने रूम में का कोई भी फोटो हम वहां पे डाल सकते हैं। ओके, सो इट इज अ सिंपल ट्रिक बाय विच वी कैन रिकॉर्ड और वी कैन गो लाइव। लाइव में भी अगर जाते हैं हम लोग तो वी कैन चेंज द बैकग्राउंड्स। ओके, दिखा आपको? नहीं ना सर, दिखाई नहीं अभी तक। क्या राइट साइड में प्लस प्लस मार्क है मैडम, एक प्लस मार्क सर? ऊपर नीचे कहाँ? जहां पे आपके दिखता है ना, उसी साइड में, राइट वीडियो साइड कहाँ में। से आपने बंद किया चालू किया ना? Ma'am, there will be a very arrow on if you are using laptop. हाँ बराबर है। मोबाइल में बहुत बार अपने को बैकग्राउंड सेट करना नहीं आएगा। देखो ओके, यू आर टॉकिंग अबाउट लैपटॉप। लैपटॉप में इजीली जाएगा। मोबाइल में भी कर सकते हैं, मोबाइल में भी हमने किया है, लेकिन हाँ बराबर बराबर सर, सुहास सर गुड। बहुत अच्छा बैकग्राउंड लगा दिया आपने तो बहुत ऐसे इस तरह से हम लोग जो अनॉइड थिंग है, जो अपने घर के पीछे की चीज है, तो हम छुपा सकते हैं। ओके, सिंपल वे टू अवॉइड सच बैकग्राउंड्स। ओके, सो एक स्टूडियो हम लोग घर में डेवलप कर सकते हैं। अभी जो मैं फटाफट आपको इधर भी देख रहा हूँ, मैं आपके चैट भी देख रहा हूँ, मैं आपको बात भी कर रहा हूँ, मेरा प्रेजेंटेशन भी चल रहा है, कैसे हो सकता है? देखो अभी मैं सिंपल आपको ये चीजें बताता हूँ। ओके, मेरे घर में मैंने मैंने हमारे शुभम शुभम यानी कि मेरा बड़ा लड़का, उसने मेरे को हेल्प किया ये सब बैकग्राउंड बनाने में। जस्ट आई विल शो यू द बैकग्राउंड ऑफ माय मैंने व्हाट्सएप कर दी, मेरे पास मेल करने का टाइम यहाँ पे नहीं है। कहाँ पापा के फोन से भेज दिया उसने आपको। कैन यू सी माय वीडियो? दूसरे इसमें दूसरे इसमें मैं आया हूँ, उदय देवकाते जहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल जीसीओपी नहीं, तो उसमें एक सिंपल चीज मैंने की हुई है। आप देखिए, ये मेरा लैपटॉप है। ओके, लैपटॉप लेवल बढ़ाने के लिए मैंने क्या किया है कि उसको फैन वाला पीछे से उसने बिठा के दिया, तो फैन के कारण एक तो लैपटॉप भी ऐसा ऊपर उठ गया है, और बाद में उसका जो कैमरा है वो भी मेरे लेवल पे आ गया। ओके सी, बहुत सिंपल सिंपल चीजें की हुई है हमने, बहुत सारा पैसा नहीं खर्चा किया। यह माइक है जो मैंने लगा दिया है। ओके, देन दिस इज द लैपटॉप, तो उसको एक स्टैंड ले लिया जिसके अंदर फैन भी रहता है। बहुत देर तक भी अगर हम लोग लैपटॉप चलाते तो वो अपने को तकलीफ नहीं देगा। दूसरा, एक एडिशनल कीबोर्ड मैंने लैपटॉप को लगा दिया। ओके, लैपटॉप का कीबोर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा हूँ, बहुत बार वो लैपटॉप के की खराब हो जाते, तो यू जस्ट पुट ए यूएसबी कीबोर्ड एडिशनल। ओके, बहुत उसको हम लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करते, और एक एडिशनल मॉनिटर लगाए। ओके, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मैं जो भी दिखा रहा हूँ, आप देखो ये वाला मेरा स्क्रीन है, स्क्रीन 1, और आप जो देख रहे हैं वो स्क्रीन 2। ओके, जब मैं स्क्रीन 1 पे मेरा स्क्रिप्ट भी अगर रखता हूं और उसको पढ़ता हूं, तो आपको ऐसा दिखता है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। ओके, मैं कुछ बोल रहा हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आपकी तरफ देख रहा हूं। हम लोग जनरली क्या करते हैं कि एक ही इसमें दोनों डाल देते, तो या फिर मोबाइल में जाते तो मोबाइल की तरफ देखते रहते या इधर उधर देखते रहते, तो वो आई कांटेक्ट निकल जाता। तो सिंपल थिंग्स यू कैन डू। अभी लाइटिंग सिस्टम के लिए एक सिंपल चीज मैं आपको बता दूं कि ऐसे घर में अपने लाइट जाने के बाद ऐसे हमने लाइट लिए हुए, ओके, सबके घर में इधर उधर पड़े रहते, तो सिंपली यू कैन पुट दिस लाइट, ओके, फॉर लाइटिंग सिस्टम्स यू कैन कंट्रोल योर लाइट विच इज अपीयरिंग। अभी मेरा ये वाला देखिए जिसके अंदर वो फेस के ऊपर देखें। ओके, सो लाइटिंग कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग। वो 2 लैंप इधर उधर से लगा दिए तो यू विल गेट अ गुड लाइट। ओके, सिंपल चीजें हैं, बहुत सारा पैसा नहीं खर्चा किया हमने इसके लिए। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर, बोलिए मैडम। सर, तो आपने दोनों आपके लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों पर जूम ऑन कर सकते हैं? नहीं, लैपटॉप एक ही लैपटॉप ही है जूम मेरा, ये कंप्यूटर नहीं मैडम, सिर्फ मॉनिटर लगाया हुआ है। मॉनिटर जहाँ ये एक्सटेंड किया हुआ है मेरा जो लैपटॉप का कनेक्शन है, तो लैपटॉप में खुद का तो मॉनिटर रहता है,
उसके जी। बाद में एक HDMI पोर्ट रहता है उसको। ओके सर। अपने घर में अगर कोई पुराना कंप्यूटर है और उसका लैपटॉप ये पड़ा हुआ है आपके घर में, जी। उसका मॉनिटर पड़ा हुआ है, तो वो आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हम अच्छा। लोग अभी OHP लगाना तो सब लोग जान गए। राइट। ओके, सिंपली वी कैन पुट द OHP इजीली। वो हम राइट। लोग क्या करें, वी आर डुप्लीकेटिंग आवर डिस्प्ले। उसके राइट। अंदर ही सेटिंग रहता है, डुप्लीकेट आवर डिस्प्ले और एक्सटेंड आवर डिस्प्ले। ओके, ये गेमिंग वाले बच्चों ने हमको पढ़ा दिया, तो गेमिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं हम लोग, पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं बहुत अच्छी तरह से। वो भी अपने को एक अच्छा टेक्निक मिल गया उनके कारण। वो बच्चे थैंक अपने यू। को पढ़ाते हैं, हमारे को ऐसा नहीं बोलना है कि हम ही पढ़ाते, बच्चे भी अपने को पढ़ा लेते। थैंक तो यू। ये फिगर में आप देख रहे होंगे कि ऐसे 2 मॉनिटर्स रखे हुए, 2 लाइट्स रखे हुए, अच्छी तरह से वो उनका स्टूडियो सेट हो गया। तो ये सिंपल कर सकते हैं, उसको बहुत ज्यादा खर्चा नहीं लगने वाला है। आगे आगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जिसके अंदर हम बोलेंगे कि लेक्चर डिलीवरी। ओके, जो एक्सपीरियंस लोग हैं तो उनको लेक्चर डिलीवरी की कोई बात नहीं। हम लोग तो कभी भी चढ़ा दो क्लासरूम में भाग जाएंगे और बात करना चालू कर देंगे। लेकिन वो क्लासरूम है, बच्चे सामने बैठे हुए हैं, हाँ, तो वहां पे की डिलीवरी और ऑनलाइन की डिलीवरी या फिर वीडियो के साथ में डिलीवरी अलग है। वो थोड़ा सा अपने को सोचना चाहिए कि यहाँ पे अपने को एक टाइम स्लैब दिया हुआ है कि ये छोटे से समय में ये पूरा वीडियो आपको रिकॉर्ड करने का है। हम लोग 2 घंटा 3 घंटा वहां पे बात नहीं कर सकते। क्लास में 1 घंटे के ऊपर 10 मिनट चला गया तो चल जाता है। हम लोग तो, मैं बोलता हूँ कि मैंने पहले पहले 1-1 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड कर लिए। लेकिन क्या बच्चे इतना झेल पाते हैं? ओके, व्हाट इज देयर लिमिटेशंस, हाउ मच टाइम दे कैन सी द वीडियोस। वीडियो भी रहे ना, अगर आप YouTube में उसका एनालिसिस देखेंगे वीडियो स्टूडियो को जान के, मेरे ख्याल से मोस्टली ऑल ऑफ यू हैव रिकॉर्डेड द वीडियो एंड अपलोडेड ऑन योर YouTube चैनल। बहुत फ्री अवेलेबल है, करो, कुछ ना कुछ करके देखो। तो उसके अंदर हम भी 1-1 घंटे के पहले वीडियोस रिकॉर्ड करते थे, और तब पता चला कि ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो तो 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट बहुत हो गया उतना। ओके, नॉट मोर देन 20 मिनट्स। सो वी कैन हैव सम डिलीवरी मैकेनिज्म्स। तो वो क्या क्या हो सकता है? तो पहले आई हैव ए क्लीन प्रोफेशनल अपीयरेंस। सबसे पहले मैं खुद कैसा दिख रहा हूँ वीडियो के अंदर। मैं अभी तो ऑनलाइन में तो ऐसा हो गया कि ऊपर कोट पहन लेते हैं और नीचे पायजामा है, हाँ, ऐसा भी बैठते हैं हम लोग। लेकिन चलता ना, जो दिखने वाला है वो देखो पहले। दिखने में अगर मैं कोट में दिख रहा हूँ, अच्छी तरह से दिख रहा हूँ, तो दैट इज गुड। ओके, तो शाबीनेस, टी शर्ट पे बैठा हूं और मेरे को खुद को इंटरेस्ट नहीं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उसके अंदर, तो फिर बच्चों को कहाँ से इंटरेस्ट आने वाला है? तो पहले खुद का अपीयरेंस, खुद का इंटरेस्ट। दोपहर का लेक्चर है, क्या है मेरे को हरदम दोपहर को ही लेना पड़ता है, ऐसे खुद के दिमाग में अगर गिल्ट है तो वो हम लोग अपेयर कर ही नहीं पाएंगे बच्चों के सामने अपना अच्छी तरह से। ओके, तो अपीयरेंस, प्रोफेशनल अपीयरेंस होना चाहिए, प्रॉपरली ग्रूम्ड हेयर होने चाहिए अगर है तो। हमारे जैसे लोगों को कहाँ बोलेंगे हम लोग ऐसा। और आई एम वेयरिंग प्रॉपर क्लोथिंग्स। क्लोथिंग्स का ये रहता है कि देखो अभी ये मेरा शर्ट है तो इसके ऊपर सिर्फ लाइनिंग है, अगर चेक्स रहते तो मेरे बैकग्राउंड के साथ में वो मैच नहीं खा पाते। ओके, बहुत बार चेक्स क्या होता है कि आंखें घूमती है उसके ऊपर। ओके, सो इन दैट केसेस यू शुड अवॉइड सच टाइप ऑफ द क्लॉथ्स विच विल डिस्ट्रैक्ट द थिंग्स। वीडियो में, कैमरा में अच्छे दिखने वाले कलरफुल रहते ना, आप जब पिक्चर देखने को जाते तो उनके एकदम येलो, रेड, ऐसे डार्क शर्ट्स वगैरह रहते हैं। ऐसे नहीं पहनने को बोल रहा हूं मैं आपको, लेकिन जो भी पहनेंगे तो वो वीडियो में बैकग्राउंड के हिसाब से उठ के दिखना चाहिए। जनरली बैकग्राउंड हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंपली, अगर वर्चुअल बैकग्राउंड नहीं लगाने का है तो ग्रीन स्क्रीन लगा सकते हैं। ओके, जिनको ऐसा कुछ दिखाना है, इधर कुछ दिखाना है, इधर कुछ दिखाना है, या फिर ऐसा ऐसा करके आपको कुछ एडिट करना है वीडियो, उसको टाइम लगता है, एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लगता है, एडिटिंग का नॉलेज लगता है। तो उनके लिए एक तो बैक में हम लोग ग्रीन कपड़ा लगा सकते हैं, या फिर बैक में हम लोग ब्लैक कपड़ा लगा सकते हैं। ओके, सो दैट इज हाउ यू आर वेयरिंग द क्लोथ्स। आई हैव गुड पोस्चर, बैठा हूं मैं ऐसा टेढ़ा मेढ़ा बैठा हूं तो वो सामने को अपील नहीं करेगा। ओके, सो आई शुड हैव द गुड पोस्चर, बराबर पोजीशन होना चाहिए मेरा। समझो मैं कुछ बात कर रहा हूं तो मेरे को जो मेरा हैंड एक्शन से वो दिखने चाहिए कैमरा में। ओके, मैं जो बोल रहा हूँ वो कैमरा में सिर्फ मेरा मुंह नहीं दिखना चाहिए एकदम ऐसा। अगर मेरा सिर्फ मुंह दिख रहा है तो मेरे कोई बाकी एक्शंस नहीं दिखेंगे आपको। ओके, सो इट शुड हैव ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द कैमरा, good posture. I am looking at the camera lens when I am talking.
इधर देख रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ तो थोड़ी जमेगा। या फिर मैं नीचे कुछ नोट्स रख रहा हूँ उसमें देख रहा हूँ तो बराबर वीडियो नहीं आएगा। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो भी स्क्रिप्ट है, तो ये जो वाला मेरा जो ये है मॉनिटर, उसके अंदर मैं वो स्क्रिप्ट अगर दिखाता जाऊं तो अच्छी तरह से आप देख पाएंगे, ऐसा लगेगा। इसके लिए क्या रहता था कि वो ये आते ना, क्या बोलते हैं उसको, रिकॉर्डिंग के ये आते डिवाइसेस, जिसके अंदर वो स्क्रिप्ट सामने चलता रहता है और पीछे से कैमरा रहता है। ओके, तो वैसा हम बना सकते हैं। हमने नवले सर ने और हमने बना के भी देखा। एक बैक ब्लॉक्स बनाए, बॉक्स बनाए, उसके अंदर ग्लास फिट किया और टैप पीछे से रख दिया नीचे से, और उसका इमेज हम लोग वो ग्लास के ऊपर ले रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर बोलते हैं उसको, टेलीप्रॉम्प्टर्स। ओके, घर में बनाया हमने ऐसे चीज बना के देखी। तो ऐसा टेलीप्रॉम्प्टर हम खुद बना सकते हैं। नई टेलीप्रॉम्प्टर तो हमारा लैपटॉप के ऊपर हम लोग स्क्रिप्ट रखो और प्रेजेंटेशन बाजू में रखो। आई एम रिलैक्स एंड टॉकिंग फ्रेंडली मैनर। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि अपने को टेंस हो जाते हैं हम लोग, टाइम पे नहीं चालू हुआ, मेरा इधर गड़बड़ हो गया, मेरा माइक ही बंद था, मेरे शेयरिंग में साउंड नहीं चालू हो गया, और फिर वो मेरा वीडियो नहीं चल रहा है, या फिर मेरा ये खुल ही नहीं रहा है प्रेजेंटेशन, वो कुछ वर्जन अलग है। तो ऐसा हो जाता है, हम लोग बहुत पैनिक हो जाते हैं इसमें। तो डोंट बी पैनिक। ओके, उसके लिए पहले से ही तैयारी रखो। ओके, अगर आपका वीडियो नहीं खुल रहा है, आपका प्रेजेंटेशन नहीं खुल रहा है, तो उसका पीपीटी बना के रखो एंड यू कैन यूज पीपीटी फॉर प्रेजेंटिंग इट। ओके, नहीं खुल रहा है तो नहीं खुल रहा है, छोड़ दो। उसके साथ में पीपीटी तो खुल सकता है ना, तो पीपीटी बना लो। वो दोनों भी, अगर समझो आपका पेन ड्राइव ही खराब हो गया, या पेन ड्राइव नहीं ले रहा है वो, या फिर आपने सीडी पे लाया ओल्ड टेक्नोलॉजी में, और आपको अभी क्या करना है क्या वो मालूम नहीं, तो यू पुट इट ऑन द वेब। हाँ, वो तो आप सब करते होंगे, आप तो बहुत सालों से ये सब चीजें कर रहे हैं। एक मेरा काम है बोलना, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी शुड हैव द अल्टरनेटिव थिंग्स एंड यू शुड बी रिलैक्स्ड। ओके, डोंट वरी। एंड व्हेन यू टॉक लाइक यू आर टॉकिंग विद द फ्रेंड्स, आपके बच्चों के साथ, आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ। जब अपने बेस्ट फ्रेंड से हम कुछ शेयर करते हैं तो इतना हिचकिचाते नहीं है। ओके, यू शुड टॉक इन दैट वे। आई डोंट फॉरगॉट टू स्माइल एट वंस पर लेसन। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, अच्छी तरह से हंस के बात करके मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत ऐसा रफ अपना मुंह रख के नहीं पढ़ा रहा हूँ। आई हैव डिटेल ऑल मिस्टेक्स। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि कभी कभी मैं इधर हो जाता हूँ, उधर हो जाता हूँ, या ऐसा कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं अपने पीछे। तो वो अगर एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो उसके साथ में काट देने आपको। ओके, यू हैव टू रिमूव ऑल द मिस्टेक्स व्हेन यू आर डूइंग द वीडियोज। देन आई हैव डिलीटेड और अवॉइडेड फिलर वर्ड्स। अपने को सबको आदत रहती है, ओके, हाँ, करने की आदत रहती है, तो हम उसको काट सकते हैं। ओके, वी कैन हैव ए प्रॉपर एडिटिंग सॉफ्टवेयर वेयर वी कैन अवॉइड और वी कैन कट। आने वाले तो है वीडियो रिकॉर्ड करते समय, तो उसको काट दो। ऑटोमेटिक आपका जो वीडियो बनेगा विदाउट फिलर वर्ड्स रहेगा, विदाउट आपका वो डिस्ट्रक्शन वाला रहेगा। आई हैव रिहर्स्ड एटलीस्ट वंस व्हाट आई एम गोइंग टू से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो हम बोलते हैं ना कि 11th आवर पे मेरे को खड़ा कर दे यार, मैं बात कर लूंगा, लेकिन 11th आवर नहीं चलता है, वीडियो में टाइम लिमिट रहता है। ओके, अपने को एक शेड्यूल में सब करना रहता है। हम लोग क्या हो जाते हैं, उसको हम लोग रेंटिंग बोलते हैं। ओके, सो गेट टू द पॉइंट एंड अवॉइड रेंटिंग। तो कैसा कर सकते हैं, तो कैमरा के बाजू में या आपके लैपटॉप के बाजू में एक पेपर के ऊपर आपके पॉइंट्स, ओके, क्या क्या आप पढ़ाने वाले, क्या क्या आप बात करने वाले, जहां कहाँ पे आपको वापस आने का है। नहीं तो हम लोग घुस जाते कहीं, तो वो उसके आगे 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 अपनी गाड़ी निकल जाती कहीं के कहीं। तो उस वक्त में अपने को पीछे खींचने के लिए अपने को एक ऐसा कोई तो भी सिस्टम चाहिए जो आप हम देख रहे हैं और अब हम बोल रहे हैं अरे भाग गया मैं इधर, फिर से आ जाओ इधर। तो ऐसे उसको बोलते हैं अवॉइड रेंटिंग ड्यूरिंग द लेक्चरिंग। आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर नियर मी व्हेन रिकॉर्डिंग। बहुत बार घसा, आपका गला जो रहता है वो सूख जाता है। ओके, ऐसे वक्त में आवाज ठीक से नहीं आती है, या फिर आपको खुद को तकलीफ होती है, आप शर्मा जाते हैं कि मैं कैसे बीच में पानी पीऊं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो इफ यू आर ऑनलाइन लेक्चर यू कैन हैव ए सिप ऑफ वाटर। ओके, सो दैट इज ए कॉमन थिंग। अगर गला सूख रहा है, बहुत बार अभी आप न्यूज में भी देखते हुए कि उनका भी कभी कभी अटक जाता साउंड, तो ऐसे वक्त में उनको भी पानी पीना पड़ता है। फिर वो जाहिरात वगैरह प्ले कर देते बीच में, एडवर्टाइज
और बाद में वो खुद ये कर लेते हैं। उनके पास में म्यूट का बटन रहता है, ज्यादा अगर ऐसा आने लगा तो वो म्यूट कर सकते हैं। आई एम कीपिंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स माई लेक्चर। क्या पढ़ाने को दिया है, कहाँ ये वीडियो बनाने का है, अभी क्या हमारी उम्र रह गई? हम तो ऐसा बोलते हैं, अभी क्या हमारी उम्र रह गई, कुछ कुछ नया सीखो और ये करो और वो करो। ऐसा नहीं, अभी तो अब बहुत सारे लोग यंगस्टर्स है, सो वी हैव द प्रॉपर एज टू लर्न ऑल दीज थिंग्स. Okay, so we should have a positive attitudes towards all these new things also. I have a clear idea of why I am teaching this course. Okay, मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे पढ़ाने से कुछ सचमुच फायदा होने वाला है नहीं बच्चों को, तो उसके आपको क्लियर कट आइडिया होने चाहिए. ओके, थोड़ा सा एक रिफ्लेक्शन स्पॉट में देना चाहता हूँ, थोड़े से आपसे फिर से बात करना चाहता हूँ कि व्हाट आर द फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू रिकॉर्ड द वीडियोस. कैन यू लिस्ट देम इन द चैट बॉक्स? आप कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए? अरे वाह वाह, ओबीएस स्टूडियो, नवले सर इज सेइंग, गुड. अरे वाह, पीपीटी इटसेल्फ, बहुत अच्छी तरह से. तुषार तुर्केरी, बहुत बड़ा बात किया आपने, तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ. स्क्रीन कास्ट, ओके, स्क्रीन कास्ट इज गुड. स्क्रीन कास्टोमेटिक, यस दैट इज स्क्रीन कास्ट, ओके, गुड गुड. ई सेवर ऑल्सो देयर, ई सेवर, मैंने भी पहली बार नाम सुना है, बहुत बार ऐसे अपने को नाम नहीं मालूम रहते. स्क्रीन कास्ट, हाँ, ए पावर सॉफ्ट है बराबर. जूम, जूम इज फॉर ऑनलाइन लेक्चरिंग. ओके, वी कैन ऑनलाइन लेक्चर हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं. जूम में हम लोग लेक्चर भी ले सकते हैं, साइमल्टेनियस उसको रिकॉर्ड भी कर सकते हैं. पीपीटी बोल रहे हैं रूपाली जी, बराबर. पाटिल मैडम, मोहम्मद शेर भी बोल रहे हैं पीपीटी बराबर. ड्यू रिकॉर्डर बराबर है. प्रीजी, जूम, एक्सप्रेस, जूम क्या है? जूम वी कैन रिकॉर्ड, यस, बट हाँ, वी कैन हैव द मीटिंग एंड वी कैन रिकॉर्ड ऑल्सो, यस सर. फ्लैशबैक एक्सप्रेस, मेरे से तो आपको ज्यादा मालूम है भैया. जूम, ओके ओके, जस्ट आई विल लिस्ट आउट सम सॉफ्टवेयर्स. ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं मालूम, एक ऐसा ये रिफ्लेक्शन स्पॉट बनाते हैं. जब भी वीडियो बनाते हैं ना, तो इसके अंदर एक रिफ्लेक्शन स्पॉट रहता है. व्हाट आर द फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल टू रिकॉर्ड, और बच्चों को बोलते हैं नोट, टेक द नोटबुक एंड राइट डाउन द थिंग्स इन योर नोटबुक. ओके, इफ यू हैव फिनिश, तो फिर इधर ये जो अभी पॉज वाला बटन लगा है ना, तो उसके अंदर ऐसा गोल प्ले वाला बटन लगा देते. इफ यू हैव फिनिश, प्रेस हियर. एक्चुअली वो तो प्रेस करता है तो नेक्स्ट स्क्रीन आ जाएगा, ओके, या फिर वीडियो प्ले हो जाएगा, तो प्ले द वीडियो. और फिर बाद में वही चीजें सिर्फ बच्चों ने जो लिखी थी वही अपने को एक बार बतानी पड़ेंगे, नहीं तो हम बोलेंगे कि अभी बता दी और अब कुछ नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, सो जस्ट आई हैव लिस्टेड सम ऑफ देम फॉर योर सेक. पूरे नहीं हो सकते, शायद आपने बहुत ज्यादा बोल दिए. लूम है, स्क्रीनो कास्टोमेटिक है. स्क्रीन कास्टोमेटिक जो बहुत पहले से सब लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, सिर्फ इसका लिमिटेशन से कि 10 to 20 मिनट्स का ही हम लोग उसमें सेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं कर सकते. और वैसे भी अपने को नहीं करने का है, हमको नहीं मालूम था, इसलिए हम ओबीएस की तरफ भागे. ओके, पहले हमको लगता था कि क्या ये स्क्रीनो कास्टोमेटिक वो बहुत कम रिकॉर्ड करता है. बाद में पता चला कि नहीं भाई, आधा घंटा नहीं करना है अपने को, 10-20 मिनट ही करना है, तो उसको ब्रेक डाउन करना है, तो वो उसके लिए भी अच्छा है स्क्रीनो कास्टोमेटिक. देन ओबीएस स्टूडियो जो है, बहुत इजी तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे ओबीएस स्टूडियो भी डाला हुआ है. एमएस ऑफिस पावर पॉइंट, तो इसका एक सिर्फ प्रॉब्लम ऐसा है कि न्यूअर वर्जन के साथ में ये चल रहा है. अगर आपका ओल्ड वर्जन है, आप उसमें अंदर अगर ढूंढ रहे हो उसको कि देवकाते सर ने तो बोला था वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए आप वो इस्तेमाल करो, लेकिन अपने पास अगर वो ऐसा वर्जन नहीं है तो उसके अंदर नहीं हो सकता है. अगर लेटेस्ट वर्जन है 619 और उसके ऊपर के कुछ, मैंने कल एक वीडियो भी देखा जिसके अंदर वो 16 वाले में भी है. ओके, तो मेरे पास में 19 है तो मैंने 19 बोल दिया. अगर उसके नीचे हो सकता है तो आप ही मुझे बोलो. ओके, क्विक टाइम है एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल. इजी वीड है, ए पावर सॉफ्ट किसी ने बोला भी था अच्छी तरह से ये. एंड पैनपॉट भी एक बहुत इजी सॉफ्टवेयर है, वी कैन यूज फॉर इट. ओके, सो ये अलग अलग सॉफ्टवेयर है, इसको कैसा इस्तेमाल करना ये तो मैं सब कुछ बता नहीं पाऊंगा. एक आधी चीज का मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊंगा या आज के टाइम शेड्यूल के हिसाब से. तो लूम का ये जो सॉफ्टवेयर रहता है ये इस तरह से है, जो लूम के आप गूगल सर्च कर सकते हैं, लूम वीडियो रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर, एंड यू कैन रिकॉर्ड और यू फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड. इट इज फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल ऑन वेब.
ओके, नेट में वो फ्रीली अवेलेबल है. लूम इज अ स्क्रीन कास्टिंग टूल दैट लेट्स यूजर रिकॉर्ड ऑडियो, वीडियो, ब्राउजर विंडोज और एंटायर स्क्रीन इन गूगल क्रोम. ओके, पूरा आपका प्रेजेंटेशन चल रहा है और आप पीछे सब प्रेजेंटेशन है और सामने आप विंडो में दिख रहे हैं ऐसे कॉर्नर में, तो ऐसा भी इसके अंदर होता है. सारे इसमें है चीजें ये. अगर आप ओबीएस भी इस्तेमाल करते तो वहां पे अगर कैमरा चालू कर देते तो वो नीचे विंडो आ जाएंगे और जिसके अंदर आप प्रेजेंटेशन शेयर करके रिकॉर्ड कर सकते हैं. आप खुद भी देखेंगे और आपके पीछे आपका पावर पॉइंट भी दिखेगा. ओके, सो दिस इज लूम. देन अनदर इज योर स्क्रीनोमैटिक. ओके, स्क्रीन कास्टोमैटिक. तो बहुत लोगों ने इसको इस्तेमाल ही किया होगा. स्क्रीन कास्टोमैटिक फ्री स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर. इट इज अफोर्डेबल ऑल्सो इफ यू परचेस इट. बहुत ज्यादा उसका प्राइस नहीं है. बिगिनर्स फ्रेंडली वे टू मेक प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियोस. कुछ चीजें उसमें एडिटिंग की अपने को दी गई है, हम जिसके अंदर कुछ फ्रेम्स निकाल सकते हैं या ऑडियो मिक्सिंग कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा बहुत है एडवांस वर्जन में अगर हम खरीदते हैं तो. फ्रीले में इतना अवेलेबल नहीं है. मेक इट इजी टू रिकॉर्ड योर वेबकैम, स्क्रीन और बोथ. अलग अलग उसके आएंगे. आपने अगर स्क्रीन अभी ये जब मैं शेयर करूंगा तो आपको बता सकूंगा मैं स्क्रीनोमैटिक कैसा शेयर करते. ओके, तो एक डेमोस्ट्रेशन में देना चाहूंगा स्क्रीनोमैटिक का और उसका. तो एक मैंने पहले शेयर बंद कर देता हूँ. एंड नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन 1. तभी जिसमें मैं काम कर रहा था डेमोस्ट्रेशन वगैरह आपको ये दिख रहा था, ये यहाँ पे पता चलेगा आपको. ओके, ये मेरा ओरिजिनल स्क्रीन है जहाँ से मैं काम कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो ये ओबीएस स्टूडियो है. यू कैन सी माय ओबीएस स्टूडियो. नाउ आई एम स्टार्टिंग माय ओबीएस स्टूडियो. इसका भी नया वर्जन आया है, रिमाइंड मी लेटर कर देता हूँ. ये ओबीएस स्टूडियो क्या रहता है, बहुत ये भी इजीली अवेलेबल है आपके नेट के ऊपर. उसको अगर इंस्टॉल कर देते तो उसमें अलग अलग हम उसको लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. जैसे यूट्यूब वगैरह लाइव स्ट्रीमिंग रहता है ना, तो वैसे इसको भी लाइव स्ट्रीमिंग में जा सकते हैं, या फिर उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं. तो अलग अलग इसके अंदर हमको डालना है. तो अभी देखो मैं यहाँ पे अभी डिस्प्ले कैप्चर में कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कैमरा चालू नहीं, क्योंकि माय कैमरा इज एंगेज विद जूम. ओके, मेरा कैमरा अगर जूम इस्तेमाल कर रहा है तो ऑटोमेटिकली मेरा कैमरा सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड करेंगे. अगर मेरा कैमरा जूम पे नहीं रहता तो यहाँ पे एक छोटा सा विंडो अलग सा आ जाता है जिसके अंदर मैं खुद दिख रहा हूँ वहां से. ओके, सो दिस इज अ वेरी सिंपल सॉफ्टवेयर. इसके अंदर बहुत सारे टूल्स है, लेकिन अपने को इस्तेमाल करने वाले सिर्फ यहाँ पे अपने को ये दो चीजें डालने की है. एक तो वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस डालो और स्क्रीन डिस्प्ले कैप्चर डालो. वो दो ही चीजें आपको इसके अंदर डालने की. इसके अंदर वो वीडियो रिकॉर्डिंग का जो साउंड का लेवल है, देखो अभी मैं आपको जो भी दिखा रहा हूँ, यू कैन सी द साउंड रिकॉर्डिंग. आपको ये दिख रहा है कि मेरे इसमें, हाँ देखो नीचे साउंड रिकॉर्डिंग का वो डेसिबल मीटर दिख रहा है. क्या बोला था मैंने, 0 to -6 dB क्या अंदर मेरा साउंड चाहिए. देखिए मेरे को अभी साउंड आपको कहाँ तक दिख रहा है, 3.5, 3.15, 10. तो वो जो है उसके अंदर मेरा साउंड है. हाँ, येलो कहाँ पे जा रहा है, तो वो आई हैव एडजस्टेड द साउंड. तो ये लेवल मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ, ये वाला मैं यहाँ से एडजस्ट कर सकता हूँ साउंड लेवल. ओके, ये रेड में नहीं जाना चाहिए. अगर मैं रेड में जाऊंगा तो कैसा आवाज, आप कान बंद कर लिए होंगे शायद. तो ये साउंड सिस्टम अरेंजमेंट है, ये इसके अंदर कर सकते हैं. डेस्कटॉप ऑडियो भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं. जब अपने को रिकॉर्ड हो गया चीज अगर देखने का है तो यहाँ पे डेस्कटॉप ऑडियो एडजस्ट कर सकते हैं. यहाँ पे उसके ऑप्शन से फेड वगैरह के, ऐसे फेड होके वीडियो चालू हो जाएगा, फेड होके बंद हो जाएगा. तो यहाँ पे ये फेड वाला ऑप्शन है. ओके, ट्रांजिशन, स्क्रीन ट्रांजिशन, जैसे पावर पॉइंट में ट्रांजिशन रहते हैं ना, यहाँ पे भी स्क्रीन ट्रांजिशन से यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग एंड यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग. तो इसमें इधर आके अपने को ये करना पड़ता है, या फिर ये जो नीचे टास्क बार में आपको ये दिख रहा है ओबीएस स्टूडियो, तो इसके राइट क्लिक कर देते तो वहां पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, पॉज रिकॉर्डिंग का आ जाता. फिर भी अपने को क्या करना पड़ता है, हमने अगर पूरे स्क्रीन में मैंने अगर पीपीटी लगा दी है यहाँ पे ऐसे, ओके, तो मुझे कहाँ दिखने वाला है, अगर मैं पीपीटी चालू कर दूं तो वो टास्क बार ही नहीं दिखेगा. ओके, हाउ आई कैन सी द टास्क बार. फिर मेरे को इसको ड्रॉप डाउन करके और फिर वो सब रिकॉर्ड होता है मीनवाइल. तो अपने को यहाँ पे एक इजी मेथड दिया हुआ है वहां पे,
तो उसको बोलते हैं सेटिंग में अगर जाते हैं तो हॉट की चेक कर सकते हैं हम लोग। ओके, हॉट की सेट कर सकते हैं। हॉट की यानी कि एक छोटी सी की है, अल्टर सी चालू करो, अल्टर टी। हम लोग अल्टर यस नहीं कर सकते, अल्टर यस करने को जाओ तो पावर पॉइंट में दूसरा ही कुछ हो जाएगा। ओके, अल्टर सी कर दो तो हमको पावर पॉइंट में कवर अप नहीं होने वाली चीजें वहां लेनी। ओके, तो वो की यहाँ पे सिलेक्ट करने की। अगर सिर्फ सी करते तो पावर पॉइंट में कुछ हो जाएगा, या फिर कंट्रोल सी करते तो कॉपी हो जाएगा। तो अपने को अल्टर सी कर देने का, या ऐसे कोई भी चीज अपने खुद के एक्सपेरिमेंट से हम लोग सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे चालू चालू करो तो इसलिए सी रख दिया, थांबा म्हणून टी रख दिया मेरे को लगने, पॉज के लिए पी रख दिया और अनपॉज के लिए यू रख दिया। तो मेरे को याद भी रहेंगे ये सब चीजें, तो मैं यहाँ से ये कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट ये रहता है कि विच माइक्रोफोन आई शुड यूज। तो हम लोग जैसा चालू हो जाएगा हम लोग चालू कर देते। और चाहे आप ये इतना महंगा ये भी ले ले कंडेंसर माइक्रोफोन, और अगर यहाँ पे सेटिंग में उसको सिलेक्ट नहीं करते, ये देखो यहाँ पे फाइन फाइन वाला माइक्रोफोन मैंने सिलेक्ट किया है, तो हो सकता है कि वो आपके इसका जो माइक है लैपटॉप का उसके साथ में रिकॉर्डिंग चालू कर देगा। ओके, सो यू हैव टू सेट दिस। देन वीडियो में भी आपको आउटपुट कौन से इसका चाहिए, देखो 1366 × 768, तो उसका हम लोग एस्पेक्ट रेशो भी यहाँ पे है। मैंने जो बोला था 16:9 एस्पेक्ट रेशो होना चाहिए। फिर बाद में स्ट्रीमिंग के कनेक्शन जो है, आउटपुट जो चाहिए मुझे MP4 में चाहिए, ओके, या WS में चाहिए, अलग अलग वेव फॉर्म में चाहिए, या MP4। जनरली हम लोग MP4 में करते, तो वो सेटिंग्स है, थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो आपको भी ये सेटिंग आ जाएंगे। ओके, तो OBS भी इस्तेमाल करना कोई मुश्किल चीज नहीं है। और रही बात आपको स्क्रीन और कॉस्टोमेटिक, तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया है। स्क्रीन कॉस्टोमेटिक यहाँ से समझो हमारे शायद साहब ने निकाल दिया होगा, इंस्टॉल कर दिया होगा, तो हम लोग ठीक है। अभी उसका मेरे को इतना टाइम नहीं है कि वो कस्टमेटिक मेरे ख्याल से सबने इस्तेमाल किया होगा, या फिर मैं ऐसे ही एक कोई वीडियो बना के उसका यूट्यूब पे लोड करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट है वी आर ऑल आर एक्वेंटेड विद पावर पॉइंट एंड हाउ सिंपली वी कैन यूज दिस पावर पॉइंट फॉर द पर्पज आई विल शो। ओके, पहले ये पुराना वाला मैं बड़ा वाला ये डेमोन्स्ट्रेशन का मैं चालू कर देता हूँ, जिसमें मैंने कम स्लाइड रखे हुए। ओके, ये वाला पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के लिए कैसे यूज करने का मैं आपको बताता हूँ। ओके, सो पहले हमारे पास में जो पावर पॉइंट है, तो उसको हमने स्क्रीन ये पहले स्लाइड्स बना देने के, जो स्लाइड्स को अपने को क्या क्या साउंड देने का है, तो वो एक बार उसका स्क्रिप्ट बना लेने का है अच्छी तरह से। और देखिए व्हेन वी गो टू दिस स्लाइड शो में यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही है, एक रिहर्सल टाइमिंग एंड एक रिकॉर्ड स्लाइड शो। ऐसे दो चीजें रहती है। रिहर्सल टाइमिंग में हम लोग टाइम रिहर्सल कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के पहले। ओके, फिर अपने को वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे मुझे कम बोलना है या ज्यादा बोलना है। और दूसरा जो रहता है एक्चुअल रिकॉर्ड स्लाइड शो, इसको अगर हम कम क्लिक करते हैं तो उसमें दो चीजें दिखाता है, रिकॉर्ड फ्रॉम करंट स्लाइड और रिकॉर्ड फ्रॉम बिगिनिंग। तो पहली बार कर रहे हैं तो बिगिनिंग से ही जाना है। ओके, तो अभी देखो आप मेरे बाजू के इसमें मेरे को पावर पॉइंट पूरा दिख रहा है। मैंने क्योंकि स्क्रीन शेयर करते समय अभी स्क्रीन 1 शेयर किया है, स्क्रीन 2 नहीं, क्योंकि मुझे वो नहीं दिखाना है आपको, वो मेरा वीडियो में ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन मुझे जो करना है वो ये स्क्रीन 1 का दिखाना है, तो इसलिए मैंने आपको स्क्रीन 1 शेयर किया हुआ है। तो इसमें आप पहले देखेंगे यहाँ पे ये रिकॉर्ड है। तो अभी बाकी समझाने के पहले मैं यहाँ पे एक रिकॉर्ड का बटन चालू कर देता हूँ। तो देखो 1 2 3 क्लैप, चालू रिकॉर्डिंग। तो अभी इसके अंदर जो भी मैं बोलूंगा वो सब ये स्लाइड के ऊपर हो रहा है। ओके, जैसे मुझे बोलना है कि चैलेंजेस टू ऑनलाइन लर्निंग एंड क्रिएटिंग वीडियो लेक्चर्स इन द प्रोफेशनल मैनर, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये क्या क्या रहता है। तो हर स्लाइड के ऊपर आप कुछ पॉइंट्स दिखेंगे, या ऐसे ये दिखेंगे। ये देखो ये यहाँ पे है, ये प्रीव्यू है। ओके, ये प्रीव्यू, अभी यहाँ पे एक लाइन उसके ऊपर है, तो अभी प्रीव्यू नहीं दिख रहा है। ये कैमरा भी मेरा ऑफ है क्योंकि जूम इज ऑलरेडी यूजिंग माय कैमरा। अगर मेरा जूम का कैमरा नहीं रहता तो मुझे यहाँ से एक छोटा सा विंडो दिखता जिसके अंदर मैं खुद वहां पे दिखूंगा। ओके, अभी जूम के कारण मेरा कैमरा वहां पे बंद है। इसके बाजू में माइक वाला माइक्रोफोन
है, तो अगर मेरे को उसको म्यूट करने का है तो मैं उसको लाइन यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ, तो वो लाइन आ जाएंगी, वो म्यूट हो जाएंगी। ओके। बाद में ये जो आप स्लाइड शो में अलग अलग चीजें यूज करते हैं, जैसे हम लोग पेन यूज कर रहे हैं या इरेजर यूज कर रहे हैं या फिर पॉइंटर यूज कर रहे हैं, तो वो भी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। देखो ये लेजर पॉइंटर है, मेरे को कोई चीजें समझाने की है तो आई कैन यूज दिस लेजर पॉइंट वाइल रिकॉर्डिंग ऑल्सो, इट इज अवेलेबल। ओके। बाद में अगर मेरे को पेन लेने का है तो यहाँ पे मैं लूंगा, कोई इंक लेने की तो मैं इधर से इंक से सिलेक्ट कर लूंगा, और जब मैं इधर राइट करूंगा, ये तो सबसे मुश्किल चीज पहले अपने को ये है कि माउस के साथ राइटिंग ही बहुत मुश्किल जाती है। 1 2 3 तो हमने बहुत बार लिखे होंगे, लेकिन अभी माउस के साथ लिखना यानी कि पहले से अपने को सीखने जैसा है। ओके। कभी कभी अपना है ऐसा कुछ तो भी निकल जाता है इधर उधर, तो वो अपने को बहुत मुश्किल जाएंगे जब हम चॉक एंड टॉक वाले जो लोग हैं पहली बार इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एक्वेंटेड है वो तो बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरा है ये इरेजर, ये जो कुछ गलत हो गया तो हम उसको इरेज कर सकते हैं। ओके। तो वो भी चीजें यहाँ पे है। और अगर अपने को पेन का कुछ कलर चेंज करने का है तो वो भी चीज यहाँ पे है। हाइलाइटर्स है, हमको कोई चीज ऐसे अपने को हाईलाइट करके दिखानी कि मैं मेरा नाम हाईलाइट कर रहा है, इसका मतलब मुझे आपको मेरा नाम दिखाना है, ऐसा नहीं। जो हाईलाइटिंग का सिर्फ मैं डेमो दे रहा हूँ आपको। ओके। तो ये हाईलाइट कर सकते हैं हम लोग हाईलाइटर के साथ। ये हो गया, ये स्लाइड के लिए मेरा इतना साउंड मैंने अभी कर लिया रिकॉर्ड। अभी मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा। अगली स्लाइड पे अगर मैं जाऊं तो वो मुझे अब ये सब मैं तो पढ़ूंगा ही, उसके सिवा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टॉप वाला है, रिकॉर्डिंग खत्म करो के लिए। यहाँ पे रिप्ले के लिए है। बाद में यहाँ पे क्लियर साउंड, ये जब मैं स्टॉप कर लूंगा तभी ये चालू हो जाएगा, अभी नहीं चालू होगा ये। क्लियर रिकॉर्डिंग जब स्टॉप रहेगा तभी कर पाऊंगा। क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन करंट स्लाइड या क्लियर रिकॉर्डिंग ऑन ऑल स्लाइड। पूरा की पूरा ही गलत हो गया है तो मैं पूरा स्लाइड्स ये सकता हूँ, क्लीन कर सकता हूँ और री रिकॉर्ड कर सकता हूँ। या ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ओबीएस वगैरह में क्या कर देते हम लोग, अगर रिकॉर्ड करना चालू कर देते पूरा प्रेजेंटेशन खत्म होने तक, ओके, वी कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन। अगर गलत हो गया है तो अपने को फिर से पॉज करो, फिर से वो री रिकॉर्ड करो, ऐसा सब करना पड़ता। लेकिन पावर पॉइंट में अपने को ये एडवांटेज है कि हम लोग कहीं भी रुक सकते हैं, पूरा होने के बाद उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो ये करंट स्लाइड उसके लिए दिया हुआ है। ओके। बाद में ये सेटिंग्स है, सेटिंग्स के अंदर फिर से माइक्रोफोन सेटिंग आ जाएगा कि आप कौन सा माइक्रोफोन इस्तेमाल करने वाले हैं और कौन सा कैमरा इस्तेमाल करने का। अगर हो सकता है आप जूम ले रहे और उसके साथ में आपको ये भी दिखाना है तो वी कैन हैव ए सेपरेट वेब कैम, और वो वेब कैम यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हो, यानी कि नीचे विंडो भी दिखेगा। ओके। अभी मैं तीसरी स्लाइड लेता हूँ। ओके। ये जो ऑनलाइन लर्निंग के चैलेंजेस मैं आपको बोल रहा था, तो ये चैलेंजेस का मेरे पास में स्क्रिप्ट भी रहता है। पेज अप। ओके। ये स्क्रिप्ट फिर से मैं दिखाऊंगा आपको, अभी ये रिकॉर्डिंग वाला। हाँ, ये नोट्स जो बोलते हैं उसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। ओके। ऑनलाइन लर्निंग चैलेंजेस एंड हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, ऑनलाइन लर्निंग चैलेंजेस, ऐसा सब लिखा रहता है। लेकिन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं यहाँ पे ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके। इट इज ओनली मॉनिटर टू यू। तो इसका हम लोग टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं या इसका टेक्स्ट कम कर सकते हैं अपने चश्मे के हिसाब से। ओके। सो दिस इज हेल्पिंग यू टू रिकॉर्ड द थिंग्स। ओके। तो इस तरह से हम लोग हर एक स्लाइड पे चेंजेस कर सकते हैं और फिर इसको हम लोग रिप्ले करके भी देख सकते हैं कि अपना जो हुआ वो ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। ओके। अभी ये रिप्ले हो रहा है यहाँ पे, और इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप हो गया, इसको बंद कर दो। ओके। जो ऐसा एक साउंड का ये आ जाएगा वहां पे। अभी पहले इसमें हर एक में आया हुआ है साउंड का। ओके। तो इसका मतलब इसको पूरा साउंड रिकॉर्डेड है। अभी इसको अपने को कन्वर्ट करने का वीडियो में, तो फाइल में जाओ, यहाँ पे सेव एज करो। सेव एज में कहाँ पे सेव करने का है वो आप सोच लो। और यहाँ पे पीपीटी की जगह पे उसको हम लोग MP4 में सेव कर सकते हैं। डेमो PPTX के जगह पे फाइल टाइप में हम लोग उसको MPEG4 वीडियो फॉर्म में उसको सेव कर सकते हैं। या फिर कुछ लोगों को वो वेव फॉर्म में भी रहता है। ओके। तो वो भी सेव कर सकते हैं इसके अंदर, उसका भी ऑप्शन है। लेकिन हम लोग अभी इसमें देख WMV। ओके। WMV ऑप्शन भी है या MP4 ऑप्शन से। तो MP4 ऑप्शन में हम लोग जनरली उसको सेव कर देंगे। इसको थोड़ा टाइम लगेगा,
जब हम लोग इसको चालू करते हैं तो क्रिएटिंग वीडियो डेमो फॉर वीडियो लेक्चर्स इन MP4, तो यहाँ पे एक ऐसा ये दिखेंगे आपको, ओके, प्रोग्रेस बार। तो इसके अंदर और स्लोली स्लोली वो रिकॉर्ड करता जा रहा है, कोई चीजें वो लेता जा रहा है। इसलिए मैंने सिर्फ 3 स्लाइड इसके अंदर रखे, 3-4 स्लाइड, वो बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। तो ये सबसे इजी तरीका है। अभी मेरे ख्याल से हम लोगों ने पावर पॉइंट, तो वी आर मच मोर एक्वेंटेड विद पावर पॉइंट, वी कैन गो विद सच टाइप ऑफ द क्रिएटिंग वीडियो प्रोसेस। और पूरे वीडियो फिर लगा दो अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, सबके चैनल बना लो। ओके, बहुत ज्यादा नहीं रहता है, एक दिन का टाइम रहता है 24 आवर एक्टिवेशन के लिए। आपके ईमेल के साथ में यूट्यूब में जाके चैनल बना सकते हैं। Okay, many time you can go live also from the channel. This lecture is also done live. हमारे यहाँ पे ये जो सिस्टम था, जूम अगर खरीद के लिया है तो उसको लाइव लेक्चर्स के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। So this will take time. Meanwhile, we will have some talk with you. काले मैडम? Yes, sir. जब तक ये रिकॉर्ड करता है स्क्रीन को, तब तक क्या हम लोग बात कर सकते हैं इनके Yes, इसके लिए? sure. Sir, if anybody wants to ask any question to sir, want to discuss anything, you can feel free to discuss. अरे मैडम, पहले तो ये बता दो इन सबको कि हमारे से तो ज्यादा नॉलेज इन लोगों को होगा ये सब चीजों का, हम तो बूढ़े लोग क्या सुन। They can share their knowledge also, sir. You are हाँ, तो perfectly वही हम correct. चाहते हैं कि वो अपना नॉलेज शेयर करे हमारे से। तो प्लीज पार्टिसिपेंट शेयर। There is one question, sir. हाँ, Sir, बोलिए। can we create our own conceptual animations of content which हाँ, we would like to explain? यस यस, वी कैन क्रिएट आल्सो। उसके लिए कुछ अपने को एनिमेशंस वाले सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, या फिर पावर पॉइंट में भी हम लोग वो एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो एनिमेशंस जो रहते हैं ना पावर पॉइंट्स में, अगर कोई एनिमेशंस वाला ये ले लेते, अप्लाई एनिमेशंस वाला रहता है ना, तो वहां पे मूविंग या ऐसा बाउंसिंग वो वाला एनिमेशंस उसके साथ में देके, मोमेंट, जैसे हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, ऐसा राइटिंग हैंड का एनिमेशंस देते अपना, जो भी हम लोग बोर्ड पे लिख रहे, ओके, तो ऐसा राइटिंग हैंड लेकर ले सकते हैं हम लोग उसके लिए। तो वो करने के लिए सिर्फ अपने को हैंड का पिक्चर लेने का है, वहां पे रखने का है, और उसको एक एनिमेशन वाला सिलेक्ट करके, मूविंग एनिमेशन, तो उसको अपने को मैच करने का। थोड़ा टाइम लगेगा अपने को सीखने के लिए, लेकिन वंस इट मैच, जैसे जैसे अपना टाइप करते जाएंगे तो हाथ ऐसे लिखते जाता है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। Right, sir. Sir, one more question asked. Sir, can we record Google Meet lecture? Yeah, we can. I am recording, but if it is paid version of Google, फ्री वाले में नहीं कर सकते भाई, थोड़ा सा वो फ्री है, उसमें तो टाइम लिमिट भी है 45 मिनट्स का। लेकिन और समझो अभी हम लोग ग्रुप बना रहे अपने, इसमें 1300 रुपए में आता, लेकिन वो 1300 को क्या है मालूम, उसमें 8 या 9 ले, ऐसा बोलता हूँ, 8 या 9 लो। तो 8-9 एक आदमी नहीं ले सकता, लेकिन हमने अगर ग्रुप बना लिया टीचर्स का, अगर टीचर्स ने ले लिया तो 1300 में हम लोग इंडिविजुअल एक बार एक्सपेंसेस आ जाएगा 1300, और सबका मिला के जूम आ जाएगा। ओके, 8-9, और अपना अपना लेक्चर तो लेते रहो। ओके, बहुत इजी है, बहुत सस्ता है, और बहुत सारे फैसिलिटीज अगर परचेस आते हैं, जैसे 1 GB क्लाउड स्पेस उसके साथ में है। ओके, जो भी रिकॉर्डिंग है, अभी तो हमने 5 GB वाला एक्सटर्नल क्लाउड स्पेस ले लिया, तो वो फ्री में अपना परचेस कर देते, तो क्लाउड स्पेस भी मिल जाएंगे। ओके, एक ग्रुप एक्टिविटी, अगर एक कॉलेज के इतने लोग नहीं कर रहे तो 2-3 कॉलेज मिला के भी खरीद सकते हैं उसको, लाइसेंस अलग अलग। So there is one more question. Sir, can you tell us something about the G Studio? नहीं भैया, मैंने भी इतना अभी जी स्टूडियो यूज Dr. नहीं किया। तुषार लोखंडे. अच्छा, It's this question. हाँ, मैंने भी अभी जी स्टूडियो इतना यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन बहुत सारा अवेलेबल है। जैसे हम लोग गूगल क्लासरूम की तरफ जाते हैं, तो उसमें भी हम लोग जी स्टूडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पे भी है। जी मीट भी है, उनका भी कुछ भी अलग निकला हुआ है। गूगल मीट तो इस्तेमाल करते हैं। गूगल मीट में भी एक प्रॉब्लम आता है कि हम लोग साउंड उसमें शेयर नहीं कर पाते। तो कितने लोगों को कुछ मालूम है आपको, हाउ टू शेयर द साउंड इन गूगल मीट ऑल्सो? You can tell, sir. Even I am not aware of it. मेरे को भी नहीं मालूम था मैडम, ऐसे खेल खेल के पता चल गया।
गूगल मीट सर में गूगल मीट में जो लेक्चर है वो हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर दूसरा कोई टॉपअप सॉफ्टवेयर उसके ऊपर लगाया तो। ओबीएस में चालू कर दो। ओबीएस चालू करके उसको करो या फिर नहीं, स्क्रीन नहीं। कास्टोमेटिक लगाओ और फिर गूगल मीट को स्क्रीन कास्टोमेटिक में हाँ, लेके ऐसे कर yes, sir. सकते। तो इट इज Yes, sir. Same. समथिंग लाइक हाइब्रिड सिस्टम वी आर टू डू। वी कैन यूज। हाँ, वैसा भी yeah, पहले हम same. वही करते थे। और दूसरा अभी साउंड रिकॉर्ड के लिए क्या बोल रहा हूँ, गूगल मीट में हम लोग बोल रहे हैं ना कि एक विंडो शेयर करो। शेयरिंग के वक्त में पूरा माय होल स्क्रीन नहीं शेयर करने का है, एक विंडो शेयर करने का है। उसमें अलग अलग ऑप्शंस आते हैं। तो विंडो जब शेयर करते तो नीचे के साइड पे शेयर माय साउंड तो नाम का एक टैब आता, तो उसको अगर आप क्लिक कर देते तो ऑटोमेटिकली चालू हो जाता। जूम में भी वो टैब आता है। ओके जब हम Zoom साउंड, में आता है, but I was not aware about Google Meet. मुझे भी नहीं मालूम था मैडम, लेकिन उसमें भी आता है। Sir, Screen there is one more कास्टोमेटिक question. Just बराबर, स्क्रीन कास्टोमेटिक इज बेस्ट फॉर 15 मिनट रिकॉर्डिंग, बराबर है। Sir, इजी है one बहुत। question. हाँ One बोलिए। question. Sir, sir. Please tell us a software which is easy to use, create scientific figures for explaining the methodology or graphical abstract. Any software you know which नहीं आ is रहा। used for यूज फॉर graphical abstracts and for explaining the method. अच्छा, ये एडिटिंग के लिए सॉफ्टवेयर है फिल्मोरा नाम का जो सॉफ्टवेयर है वो फ्री भी अवेलेबल है, लेकिन उसके अंदर वो ये आ जाता है, उसका मार्क आ जाता है नीचे फिल्मोरा वाला। लेकिन वो परचेस करने भी बहुत महंगा नहीं है, 2-4 लोग मिला के भी उसको ले सकते हैं। ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट वगैरह भी उसके अंदर हम लोग ले सकते हैं अच्छी तरह से। उसको कट पेस्ट या फिर कुछ एडिटिंग है इसके अंदर, मिक्सिंग है, तो वो सब कर सकते हैं फिल्मोरा में। वो ऐप यूज कर सकते हैं आप। Anybody wanted to ask something, no? देखो Some madam. फ्लैशबैक भी एक सॉफ्टवेयर है जो हम यूज Flashback, करते हैं। फ्लैशबैक जो कॉस्टली नहीं है, फ्री एडिशन है और कुछ उसमें कॉस्ट भी ज्यादा Yes, नहीं sir. है अगर परचेस करेंगे तो उसके Yes, अंदर sir. भी काफी फैसिलिटीज है। और एक मोबाइल पे ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो यू कट नाम का है, यू कट, तो मोबाइल के लिए भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं यू कट वाला। स्क्रीन कास्टोमेटिक मोबाइल ऐप में वो भी लिमिटेशन नहीं कि 15 मिनट। Yeah, it is there. No, sir, it is not there. In वो on mobile. हाँ, और उसका स्क्रीन ये भी नहीं होता, वो मार्किंग भी नहीं आता है उसका। देखो अभी मेरा रिकॉर्ड हो गया, मैं आपको वो बता देता हूँ एक बार। डेमो वाला जो रिकॉर्ड हो गया वो ये यहाँ पे आ गया स्क्रीन। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? Yes, sir. देखो एक बार मैंने साउंड पहले शेयर किया है कि देखने दो। नहीं, देखो यहाँ पे मैंने साउंड शेयर नहीं किया था तो इसलिए आपको इसका साउंड नहीं आएगा। ओके, जैसे मुझे बोलना है कि चैलेंजेस टू ऑनलाइन लर्निंग एंड क्रिएटिंग वीडियो लेक्चर्स इन द प्रोफेशनल मैनर, तो वो जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तो इसमें शेयरिंग में मेरे को अभी पॉइंट दिखेंगे। साउंड आ रहा है आप लोगों को? ये प्रीव्यू है। ओके, ये प्रीव्यू अभी यहाँ पे एक लाइन उसके ऊपर है। सर साउंड शेयर नहीं हुआ है। कैमरा भी मेरा ऑफ है। नहीं यार, Zoom is already using my camera. अरे हाँ, स्क्रीन 1 शेयर केलेला आहे मी। थांबा 2 मिनिट, स्टॉप करतो मी, स्क्रीन 2 शेअर करतो। तो जो काही आपण व्हिडिओ रेकॉर्ड केलेला आहे तो इथं मी प्ले केलेला आहे। माइक्रोफोन है, तो अगर मेरे को उसको म्यूट करने का है तो मैं उसको लाइन यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देता हूँ तो वो लाइन आ जाएगी। एकदम कमी आवाज येतोय सर। सर शेअर साऊंड आवाज मोठा करायचा त्याचा मला। शेअर साऊंड झालाय पण आवाज रेकॉर्ड कमी झालेला आहे। बऱ्याच ठिकाणी त्याचा आवाज नाही आलाय, त्याचा माईक सेटिंग मध्ये त्याने दुसरा माईक घेतलेला असेल एखाद्या वेळेस। ओके, तर या पद्धतीने तुमचा हा व्हिडिओ आता जो आपण तयार केला हा इथं रेकॉर्ड झालेला आहे। ओके, जे काही मी बोललो ते ऑटोमॅटिक इथं रेकॉर्ड होत गेलं आणि ते तुम्हाला व्हिडिओ म्हणून डायरेक्टली MP4 फाईल मिळालेली। ओके, याच्यात तुम्ही ट्रान्झिशन्स टाकू शकतात, ॲनिमेशन टाकू शकतात। यू कॅन यूज दिस थिंग्स व्हेरी वेल। ओके, सो आय थिंक वी हॅव टू स्टार्ट द नेक्स्ट सेशन। मॅडम अजून काय विचारायचं कोणाला? Anybody wants to ask any query to sir? सर चॅट बॉक्स मध्ये आहेत 1-2 क्वेश्चन्स। हाँ,
One, sir, how to record mobile screen? Is there any free software available? Yeah, Screenomatic you can use on the mobile also. उसका भी सॉफ्टवेयर है, उसमें भी ये OBS वगैरह बहुत हेवी सॉफ्टवेयर हो गए, लेकिन उसके लिए सिंपल सॉफ्टवेयर. Screenomatic is very easy. We can go recording mobile screen also. Okay, I think let me call upon now Dr. Kundan Patil sir for concluding this session to express his views. Patil sir. Yes, thank you, ma'am. Am I audible? Yes, yes, very much. Okay. So, first of all, good afternoon, all of you. Let me congratulate, first of all, Government College of Pharmacy, Aurangabad, for organizing this wonderful STTP on topic a journey from academics to industry. So here, that is advances in pharmaceutical research, a journey from academics to industry. I'm also thankful to Dr. Devkate sir for wonderful as well as interactive session. Actually, it is really a Herculean task to keep in post-lunch session to keep awake the audience. But through your interactive session, the audience were interactive, and the chat box itself is proof of all this. Okay. Sir has expressed on many topics in his lecture. So especially the challenges in online teaching. In teachers' perspective as well as in student perspective, what are the problems and how the teacher should consider these problems. So definitely it is going to help all the teachers who have participated over here. So definitely it will be very beneficial for all the teachers. Then what are the advantages of this video session is there? Sir, it is really the softwares you have discussed over here. You have shown the small demonstration also. So definitely in future also, if many teachers will definitely contact you for this, and a senior teacher like you is explaining about this itself, it is inspiring for youngsters like us. So definitely, sir, and salute to your techno-savvy approach, your learning approach. It's really wonderful. And many comments in chat box I can see. So it is there is no doubt about your lecture skill, and it was reflecting, sir. So thank you very much for giving me an opportunity to chair this session. To respected Dr. Maurya sir, coordinator Dr. Navle sir, Kaya ma'am, then Amrapali Jadhav madam, and entire organizing team. Thank you very much. Thank you, Kundan Patil sir, for nicely concluding the session. I now request Dr. Navle sir to extend our appreciation in the form of a certificate to Dr. Devkate sir. Thank you, sir. So this is an applause, virtual applause from all of us, from all the participants for nicely delivering such an interactive session. I am sure that all the queries of the participants have been satisfied. The participants have also shared many things with us. So it was a very wonderful session. Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. I now request Dr. Navle sir to appreciate Kundan Patil sir with a certificate. Sir, Kundan Patil sir, this is from our team for you. For acting as a chairman of this session. Thank you so much, sir. Now we will move on to the valedictory session. Navle sir, what about the chief guest? Has he joined? I'll just check it out. नाही, वक्ते सर जॉइन वक्ते सर येतात 1-2 मिनिटांमध्ये येतात. He's on phone with me. He's coming within a minute. Okay, sir. Okay, just 1 minute pause. Yes, sir.
Navle sir, in meanwhile, you want to give any instruction regarding the feedback and other things for 1 minute, if you want to tell something to the participants. Have you, dear participants, have you given the feedback form? Have you filled it out? Please do the needful. Yes, madam. Yes, madam. Yes, ma'am. Okay, thanks a lot. Vakta sir will be, I'm just on the phone with him also. Okay. So within a minute he will be joining. So till then we can start the program. Okay. तोपर्यंत आपलं बाकीचं हे होऊन जाईल. You can start. Yes, sir. Devkate sir, you are able to see my virtual background? Yes, madam. कालपासून बघतोय आम्ही. कालच म्हटलं की मस्त बॅकग्राऊंड लावलंय मॅडम. You have changed your background. Yes, I changed it. I can change Very now good. also the STTP background which you are having, Navle sir. Yeah. Should I change it? नाही छान दिसतंय, काय प्रॉब्लेम. छान दिसतोय आपण. मयूरा मैडम, बहुत ब्यूटीफुल है आपका बैकग्राउंड. Thank you Reshma madam. Now how it is? बढ़िया एकदम. Now एक्सेलेंट it लोग हैं is आप लोग. Government College of Pharmacy. Madam, we can start the program. Maurya sir is in and Vakta sir will also come within a minute. Okay, sir. Respected dais and my dear participants, finally we have arrived to the day of valediction. Since the last 6 days, we listened to several deliberations and expanded our mental horizons. I hope that there has been plenty of knowledge enhancement for all of us, and we all have been definitely benefited from this STTP program. Let me take the privilege of announcing the chief guest of today's valedictory function, Dr. Praveen Vakte sir, Head Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad. I hope sir has come till now. Okay, he has not joined till yet. I also welcome the president of today's function, Dr. V.K. Maurya sir, Principal, Government College of Pharmacy, Aurangabad. And I also welcome the coordinator of this STTP program, Dr. R.B. Navle sir. Last but not the least, yes, the most precious ones. I welcome you all, dear participants, for this valedictory function of STTP. Moving further, I request the coordinator, Dr. Navle sir, to brief us about the 6 days journey of this program. Dr. Navle sir, if you wish, you can wait for Vakte sir, or you can start. Madam, I will just read out the things for you till that because I have already talked with the Vakte sir and he's Okay. He's in his desk and just joining it. Okay. Might be some technical issues with him. He is on the phone only. So good Okay, afternoon, dear friends. I'll proceed with my reading the conclusions remark. Good afternoon, everybody. I'm Dr. Navle, coordinator of this AICT sponsored 1 week training program. I welcome you all for this valedictory function of this 1 week AICT sponsored STTP. I hope that you have enjoyed this 1 week learning. One minute. I also thank special thank to the AICT which has provided us the financial assistance for this STTP. I special thanks to Colonel Venkat, Director of AICT, and Shailendra Saraf sir, who is the Vice President of Pharmacy Council of India, who were present during our inaugural session and guided us. Special welcome to the Praveen Vakte sir, Head Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, for the gracing this occasion and present here for the valedictory function. Also, there is a special thanks to our beloved principal sir, Dr. V.K. Maurya sir, for providing us the encouragement and guiding during this conduct of AICT STTP.
And also thanks to all the participants. Without all of you, the program could not be thought of even. Okay. Dear friends, I congratulate all of you that you have already successfully completed this 1 week STTP program. Thank you very much and congratulations to all of you. During this 1 week STTP, we have invited the speaker across the globe, I will say, all over Maharashtra, from local Aurangabad to the Shirpur, places like Pune, Nasik, Ratnagiri, Mumbai, Bangalore, New Delhi, and even from the Monash University, Australia. This all is for to achieve the objectives of our program. And I thank these all eminent speakers for their deliberation. Special thanks to the Colonel Venkat from the AICT for his deliberation on national education policy. Dear friends, we have started with our program with the aim and objective that we have to introduce a principle of smart research. We will focus on the formulation of problems and then solution on this problem. We will also learn how to maintain the perpetual integrity of the data. Dear friends, I am confident that after completion of this 1 week STTP, we are successful in achieving this objective. Thank you very much for your wholehearted participation in this STTP for making it successful. Dear friends, I want to give a special thank to all my team members over here. Special thanks to Dr. Botra sir, who is the backup team for our program. Dr. Mahaparle sir and Shamkor sir off screen for the arrangement of a speaker and all these things. Dr. Mayura Kale madam, Amrapali and Sadhna madam for the extraordinary presentation on screen, anchoring, etc. And definitely the beautiful thoughts of the day. From tomorrow, we are not going, we will miss this madam. Sheetal madam and Sheetal Chavan madam and Pathan sir, Inayat Pathan sir, again one more team which is off screen managing all the activity which are related to the Google form preparation, providing the link, evaluation, consolidation of data, etc. Devkate sir, and special thank to his son Shubham, very techno savvy person. This Shubham is all this YouTube streaming and all this thing, how to zoom and whatever the Devkate sir is showing, all this credit goes to Shubham also. He's a perfectly managed that all screen. You might be not knowing that Devkate sir is presenting, but somewhere nearby he is sitting over there without noticing on the screen. And the leader of our team, definitely Moria sir, the man always stood behind us. Thank you very much, sir, for your constant support for us. Thank you, team, for all of you such wonderful coordination. Despite of we are splitted, our team is splitted into team A and team B for simultaneously running 2 STTPs. We have made it successful. Thank you very much, all the friends. Dear friends, at the last, I want to communicate to that this STTP program, we have created one WhatsApp group for our effective communication. The detail regarding the detailed modalities regarding the distribution of certificate participation, your participation certificate will be announced on this group only. The process of preparation of our certificates is already with the Sheetal madam and Patan sir and their team, and they are already have started that process. I also request all of you to that till you received your certificate, don't leave this group because this is only the way by which we can communicate with each other. Anything like when the certificate will be distributed or any mistake in your certificate, etc. All the type of things. Dear participant, I want to make one announcement that Sheetal Chavan madam have posted a link today morning. That is the link of feedback. Today's assignment will be posted afterwards, but feedback link she has already posted in the afternoon or before the lunch session. Friend, this feedback link is must for our improvement, as well as it is one of the most criteria from the AICT for getting you the certificate. Please do not ignore this link. Without feedback, as per the AICT norms, we are not getting to get a certificate of the participation. Your feedback is most valuable. It is not just a criteria for the evaluation, but it is the criteria for the certification. So you are kindly requested to fill this form. Thank you for your participation and congratulations once again. Thank you very much. Over to you, Mayura madam. Thank you, sir, for describing a wonderful journey of this 6 days STTP. Let us welcome Dr. Praveen Bhakte sir, who has just joined a few minutes before. Sir, on behalf of the team of Government College of Pharmacy, Aurangabad, I welcome you to honor us as chief guest of this function.
Let us move further. Sir, please accept a virtual bouquet. Thank you. Thank you. Moving further, let me take this opportunity for us to understand, dear participants, how all of you have felt about this program. What are your views and experiences? And also let us know what are the areas where we need to improve and enhance. For the same, I now invite Dr. Gauri Parsokar, Assistant Professor, NCRD, Sterling Institute of Pharmacy, Nehru, Navi Mumbai, to express her views regarding this STTP program. Please, madam. Thank you, ma'am. I would like to congratulate Dr. V.K. Maurya, Principal, Dr. Navle, Coordinator, and team of Government College of Pharmacy, Aurangabad, for successful completion of 1 week short-term training program on advances in pharmaceutical research, a journey from academics to industry. All the sessions were very relevant to the current day needs and were very well organized and coordinated. Some of the sessions that I personally enjoyed were teachership versus mentorship, method validation, scientific writing, and basic considerations for doing research projects. Having said that, all the other sessions were equally informative and relevant. Apart from all these technical sessions, the yoga session was also very useful and relaxing. I'm sure that the knowledge gained during this workshop will definitely help me to improve my skills and would be able to percolate the same to my students. I would also like to mention the efforts taken by the organizing team for effectively organizing this STTP and attending queries of all the participants in the timely manner. I sincerely hope that Government College of Pharmacy, Aurangabad will organize such programs in future as well for the benefit for the teaching community. I once again thank and congratulate the organizing team for their tireless efforts in the conduct of this workshop and hope to physically attend the next STTP in Aurangabad in the near future. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much, ma'am, for such wonderful appreciation. Definitely, we will conduct an STTP where physically we will meet nearly all the participants who are again willing to join the STTP one more time. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Now I call upon Dr. Suhas Sakharkar, sir, Professor and Dean, School of Pharmacy, GH Raisoni University, to express his views. One of the most sincere participants and most interactive participants, Sakharkar, sir. Please, sir. Hello, am I audible? Yes, sir, very much. Good evening to one and all. This 6-day program was very nicely arranged, and every part of this program was meticulously taken care of by the Government College of Aurangabad. And a word for speakers, I would say that they were very good, and each speaker was given sufficient time to explain the topic, what they wanted to explain. That was really good, because the speakers at times cannot say the things in 1 hour time. Even our motivated senior Devkate sir, he elaborated nicely on the online platform. It was a very appreciating one person from a senior person from our field. Anyway, I would like to congratulate all the team members of Maurya sir for making the program very successful and effective, and would say to conduct such more programs. Thank you, madam. Thank you, one and all. Thank you, sir, for your appreciation. Now, moving further, let me have the honor of requesting Dr. Vakte sir, the chief guest of today's function, to express his views about this program. Please, sir. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes. Good afternoon to one and all present over here. All the participants, those
who were interactively involved in this STTP program, which is an AICTE sponsored short-term training program, which was organized by Government College of Pharmacy, Aurangabad. All the participants, and as I joined, I was listening all the credit notes which were being presented by Professor Navle. I was fortunate to listen the credits of all the team government college, those who were involved in this one big program, which was very nicely conducted by Government College of Pharmacy. My beloved mentor, Professor and Principal E.K. Moya sir, coordinator of this STTP, Professor Navle sir. Apart from that, I was able to listen to the credit series which was being presented by Professor Navle, which I was able to note that Professor Devkate and his young son, Shubham Devkate. I'm really happy that this is the family culture which we can see in our pharmaceutical periphery, that Shubham is very well involved and is helping Professor Devkate and all the team government college to see that this program is technically being well managed and arranged. Apart from that, I would also notice the involvement of Professor Mothra sir. Apart from that, Dr. Meera Kale ma'am, Inayat Pathan sir, Sheetal Chavan ma'am, Prashant Shamkur sir, and as I've joined, I could not listen the entire list, but I congratulate all the staff members, teaching and non-teaching staff members, for taking the efforts of organizing this festival. I know the strength of the Government College of Pharmacy, and when they are involved in any such kind of activity, their involvement from top to bottom is wholehearted, and every time they make all these programs very successful. I was listening to two of the participants, those who presented the last, about the satisfactory note they have presented on this one big program, and the kind of lectures they are arranged and the topics on which this program was arranged. Friends, definitely, I can understand that all of us are from academic fraternity, and everybody of us is involved in maintaining the standards of the profession of pharmacy through our academic behavior day in and day out. But since last few years, as the topic goes of this conference, which is related to the advances in pharmaceutical research, a journey from academics to industry. This topic, I was not able to listen to all the speakers from last 1 week, what topics were covered by these people. But definitely, I'm sure there is one hurdle, I would say, or the things which I've noticed with the pharma academic fraternity that I would just like to put up over here, which is related to the attitude of the pharmaceutical teachers is definitely research oriented, but the outcomes which come out of this research are really not reaching to the industry. That is what we can find. Very less of our academicians are really involved in close association with the industry. Rather, many times I've seen that our professors make a comment that we could not go close to the industry or the industrial research which is being carried out in industry. Core lies within us very well. I can understand that maintaining the whole day's academic schedule, and apart from that, those senior professors, those who are present over here, they are involved with their PhD scholars and even their PG projects. They might be giving some good output, but the new entrants in the pharmacy academics, for those, I feel they really need to have some different set of understanding if they really want to go ahead with the theme of this today's STTP program. Friends, those who are
working in pharma academics since last 20-25 years, they have set up the standards and they have set up their mark, and they know how to go ahead with this pharmaceutical research and how close they can reach this pharmaceutical industry. We are going through this tremendous difficult timings of this globe, and all of us can understand that the subject in which we are doing research since last 20-25 years is really a prime subject today, and more research is expected in our area, and entire population of this globe is looking towards us for the new inventions, the new medicines which can be developed for the cure, not only cure, for at least protection of the kind of things, pandemic things which are going across the globe. You all are really involved in research. I hope that this 7 days would have really added to the understanding of the pharmaceutical subject. But few of the things which I would like to quote over here are related to whenever we are doing the research and we expect that this research should lead to the industrial outcome. Few issues which I would like to raise are related to the ethical principles and research integrity which we have amongst ourselves, and which we try to perpetuate and which we try to give to our research scholars, those who are working in our lab. This is a very important thing, because research integrity is going to go down and down just because of the casualness which we can find in the laboratory work. Yesterday, I was talking to Professor Moria sir, and what was the conclusion of our talk was that the technological advances which are taking place in the society, we are not able to grab those technological advances, or the rate of technological development is so fast that I was really happy that Professor Navle took the name of Mr. Shubham Devkate. Really, this era is changed. Now, these youngsters, they are going to lead the path, and we have to follow the technological advances among these youngsters. And really, it becomes very difficult for we people to follow this path in this younger generation. They have a different set of understanding, they have a different attitude, and to cope up with them, with those research ideological integrity which our mentors have set for us, really it is going to become very difficult for us in the coming time. And just having a good understanding of the theorems and theoretical principles, or the practical hands-on skill which we have with us in our laboratory practices, that is not going to serve the purpose in the coming days. But the research integrity, the trust which we should have, the transparency which we should have with these research groups with which we work, is really going to change the set of the research canvas in the coming days. And we have to cope up with these two things now, that we have to cope up with these changing times in the educational scenario. While talking, Professor Navle was mentioning that somebody had a good talk on the national education policy which has come up. Friends, we are in academics. Really, we have to strive hard in coming few days or few years, I will say. The entire canvas of academics is going to change, and that too for the professional educations and those academic governance which is done in some of the fraternities where there are some councils. These council type of things are involved in some of the academic programs. For them, really it is going to be a very tough time for we people, because we have our own set of understanding, we have our own style of working. Definitely we follow the professional ethics, but at the same time, the changes which are coming up in this academic policy on a national level, we have to cope up with those. And really it is not going to be a day where the seniors or the juniors, this type of classification will be demarked very soon. And even if a youngster is there, but if he has an integrity towards research or towards his daily working, would definitely help him to go ahead, just like what we see in industry, canvas of pharmaceutical industry. In industry, it is not so that seniority is based only on the age, or it is based only on your
day-to-day seniority skills. But at the same time, what is the Bansode is, I think, one of the participants. I request to mute your mic, please. Okay. So these type of things are going to come up, and new set of professional standards would be set up in academic industry. Yes, I'm calling it as industry, but I don't call yourself as the stakeholders of this industry, because we have a very different culture in our country where we don't call gurus as the stakeholders, but we call them at a center space, and these are the people from where the academic starts. So calling them the stakeholders of the academic industry would really be an injustice to all the teachers, those who are present over here. But definitely the sets of these or the standards of this academic industry are definitely going to change. We can find in the coming days, even if you are affiliated to some of the universities, very soon you would be in your autonomous colleges, and you will be having a freedom to set up your own standards, your own subjects, your own papers. At that time, this research integrity is only going to save you, because at that time you will have the options whether to go with the stringent norms or whether to go with a very loose kind of norms. If you do it, definitely it is going to be harmful to your institute as well as to your own image. Friends, you can understand the employment canvas of the pharmacy academics is very different. I need not to express more on that issue, but if really we want to survive in the coming days, the set for the management is also going to change in the new education policy. At the same time, the set is also going to change for the academic co-workers. For them, merit is only going to prevail. So I can very well understand that if the type of dialogue which we had in the last 7 days, which is related to the advances in pharmaceutical research, understanding pharmaceutical advancements on a research canvas is something different. But when we are talking of a journey from academics to industry, definitely I feel that the IP which would be generated by you people will definitely help industries. Industries can come to you, but they will not come with the name of your management or your institute, but they will individually come to the professor who has created a very good IP in his own specialty. So with I can understand this is the valedictory function. All of you might be eager to finish off all these things. Many of you might be waiting just for the certificates. As Professor Navale was saying, that please don't leave your WhatsApp groups unless and until you receive the certificates. So I can understand all of you might be eager to go back to your normal duties after 7 days. I hope this program, which was organized by Government College of Pharmacy, would definitely have added to few of the standard protocols which you follow in your research laboratory for the development of the new industrial products. With this, I congratulate all of you for successfully completing this 7 days STTP program. I also congratulate team Government College of Pharmacy for successfully organizing this program, and I'm really privileged to be among you, and I'm thankful to Professor Moria for giving me an opportunity to be among you for this valedictory. Thank you very much. Thank you so much, sir, for your precious words of advice and guidance. I now request President of this function, respected Principal Dr. V.K. Moria, sir, to express his views. Thank you, Dr. Kare. First of all, on the dais, sitting on the dais, respected Dr. Praveen Vakteji, coordinator of this program, Dr. Rajesh Navale, motivated anchor, Dr. Mayura Kare, and my organizing team, and above all, my dear participants who have consistently made their vital presence for 6 days in this training program
entitled as The Journey from Academic to Industrial Research. My dear friend, we had one session on National Education Policy 2020. Dr. Vakte has outlined already that how the scenario is going to be changed. This is a good thing. This is a bad thing. The good thing is this, that more number of the people will get the opportunity to become knowledgeable. The bad thing is that we may not be compatible with the coming generation because of one of the very important change in policy of inclusion of the people from lateral entry. So there is a need that we should learn the ways by which we can survive in the profession. Time to time, when I had a talk with Professor Vakte, it is something like that, go on listening him because of his huge experience of changing world of education at higher level. We the teacher, or we are as an institute, are knowing little about it, that what is going on and what we are going to face in next 5 years. This STTP was a very small effort to equip the teacher friends that these are few of the mode by which you can survive in the field. Otherwise, it is going to become very difficult and we may go out. Looking to this, it was really a matter of great pleasure for me due to the overwhelming response of the participants who have registered for this program, and not only registered, their presence during the program, their wholehearted participation in completing all the formalities which have been outlined by AICT to us, and the meticulous compilation, digital compilation of all activity, and making the proceedings of this program available to whole scientific fraternity on a public platform like YouTube. Rightly said by Dr. Vakte that we have a family culture, and this family culture many of the time has been demonstrated by the inclusion of our family member like Shubham. And it is definitely sure, Bhakti sir has rightly said, that technological advances are becoming so fast that for a pharmacy teacher, it becomes difficult to cope up with them. So it is not what personally I feel, it is not all that we can learn everything, but it is always better to make a network by taking the help of the other, be in the field. And this is what we have done. And a special thanks to Shubham that he has made a mark to simultaneously handle the multiple activities. Dr. Navale, meticulous task he has performed during the coordination of these STTP. Dr. Mayura Kade, Dr. Sadhna Sahi, Dr. Pathan, Dr. Bothra, Sheetal Chavan Madam, Amrapali Madam, and Dr. Shyam Kuar, they have worked very hard to keep the things in line despite of many problems. The problem may be as small as the electrical shutdown, drop in the bandwidth activity, and some problems with the speakers, but so well they have managed. और यहाँ के पेपर कहाँ गए? सर हेलो Sir is muted. Sir is muted. सर आपका म्यूट हो गया है माइक. Okay. Sorry. So I hope that this STTP will open up new vistas for learning and for making network, not only in the research, but in academics also. And for this purpose, dear participants, we are floating up a very small Google form to have your views regarding academics so that we can plan for our next STTP.
I hope apart from the normal Google form filling, my request Google form is also coming there on the website, on the group. So Dr. Navle will manage it. This is not mandatory for getting your certificate or for evaluation. This is my personal request to you that such type of the personal feedback directly to me will always pave up the way for making our next STTP program agenda. I hope everyone will do. My very, very sincere thanks to Professor Vakte that for such a short notice, he has accepted my invitation. Thank you very much, Vakte sir. My thanks to all my team members wholeheartedly, despite of all problems, they kept them abreast with their responsibility and they did it. And above all, my all participants that they were present during the session and given continuously their responses, and these responses were very valuable for us to learn that what kind of the modification will be needed. I hope for every good thing in your life and the safety in your life, your health, your well-being, and your family. Thank you very much and hope to meet soon with all of you. Thank you very much. Namaste. Thank you so much, sir, for your valuable words. You're always a motivation for us. Now, I request Dr. Devkate, sir, to express a vote of thanks. Thank you, madam. Good afternoon to all. It's an honor for me to deliver a vote of thanks in valedictory function of 1 week STTP program on advances in pharmaceutical research, a journey from academics to industry. I would like to express heartfelt thanks to AICT on behalf of GCPA team for providing us the financial support to execute the 1 week training program. We would like to express our sincere thanks to Honorable Dr. Abhay Vaksar, Director, DTE Mumbai, and Honorable Sri M.D. Shivankar Sir, Joint Director, Technical Education, Regional Office, Aurangabad, for granting us the permission to organize the event. I would like to thank our today's chief guest, Honorable Dr. Praveen Vakte Sir, HOD, Department of Chemical Technology, Dr. Babasaheb Ambedkar, Marathwada University, Aurangabad, for gracing the occasion. A special mention to our beloved principal and president of today's program, Dr. V.K. Moria Sir, for being the catalyst that inspired us to do our best and stand as a pillar of power. I would like to thank our program coordinator, Dr. R.B. Navle Sir, for doing the Herculean job of coordinating overall event. With deep sense of appreciation, we thank our steering committee, Dr. S.B. Bothra Sir, Dr. P.R. Mahaparle Sir, Dr. M.A. Kale Madam, and other program coordinator, Dr. P.V. Shamkuar Sir, Dr. Sadhna Shahi Madam, Dr. I.B. Patan Sir, Mrs. S.S. Chavan Madam, and Mrs. Amrapali Jadhav Madam for doing their task punctually and effectively. I would also like to thank to all the principals from different institutions for granting permission to their faculty member to join this 1 week program. Thank you all the speakers for being available by managing their schedule and adoring the occasion and sharing their opinions. Last but not least, thank you all the participants for making the program a successful event. Thank you one and all. Thank you. Over to you, madam. Thank you, sir. I request Dr. Navle sir if you want to give any instruction. Otherwise, we'll call it a day. No, madam, no instructions. Thank you. Okay. So thank you from all of us. You were such nice participants. I would like to say only one word, Ubuntu. Ubuntu means I am because we are. So together we are. So we should be always together with ourselves. Thank you so much.
Thank you so much. Namaskar. Thank you so much, ma'am. Thank you. Khair. Bye, madam. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you all, sirs and madam. madams, Thank you. for Very making this nicely STTP a program. organized. Yes, It was yes. Thank wonderful, you. ma'am. It was really. Thank you. Thank you. So we'll end the meeting. Thank you, madam.